स्टार्ट हो गया एक बार. कैन ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल? पीपल हु आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है. ऑनलाइन आवाज़ नहीं जा रही है क्या? जा रही है पक्का? एक बार वेरीफाई कर लो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है. हाँ, ओके. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन. आपकी 2 कल्चर की क्लासेस हो गई हैं. टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Okay, now before I jump into today's class, some general doubts that you people may have. पहले I'll tell you what are the things that I'm going to do, and then I'll take all the questions that you have regarding science and technology preparation. First is, other than what we are doing in the classroom, what do you have to do? ये doubt आता है. Exam preparation के perspective से कुछ नहीं. You will get more more content than any book has. You will have more number of topics than anyone else would have done. So from exams perspective, you do not need to do anything. Even from NCERTs, the things which are relevant would be done as part of your class. But for some basic understanding, you should have understandings of what is there in class 9, class 10 NCERT. For example, I'm not going to cover things like an acid reacts with base to form salt. That's very basic, but UPSC hasn't been asking these things, but it's important that you know it. So if possible, go through, read class 9 and class 10 NCERT, read it once. All of you have done science and technology in your school days, so all of you would be comfortable with that. Just एक बार browse through कर लोगे, तो उसमें जो relevant चीजें हैं, that would be part of your notes, that will do in the class only, but broader perspective एक बार रखे रहेगा, तो अच्छा रहेगा. Other than that, do you have to do anything for science and technology? No. You will get all the static thing that is needed, all the current affairs thing that is needed. Everything would be part of your notes. Your science and technology may end by, let's say, January 15 or January 10. 3 weeks science and tech को मिले हैं, है ना. उसके बाद भी जो current affairs update रहेगा, I'll try at the end of your course, I'll try to give you an update booklet where science and technology updates are there, and then at the end of April also हम कोशिश करेंगे. Your exam is on 26th May, so we'll try that by 26th April, whatever update is there, if there is anything relevant, we'll provide you with the updated booklets. Okay, so coming to the sources that has to be done, just go through whatever we do in the classroom, and most of you have come here because of recommendations from your seniors, and you may already be knowing about the style of teaching that I have or Nikhil sir has. It's very exhaustive, so you will not need to cover anything beyond this, and you will also understand this over the next 6 classes when we'll be, or in today's class only, when we'll be covering space, you'll have clarity over it. Okay. Second, about MCQs. ये सर क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से करने हैं, क्या करने हैं. देखो, I'll first tell you what we are going to do. For every topic that we are going to cover, we will do all the PYQs. आज space and astronomy पूरा नहीं हो रहा, तो tomorrow you will get one more booklet on space and astronomy, and at the end of that will have all the relevant PYQs of space and astronomy. I'm using the word relevant because sometimes what happens is, in 2007 they may have asked some question which is related to some GSLV launch of that year, some satellite launch of that year. We do not need to do that because it's no more relevant. But all the relevant PYQs of science and technology would be done in your classes. Other than this, you also have tests. So जैसे ही आपके 3 week complete होंगे, I think from 14th of January you have a test every week till your preliminary examination. Prelims से 2 week पहले तक हर week आपका test है. So you will solve some MCQs there. इसके beyond भी, once your PMP is completed, what we do, we launch an initiative called RTFQ, revise through 500 questions. So other than PYQs that you have done, we'll also do this RTFQ for science and technology. So मेरे 3 subjects हैं. I promise that I'll do that. I'll do it for those subjects: science and technology, environment and economy. इन तीनों चीजों के लिए revise through 500 questions we'll be doing. So you will have enough questions also to practice. But फिर क्या होता है, तब भी ना हम परेशान होते रहते हैं कि और क्या करना है, कैसे करना है. So my recommendation would be, once your course is done, once I say कि science and technology preparation is done, you pick up all the papers from the market of science and technology. सबको कर लो, किसने रोका है, right?
एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं पर कोर्स कंप्लीट होने के बाद, मतलब मेरा जब साइंस एंड टेक का पोर्शन खत्म हो जा रहा है उसके बाद, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम जब हमने पढ़ा नहीं होता है, एंड एट दैट टाइम व्हेन वी आर practicing questions, we'll do unnecessary research, we'll spend 2 hours in understanding a concept and then we'll realize अच्छा अगले क्लास में सर ने उसे 5 मिनट में समझा दिया था, है ना। तो इट्स गुड कि we'll first finish this and then we'll solve all the questions. Now एक और चीज समझते हैं, जब when we solve questions, when we solve टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस एंड वो सारी चीजें, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस व्हिच आर मेड बाय द पीपल हु आर मेकिंग टेस्ट सीरीज, they also make some very irrelevant questions in the sense, और यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार ना बहुत ही ऐसे वियर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो हम स्पेस का कवरेज जितना करा जा सकता है उसका शायद 0.01% ही पढ़ रहे होंगे। दुनिया में स्पेस पढ़ने के लिए कितनी पढ़ाई करने की जरूरत, उसका सिर्फ 0.01% ही पढ़ रहे होंगे, एंड 90% ऑफ योर क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम दिस 0.01% ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। 10% of your questions may be from the remaining 99.9% of the things that doesn't have to be studied. तो कुछ irrelevant से, कुछ obscure से questions होते हैं, unnecessary depth में जाके data पूछा हुआ है, random chances that, देखो, of the entire universe of science and technology preparation, we are only preparing for this 0.1% because it will give us 90%, 0.01% because it's going to give us 90% of the questions. बट समटाइम्स जब वेन विल बी मेकिंग क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले अपना थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए वो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से भी बनाएंगे, यहाँ से भी बनाएंगे। यूपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वेयर द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम हेयर और हेयर और हेयर। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दीज थिंग्स, एंड द चांसेस दैट देयर वुड बी ओवरलैप in the topics that you are doing and the topics that is getting asked in the UPSC would also be very less, because this universe is, the remaining section is huge. So when you're attempting questions of the test series, focus on the fundamental aspects, do not focus on obscure areas, because उस पे हम ना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और chances of that getting replicated in examination is very small. सोचो इतने पोर्शन से अगर 90% क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं वो रेप्लिकेट होगा, उसके चांसेस ज्यादा है। वेरस इससे अब यूपीएससी भी 5-10 इरेलेवेंट से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऑब्सक्योर से क्वेश्चन पूछेगा, कोई बात नहीं, उसके लिए हम अपनी पढ़ाई को 100 गुना नहीं बढ़ा सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस? So when you will attempt those questions, make sure that if you are not able to solve questions on the basic areas of biotechnology, PSLV, GSLV, जो भी न्यूज में चल रही हैं, तो आप चिंता करो, जाके उसे पढ़ो, समझो। बट इरेलेवेंट से, फालतू से, कोई नासा ने 5 साल पहले कोई मिशन लॉन्च किया था, उसका भी कुछ चल भी नहीं रहा है, पर उन्होंने सवाल पूछा हुआ है और आप जाके उस नासा के मिशन के बारे में 1 घंटा पढ़ रहे हो, डोंट डू दैट, यू ऑलरेडी हैव इनफ टू स्टडी। ओके, तो एमसीक्यूज वाला एस्पेक्ट भी क्लियर है। तो क्या पढ़ना है? जस्ट गो थ्रू द नोट्स, इफ यू हैव टाइम गो थ्रू एनसीईआरटी, क्लास 9-10 की एनसीईआरटी ब्राउज करना है, उसको स्टडी नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट रीड इट वंस। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इट ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, कॉलेज डेज, तो बस एक बार रीड करना है। पढ़ना क्या है? पढ़ना जो हम मटेरियल दे रहे हैं सिर्फ वो पढ़ना है, जो भी अपडेट्स चाहिए होगा, जैसे भी चाहिए होगा, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। Once this session is done, once these 6 classes or 7 classes are done, I'll go through material of all the institutions, all the current affairs material of all the institutions. मैं देखूंगा क्या उसमें कुछ ऐसी चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाई और रेलेवेंट भी है। कुछ तो बहुत रेलेवेंट चीजें होंगी, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, पर रेलेवेंट भी है, एंड आई विल प्रोवाइड यू इन अपडेट्स। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इन दोनों चीजों में ना कोई बेसिक बुक रेफर नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सबको साइड में रखेंगे, ठीक है। नाउ इफ डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स? कुछ और पूछना हो तो बताइए बिफोर आई स्टार्ट टुडेस क्लास। नहीं? डन? सब क्लैरिटी? ओके, तो मुझे ना एक जनरल और सीक्वेंस दे देने दीजिए, हम किस सीक्वेंस में पढ़ा रहे होंगे टॉपिक्स को। विल बी स्टार्टिंग विद स्पेस, जैसे फर्स्ट क्लास इज ऑन स्पेस, सेकेंड वही स्पेस एस्ट्रोनॉमी ही चल रहा होगा, स्पेस astronomy. Now, while teaching these things, we also cover things like wireless communication, because हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट में ही वायरलेस के बैंड, KU बैंड, C बैंड, ये सारी चीजें होती हैं, या यही पढ़ते टाइम हम यूनिवर्स के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। देन विल मूव ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी।
इसी में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हेल्थ पढ़ेंगे, ऑल द डिजीजेस, वैक्सीन, दोस काइंड ऑफ स्टफ, एंड यहाँ पे ही हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। कई बार सेल्स पे सवाल आ जाते हैं ना कि सेल वॉल और ये सारी चीजें, द रेलेवेंट थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी, थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, वी विल बी कवरिंग इट इन द क्लास. Are we understanding it? Are we getting this? Once this is done, in the 5th class, we'll deal with computer, IT and electronics. इसके साथ हमारा core preparation of science and technology हो जाता है. Most of the questions revolve around these areas. But we'll also, in the 6th class, we'll have intellectual property rights, nanotech, robotics. और फिर एक क्लास मुझे लेनी पड़ सकती है मिसलेनियस चीज़ों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जनरल अपडेट्स होंगे, जो न्यूज़ में रह रहे होंगे, उन सारी चीज़ों से डील करने के लिए. So this is the rough order that we'll be following in our classes, and we have to cover a lot of things. I'll not be making any dictation in the classroom. I'll be ensuring that everything that I'm teaching, everything that is relevant will be there in your notes. Focus on understanding concepts. Please remember this: questions would not be solved through these notes. Questions would be solved through your understanding of the concepts. They will not ask you the same statement that is given here in your notes in the examination. But once you understand the fundamentals of orbits, once you understand how a rocket functions, then solving the questions which gets asked in the examination would be very easy, very simple. Okay, तो कोशिश करेंगे कि हम सारी चीजों को अच्छे से समझें. जो भी डाउट्स होते हैं पूछिए, बट विल हैव सम रूल्स इन द क्लास. एक सेशन में, लाइक वी हैव 2 सेशंस टुडे, एक सेशन में मैं एक स्टूडेंट को 3 डाउट ही अलाउ करूंगा. उससे ज्यादा डाउट्स हैं, क्लास खत्म हो जाएगी 8 बजे, उसके बाद आप पूछ लीजिए. अदरवाइज व्हाट हैपेंस समटाइम्स, लाइक व्हेन आई हैड स्टार्टेड टीचिंग, आई गॉट दिस एक्सपीरियंस, देयर वुड बी 1 or 2 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम व्हिच वुड आस्क डाउट एवरी 10 minutes एंड इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ क्लास. तो यू हैव ओनली 3 डाउट्स इन अ क्लास के पीरियड में 2 से 5 के बीच में आप 3 डाउट पूछ सकते हैं, 5 से 8 के बीच में 3 डाउट पूछ सकते हैं इंडिविजुअली. ऐसा नहीं सब मिलके 3 ही पूछोगे इंडिविजुअली, बट वो आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए. सोचिए क्या खुद से सोच के हो सकता है. अननेसेसरी हमें क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है. वो फ्लो टूटता है पढ़ाने का, दूसरे बच्चे भी इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, वो नहीं करना है. फिर भी आपको डाउट है, 8 बजे के बाद आफ्टर योर क्लास गेट्स ओवर, आई एम सिटिंग हियर जब तक आपको जरूरत है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द डाउट्स which are there, but that would ensure कि अभी आपका डाउट बताने में मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ, पर क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के लगभग 150-200 बच्चे होंगे, 200 मिनट चले जाते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स who did not have those doubts. So we'll try to restrict that as well. Okay, some other general rule, basic rules. आप कुछ क्लास में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये इंश्योर करो सब लोग खा पी पाए. ठीक है, अकेले अकेले मत खाओ. बहुत मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, तो ऐसे कोई खा रहा हो कुछ तो मुझे भी ऑफर कर दो और बाकी सबको भी कर दो तो चलेगा, मत वरना मत करो. ठीक है, चल वरना ब्रेक तो है ही. लेट्स स्टार्ट विद स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी. देखिए पहले ना, इफ यू लुक एट द इंडेक्स ओनली, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. इवन टुडे वी हैव टू कवर सो मेनी टॉपिक्स. अच्छा, एक और डाउट जो बच्चे बार बार पूछते रहेंगे, सर व्हाई द नंबर ऑफ पेजेस इन द नोट्स दैट यू हैव डिस्प्लेड एंड व्हाई द नंबर ऑफ पेजेस the notes that we have are different, because यहाँ पे मैं font size बड़ा कर देता हूँ. डिस्प्ले के लिए मैं font size बड़ा करता हूँ क्लियर विजिबिलिटी के लिए, अदरवाइज कंटेंट इज सेम. कंटेंट इन द नोट्स दैट हैज बीन गिवन टू यू एंड कंटेंट इन द नोट्स व्हिच हैज बीन डिस्प्लेड हियर इज एग्जैक्टली द सेम, अदर देन द फैक्ट दैट आपका जो font size है दैट इज 12 एंड द font size that I have kept here on display is 16. That is the reason for different number of this thing. Now you would see that we are starting with, पहले हम ना थोड़ा फोकस ऑर्बिट्स पे करते हैं. वी विल स्पेंड अराउंड 45 minutes to 1 hour in understanding orbit, because right from today's class to tomorrow's end of day, tomorrow's last topic, ये ऑर्बिट का फंडा एक बार आपको क्लियर हो गया, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली. बी इट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बी इट चंद्रयान, बी इट पार्कर सोलर प्रोब, बी इट एनीथिंग एल्स, यू विल सी हर चीज ना ये ऑर्बिट्स कैसे काम कर रही है. चंद्रयान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, उसमें ऑर्बिट वाला सिस्टम कैसे काम करता है, इट सिंप्लीफाइज एवरीथिंग. So we'll spend around 45 minutes to 1 hour in understanding these orbits and various types of orbit. Then we'll go on to ISRO launchers. ISRO launchers मतलब ISRO के जो रॉकेट्स हैं,
So ISRO के rockets में PSLV, GSLV, GSLV Mark III, these are certain things that we'll deal with. We'll also talk about sounding rockets and some new rockets which are in the phase of development, some next generation rockets which ISRO is planning to develop. That is something that we'll deal with. Then we'll briefly cover the satellites. ISRO के broad important satellites. Recently कुछ बड़े satellites launch नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा time पे spend नहीं करना है. Then we'll go to SAT-NAV system, satellite navigation system, where we'll understand how GPS functions, how what are the other SAT-NAV systems of the world, and India का IRNSS, how does it function right now? Now next generation satellite for IRNSS have started going. अभी 2023 में हमने एक और नया सैटेलाइट फॉर IRNSS लॉन्च किया है, तो उसके बारे में भी, उस लॉन्च के बारे में भी we'll understand, we'll study. Then there are some other Aditya L1 has been launched recently, so satellites to study sun, Aditya L1, and उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एस्पेक्ट को समझेंगे. There are some other projects which remain in news, जैसे नेत्र है, शक्ति है, गगनयान है, एक्सपोसैट, निसार, will deal with these things. Then इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ इसरो. इंटरप्लेनेटरी मिशन का ये नासा क्यों लिखा है? इसरो है. इट इज इसरोस इंटरप्लेनेटरी मिशन, नॉट नासा. इन इंटरप्लेनेटरी मिशन व्हाट विल डू, अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे जाने वाले जो अपने मिशन से, विल टॉक अबाउट दैट. बट चंद्रयान तो दूसरे प्लैनेट पे नहीं गया है, बट इसरो की वेबसाइट पे चंद्रयान को भी उन्होंने इंटरप्लेनेटरी मिशन के नाम के अंदर डाला हुआ है. दैट्स व्हाई we'll deal with Chandrayaan 3.0 here, we'll deal with Mars orbiter mission here, we'll deal with Chandrayaan which India plans to launch. All those topics would be dealt with here. ये क्या हो गया? अच्छा, I'll click हो गया. What were we talking? हाँ, so we were talking about other ISRO missions, interplanetary missions. Chandrayaan पे we'll spend a lot of time, we'll understand every aspect of it. इनफैक्ट जो दिसंबर में अपडेट हुआ है हम वो भी देखेंगे. चंद्रयान में दिसंबर में क्या हुआ है, विल कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. देन इंडिया का स्पेस स्टेशन का प्लान क्या है? अभी इंडिया नॉर्वे के कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह न्यूज में थे अबाउट स्पेस, विल टॉक अबाउट दैट. कुछ टेलीस्कोप्स पिछले साल न्यूज में रहे हैं. वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, स्पेस से रिलेटेड जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके बारे में 2-3 लाइन रफली बस रीड करके छोड़ दीजिएगा, सो दैट इन केस, इन वर्स्ट केस भी वो एग्जाम में आ गया, विल बी प्रिपेयर्ड. इस बार ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे योजना आई थी अभी 2 महीने पहले, उसमें स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने डिटेल में ये चीज कवर करी हुई थी. मैंने कभी पहले नहीं पढ़ाया था, मैं पहले इन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, बट आई ट्राई टू एंश्योर दैट स्पेस, योजना एंड कुरुक्षेत्र आर पार्ट ऑफ माई करंट अफेयर्स क्लासेस, एंड उसमें कोई भी चीज रेलेवेंट होती है जिसपे सवाल बन सकता है, तो आई इंक्लूड इट हियर. आई विल नॉट कवर दिस इन क्लास, आपको खुद से बोलूंगा, एक बार रीड कर लीजिए. मैं 4-5 इंस्टीट्यूशंस के बारे में ब्रॉडली बता दूंगा कि कैसे आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन वुड बी डूइंग. ओके, देन सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, द करंट डायरेक्टर ऑफ द इसरो. कमर्शियलाइजेशन से रिलेटेड, स्पेस सेक्टर में कमर्शियलाइजेशन से रिलेटेड व्हाट वी आर डूइंग, एंड फाइनली सम न्यू इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन इन न्यूज रिलेटेड टू इसरो, विल टॉक अबाउट. ओके, तो ये अपना पूरा आज के 6-7-8 घंटे जितना भी टाइम लगेगा उसका प्लान है. अच्छा, दूसरा ये निखिल सर ने शायद पहली क्लास में बोला होगा, आवर टीचर्स आर वेरी नोटोरियस फॉर टेकिंग लॉन्ग क्लासेस. तो हमारा आज का टारगेट ये है, पूरा नहीं होगा तो हम पूरा करेंगे, ठीक है. तो कोई 8:30 पे 8 बजे 8-8:30 बजे ये मत बोलना मेरे मेस में खाना नहीं बनता. ये बनता नहीं बनता मतलब व्हाट आई मीन टू से, कोई प्रॉब्लम है चले जाओ, ऑनलाइन देख लेना. you'll have videos by tomorrow, you can always watch the videos before coming to class. half an hour 1 hour का जो आप मिस करोगे because of some or the other problem, you can always watch it online and then continue with tomorrow's class. but इस वजह से ना हम पेंडिंग चीजें नहीं छोड़ते जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो अपने टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो, वो मीट हो. ओके, एनी डाउट्स, एनीवन ऑनलाइन, एनी डाउट्स? मंगलम रस्तोगी सर, साइंस इन पीएमपी एंड टारगेट प्रीलिम्स आर सेम. हाँ, रफली सेम ही रहेगा. टारगेट प्रीलिम्स इज आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, वहाँ पे मैं 12 जनवरी से साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा, तो यस मोर और लेस सेम रहेगा. बट पीएमपी में ऐसा है कि पहली 6-7 क्लासेस लूंगा मैं, उसके बाद जो भी अपडेट्स होते हैं आई गिव नोट्स, आई डू नॉट टेक क्लासेस फॉर देम. वेरस टारगेट प्री का तो बैच ही 30 अप्रैल तक चलता है, तो उसमें जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी. आपके बैच खत्म होने के बाद आई विल नॉट हैव क्लासेस, so I'll just give you, I'll try to give you update notes, not the classes. That's the only difference. Okay, so let's start with orbits.
तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल टर्म्स, ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज बेसिकली द पाथ दैट अ सैटेलाइट टेक्स व्हाइल इट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। इन जनरल, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड जिस पाथ में ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। या फिर जब हम अर्थ ऑर्बिट बात करते हैं तो सन के अराउंड अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ द वेरिएशन इन ऑर्बिट्स क्रिएट वेरियस इश्यूज, वेरियस कंसर्न्स। ओके, पहले समझते हैं व्हाई इज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड। आपने बचपन में कभी वो खेला है, रस्सी बांध के, लाइक in a rope you may have tied a small stone and then you would have revolved it. Have you played that? अभी भी खेलते हो? नहीं, वो पीछे कुछ कमेंट कर रहे थे, नहीं खेला है? ऐसे किसी का सिर विर फोड़ा है कभी? बहुत फोड़ा है। अरे बदमाश बच्चे। कई बार फूट जाता था, कई बार वो टूट जाता था एंड किसी का सिर फूट जाता था। तो ऐसे अब के बच्चे नहीं करते, अब के बच्चे पबजी में फोड़ते हैं सब कुछ। हम लोग जेंजी तो तुम लोग नहीं हो, कुछ तो होंगे, कुछ तो 2000 के बाद बॉर्न वाले भी होंगे। 2000 के बाद वालों को जेंजी बोला? अच्छा, 1997 के बाद वालों को जेंजी, हाँ कुछ तो होंगे यार, कैसी बात है। सारे जेंजी हो, हाँ देखो, यू आर लाफिंग एट जेंजीज नाउ, ऑल ऑफ यू आर जेंजीज। ओके, तो लेट्स कम बैक। इफ यू हैव प्लेड दिस, एक चीज नोटिस करना, सी लेट्स से ये आपने रस्सी बांध रखी है जिसमें अब घुमा दो। विद द हेल्प ऑफ दिस रोप, the force that you are applying on the stone is towards you. It's towards you, but still it's revolving in this. So the stone is going in this direction and it's not falling on you. This is how you are moving it. Basically, the force is always towards you. You are always pulling it towards you. You're always pulling it towards you, but the stone is not falling on you. It's revolving around. But एक चीज और notice करो, when initially, let's say a friend of yours is holding the stone stationary like this, and if you just pull the stone towards you, it will fall on you. It will come towards you. It will not revolve. उसके revolution के लिए पहले आपको एक horizontal force लगाना पड़ेगा, and then throughout the way, if you keep pulling it towards you, it will keep revolving. If you increase the force with which you are pulling it, it will rotate in a much faster way. If you reduce the force with which you are pulling it, it will revolve at a slower rate. Something similar happens with gravity and in orbits also. अभी आते हैं उन चीजों पे, उन चीजों को समझते हैं, but it's exactly same as what was happening when you were playing with that stone, that rope. It exactly like that. Okay, so let's come to understanding gravity and speed of satellite in an orbit. अभी हमने बोला फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज घूम रहा है, फोर्स कम है, if the force is lesser, it is moving slowly. Let's understand this aspect of it. अभी I'm going to write some formulas, but we do not have to remember those formulas at all. हम जो उसका कंक्लूजन निकलेगा हम उसे लिखेंगे. If for those of you who have studied science and technology in class 11, physics in class 11, they would know this, that when आप इस स्टोन को अपने चारों तरफ, let's say it's revolving at a speed of v, then the centripetal force that this rope should have applied is equal to mv square by r. ये हमें याद नहीं रखना. For those of you who haven't studied, please do not worry about it. We don't have to remember it. But for those of you who have studied, would know that अगर आप, when you are playing with that stone, and if the stone is revolving with the speed of v, then the force that you need to apply, the centripetal force, the force that is with which you are applying on the rope, the force with which the stone is being pulled towards you, has to be mv square by r.
हम उसमें अभी उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे और ये याद भी नहीं रखना है, इससे हम एक कंक्लूजन पे रीच करेंगे, वो हमें कंक्लूजन याद रखना होगा। ओके, नाउ कंसिडर अर्थ। अर्थ के अराउंड लेट्स से देयर इज दिस सैटेलाइट ऑफ मास m। अर्थ का मास हम बोल देते हैं लार्ज m, इसका मास लार्ज m एंड उसका मास स्मॉल m। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, it is revolving around Earth. Now there is no rope, but there is a force, the force of gravity. Force of gravity is pulling it in this direction. Force of gravity is pulling it in this direction. और force of gravity क्या होता है? Gravitational constant large m small m by r square. This force of gravity should be equal to mv square by r. For your stone to keep revolving at the speed of v, or for your satellite to keep revolving around Earth at a speed of v. So this gravitational force should be equal to mv square by r, the force that has to be applied on that small object to keep it revolving, the centripetal force that has to be applied on that small object to keep it revolving around this. This should be equal. अब जब इसे सॉल्व करोगे you will find that आपका जो v आएगा it will be अंडर रूट gn by r. इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट v जो इवेंचुअली v is अंडर रूट gm by r. फाइन, this v is equal to under root gm by r, where g is the gravitational constant, तो constant रहता है, m is the mass of earth, that is also constant. So in a way you can write v is inversely proportional to under root r. हमें बस ये याद रखना है, not anything that you have noticed so far, that this is the formula, this is the number and so on. The thing that we have to remember is this, कि satellite का velocity is inversely proportional to root r. इसका मतलब क्या हुआ? When r is large, satellite's velocity would be less, low, right? When r is small, satellite would be moving at a very high speed. बस ये समझो, this is one core thing that you remember, कि v is inversely proportional to r under root r. तो जैसे ही r बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, जैसे ही r बहुत छोटा रहेगा वेलोसिटी या स्पीड बोल लेते हैं, स्पीड ज्यादा रहेगी. तो बेसिकली if I tell you this, if this is earth and this is an orbit, and notice one more thing, what is the size of mass of satellite? That doesn't matter. What was velocity? It was under root g m by r. इसमें mass of satellite क्या है? छोटा सैटेलाइट, बड़ा सैटेलाइट, 1 किलो का सैटेलाइट, 1000 किलो का सैटेलाइट, that did not matter. Right? तो let's say this is first orbit, यहां पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट 1. दिस इज अनदर ऑर्बिट, यहां पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट 2. विच विल बी मूविंग फास्टर? फर्स्ट वन, सैटेलाइट 1 वुड बी मूविंग फास्टर, है ना, 1 by inversely proportional to r, root r. This will be moving faster. Or to complete one orbit, the distance that it has to cover is also less. To complete one orbit, it has to cover much higher distance. Circumference 2 pi r होता है. This r is much smaller, so the distance that it has to cover is much lesser. The distance that it has to cover is much higher. So 1, it is moving faster, and distance it has to cover is lesser. 2, it is moving slower, and distance it has to cover is much larger. So its time period would be much lesser.
its time period would be much larger. And as you keep going away from Earth, the time period would keep increasing. One example of this would be Sun and the satellites revolving around it. You will see Sun and the planets revolving around it. The planet which is nearest to Sun, Mercury, वो बहुत जल्दी अपना ऑर्बिट खत्म करता है. And as you will keep moving away, you will see that their time period is increasing. Earth takes 365 Earth days to complete one revolution around Sun. You will see Mercury, Venus, Earth के बाद Mars आ रहा है. Mars will take slightly more time. Jupiter will take उससे भी ज़्यादा time. या Earth से पहले Venus will take lesser time. Mercury will take much lesser time. और Mercury की जगह कोई और भी होता ना वहाँ पे, छोटा बड़ा, it would not have mattered unless its scale was so large that it would have impacted Sun. हम Sun से disproportionately छोटे वाली चीजों में छोटे बड़े की बात कर रहे हैं. यहाँ पे अर्थ के साइज का ही कुछ बड़ा सा आ जाएगा तो something else would come into play because Earth would also be pulled by it and that impact would be there. Okay, so coming back to another thing, अर्थ के अराउंड जब एक छोटे ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को डालोगे, what would happen? It will complete one revolution very quickly. For example, if you launch satellite at a height of around 500 kilometers from Earth, हाइट बोल रहा हूँ 500 तो रेडियस हो जाएगा 6400 प्लस 500. नोट इट केयरफुली. रेडियस ऑफ द व्हेन यू विल हैव टू मेजर द रेडियस यू विल हैव टू मेजर इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. ना, तो व्हेन वी यूज द टर्म हाइट, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग, उसमें 6400 और ऐड कर दोगे तो यू विल रीच द रेडियस. तो इफ यू लॉन्च अ सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ अराउंड 500-600 किलोमीटर, वो ना एक ऑर्बिट अराउंड अर्थ 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा. When you launch at a satellite at a height of 2000 kilometers, it means radius of 8400 kilometers, because radius of Earth is 6400 kilometers और उसके बाद 2000 kilometers का height further, तो radius of 8400 kilometers. और because in general we use the term height to explain these things, but that's why we are using the term height. अगर आप एक height of 2000 kilometers पे Earth के अराउंड एक सैटेलाइट को लॉन्च करोगे सर्कुलर ऑर्बिट में, it will take 2 hours. 500 किलोमीटर के आसपास लॉन्च कर रहे हो, इट विल टेक अराउंड 90 मिनट्स. 2000 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च कर रहे हो, इट विल टेक 2 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ. इफ यू आर लॉन्चिंग इट एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,000 किलोमीटर्स, इट विल टेक 12 hours. इफ यू आर लॉन्चिंग इट एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स, 35,786 टू बी मोर प्रिसाइज, it will be taking 24 hours, the same time that Earth takes. If you will be launching it at a height more than that, it will take more than 24 hours. आप जैसे 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 दूर जाते जाओगे वो ज्यादा टाइम लेता जाएगा. 36,000 किलोमीटर पे it was taking 1 day, 24 hours. Moon is at a height of around 3.8 lakh kilometers. Moon is at a height of around 3.8 lakh kilometers. 36,000, अगर मून 36,000 किलोमीटर के हाइट पे होता तो मून वुड हैव टेकन 1 day टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, बट राइट नाउ मून टेक्स 28 days. ये फंडामेंटल क्लियर हुआ है. आपको लग रहा होगा सर ये बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहे, बट आई एश्योर यू अगले 10 घंटे जो हम पढ़ेंगे, एवरीवेयर यूल नीड at one or the other occasion you will need this fundamental understanding that as you move away from Earth, as you move away from the body around which you are revolving, your force that would be applied on you will reduce. Force was what? gmm by r square. Force जैसे ही reduce होगा आपका speed कम होगा. Force reduce होगा मतलब distance बढ़ रहा है, distance बढ़ेगा तो आपका speed कम होगा. जब आप उसको घुमा रहे थे पत्थर को, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना शुरू करोगे इट विल रोटेट फास्टर, बहुत कम फोर्स लगाओगे इट विल रोटेट. तो ज्यादा फोर्स कब लग रहा है ग्रेविटी के केस में? व्हेन यू आर नियर दैट बॉडी. कम फोर्स कब लग रहा है? व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, देयर आर सम ऑनलाइन डाउट्स. सेकंड क्लास ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. भाई पूरा प्रोग्राम वुड नॉट बी ऑन यूट्यूब. वी आर ओनली पुटिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी सेक्शन on YouTube. The idea is to give demo. The idea is not to run this program free of cost on YouTube. Okay. Second is, what is R in this case? R
center of the earth से the radius, the distance that is there, that is r. Now, will the current affairs of SNT will also be covered till April, May? Watch the video from the beginning. You'll understand. I've explained it there. From where can I get the PDF? Please see the Telegram link in the description. On our official channel, the PDF has been made available. Okay. So, gravity and the speed of satellite. Gravity and the speed of satellite. ये वाली चीज समझ में आई? As gravity reduces, as you will move away from Earth, gravity will reduce. Gravity is gmm by r square. As you will move away from Earth, gravity will reduce, the speed of satellite will reduce. As you come close to Earth, gravity would be very high, speed of satellite would be more. Distance cover that has to be covered is less, speed is more. Okay, now one more thing. Dekho, when you were using that rope to rotate that stone like this, radius r you had fixed. That was the radius of the rope that you had. That is the radius of the rope that you had. But you must have noticed something, that when Earth is revolving around Sun, Earth revolves in an elliptical orbit. When Moon is revolving around Earth, Moon revolves in an elliptical orbit. Isn't it? Most of the चीजें elliptical orbit में revolve कर रही है. You will not find a body revolving around, naturally a body in nature which is revolving around another body in circular orbit. That's very, very exceptional situation में you will see that. So how do we decide whether, like when we are launching a satellite, we generally launch satellites in circular orbit. Elliptical orbit में कम satellite launch करते हैं. We generally launch a satellite in circular orbit. So how do we launch satellite in circular orbit? And in what situation will it be going in elliptical orbit? In what situation will it be going in circular orbit? Let us also understand that. Okay, देखो. Let's say this is Earth. Your rocket took your satellite to this height h. रॉकेट तो आपके सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर हाइट एच पे लेके जाता है ना. इट्स रॉकेट डजंट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. रॉकेट इज द व्हीकल दैट टेक्स द सैटेलाइट टू दैट ऑर्बिट, दैट पॉइंट, राइट, एंड देन इट रिलीजेस द सैटेलाइट एंड देन रॉकेट फॉल्स बैक और रॉकेट का फोर्थ स्टेज गेट्स डिस्ट्रॉयड. विल अंडरस्टैंड हाउ रॉकेट फंक्शंस. बट कम टू दिस. वी हैव कम हियर एंड वी वांट टू लॉन्च आवर सैटेलाइट. नाउ notice something. When you were revolving that, when you used to revolve that stone with your rope, if you had reduced your force drastically, the stone will not revolve, it will fall. ऐसे ही, when we are launching this satellite, if the speed is very less, it will not be able to revolve, it will fall on us. Less than what? Less than under root gm by r. अगर let me यहाँ पे I took my satellite here, I'm launching it. While launching it, if I'm launching it at speed less than under root gm by r, उसका horizontal speed अगर मैं under root gm by r से कम में launch कर रहा हूँ, then it will not be able to revolve around Earth, it will fall on. Okay, so it will fall down. If I launch it with a speed equal to under root gm by r, if I launch it with a speed equal to under root gm by r, मेरा रॉकेट सैटेलाइट को ऊपर लेके गया और सैटेलाइट को अब हॉरिजॉन्टल स्पीड देना है. अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं दोगे, सैटेलाइट को स्टेशनरी रखोगे, तो विल फॉल बैक ऑन अर्थ. कल चांद रुक जाए, है ना. सपोज किसी रीजन से चांद विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ वो रुक जाए, व्हाट वुड हैपन? चांद विल फॉल ऑन अर्थ. इट विल नॉट कीप रिवॉल्विंग, it will not keep revolving. Or if the chance speed becomes less than under root gm by r also, then also it will eventually fall. थोड़ा ऐसे नहीं गिर के दूसरे तरीके से गिरेगा, but it will eventually fall on earth.
So if the speed is exactly under root gm by r, then it will keep revolving in a circular orbit of radius. So आप when you want to launch a satellite at a radius r, radius मैं center से ले रहा हूं यहां से, और at a height h. In that case, if you want it to revolve in a circular orbit around Earth, you will launch it with a speed of under root gm by r. इसको horizontal speed, आपका rocket satellite को वहां लेके जाएगा. It will take the satellite to that particular height, and then rocket will start moving in that orbit with a speed of under root gm by r, and then slowly release the satellite. So when rocket is moving at a speed of under root gm by r, the satellite would also be moving at a speed of under root gm by r, and then this satellite will keep revolving in a circular orbit. Satellite will keep revolving in a circular orbit. So when the initial speed is less than under root gm by r, it will fall on Earth. If the speed is under root gm by r exactly, it will remain in a circular orbit. But what happens when the speed is greater than under root gm by r? नहीं अरे मैं सवाल पूछ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाने के सीक्वेंस में से बोल रहा हूँ. What would happen when the speed is more than under root gm by r? Now, to understand that, let us briefly understand यहाँ हो क्या रहा है. अर्थ, देखो रियलिटी है, the force that will be applied on Earth, the force that is being applied on the satellite is pulling it towards Earth, but still it is revolving in circular orbit. Why the hell? You are pulling it towards Earth, so it should fall on Earth. Why is it revolving in a circular orbit? We will understand this, and by this we will be able to understand what would happen when the initial speed is more than under root gm by r. See, when you launch a satellite in this direction with a speed under root gm by r, Earth is pulling it in this direction. You have launched it in this direction, but Earth is pulling you in this direction. What will be your resultant direction of movement? It will be slightly towards this. Right? कभी आपने अपने ऐसे नदी पार करी है? नहीं. आपने नोटिस किया होगा, if you want to go there, you actually reach there, because the force is being applied in that direction. The force is being applied in that direction. Right? हरिद्वार में एक जगह है हर की पौड़ी, उसमें ना अप्रैल में पानी का लेवल बहुत कम होता है. मानसून के टाइम थोड़ी गर्मियां और बढ़ जाएंगी, बर्फ ज्यादा पिघलने लगेगा, मानसून के टाइम फिर पानी और बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है. तो आई स्टडीड इन IIT रुड़की, वहां से ना इट वाज 22 किलोमीटर्स अवे, हरिद्वार 22-25 किलोमीटर्स अवे. तो अप्रैल मई में एंड टर्म खत्म करके हम सारे दोस्त एक दिन डिसाइड करें चलो पैदल चलेंगे हरिद्वार. वेले लोग, जीवन में कुछ करना है नहीं, एंड टर्म भी खत्म हो गया, तो हम ऐसे 4 बजे निकले, पैदल चल रहे हरिद्वार. 9:30-10 बजे वहां पहुंचे हैं, ऐसे बीच बीच में कहीं रुक के कुछ खाते पीते हुए 9:30 बजे पहुंचे हैं. एकदम पसीने पसीने हो रखे, हालत खराब, और वहाँ पानी बहुत ठंडा रहता है. उस पर डुबकी लगाने में जो उस दिन मजा आया था ना, वैसा कभी नहीं आया उस पानी में डुबकी लगाने. देन हम में से कुछ दोस्त पागल हुए, भाई पार करेंगे चल के, दैट्स रिस्की, आप बह जाओगे. तो सबने डिसाइड किया कि हाथ पकड़ के चलते हैं. जैसे हम 8-10 लोगों ने हाथ पकड़ा एंड वी ट्राइड क्रॉसिंग इट. 2-3 फट्टू वाले पीछे रह गए, नहीं वो हम नहीं जा रहे. व्हाट वी नोटिस्ड वाज, यार हम वहां जा रहे थे एंड द पानी का फ्लो वाज सो मच, वी रीच्ड somewhere else while we were trying to move in this direction only. The पानी का force brought us in that direction. Coming back here, gravity is pulling it in this direction. The initial velocity is in this direction. What would happen? It would result in speed ऐसा रहेगा. But when it is here, अब gravity इन्हें ऐसे ही खींच रही है इस direction में. Their resultant speed is in this direction. They will further bend like this. Will further bend like this and so on. In this way,
it will keep revolving in a circular orbit. But when gravity is more, it would have eventually fallen. When the initial velocity is less than under root gm by r, the force of gravity would be more like it will not be able to balance out the horizontal speed, it will fall. But when speed is exactly under root gm by r, it will remain in that circular orbit. But when the speed is more than under root gm by r, when the speed is अर्थ ये सर्कुलर ऑर्बिट होता, बट इसका स्पीड इज वे मोर देन अंडर रूट gm by r. In that case, what would happen? It is moving in this direction. The Earth is pulling it in this direction, है ना? अगर स्पीड अंडर रूट gm by r होता तो it would have moved in this circular orbit. But अभी इसका horizontal velocity component is much higher. It's way more than under root gm by r. So what would happen? It will move in this direction more, while Earth will pull it in this side. So rather than remaining circular, it would go like this. इसका horizontal component would be higher. इसका horizontal component would be higher, and through this is formed what is called elliptical orbit. Satellite elliptical orbit में भी जाते हैं ना? कैसे जाएंगे? When the speed is more than under root gm by r. When the speed is more than under root gm by r, the satellites go in elliptical orbit. So Earth यहाँ से लॉन्च करो, at a speed higher than under root gm by r, it will go in a elliptical orbit. You launch it, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट में आ सकता था, बट ये elliptical orbit में जाएगा. ये elliptical. Do we understand this? तो देखो इसी पॉइंट से you can launch a satellite in circular orbit. When you are launching it at a speed of under root gm by r, you can launch a satellite in elliptical orbit when you are launching it at a speed of more than under root gm by r. Did we understand this? और तो कुछ नहीं, सर्कुलर के अलावा वो गिरेगा या इलिप्टिकल होगा, और इफ द स्पीड इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, इट विल गो बियॉन्ड अर्थ्स ग्रेविटी. एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड पे आप लॉन्च कर दोगे उसे, तो अर्थ की ग्रेविटी से बियॉन्ड चला जाएगा, फिर इट विल नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, इट विल नॉट रिमेन एन ऑर्बिट, इट विल नॉट रिमेन इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ. राइट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. So, how are satellites placed in orbit, circular versus elliptical? When a satellite would be launched with a speed of under root gm by r, it will go in a circular orbit. When a satellite will be launched with a speed more than under root gm by r, it will go in a elliptical orbit. सरफेस से नहीं कर रहे हैं, सरफेस से रॉकेट लॉन्च होता है. देखो, लेट्स से ये सैटेलाइट है, ये रॉकेट, इस रॉकेट पे लगाते हो आप सैटेलाइट, ये PSLV है, खराब टूट मत जाना भाई तू, ये PSLV है, ठीक है. ये क्या है? सैटेलाइट है, लेट्स से कार्टोसैट, कार्टोग्राफी के लिए हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो PSLV पे लगाते हो कार्टोसैट, और PSLV को बोलते हो जा इसे लॉन्च करके आ. तो यहाँ से आप क्या लॉन्च करते हो? रॉकेट. धुआं छोड़ता हुआ जाता है, ऊपर जाता है, फिर ये रॉकेट जाके अंडर रूट gm by r से ऑर्बिट में घूमने लगेगा, और व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ अंडर रूट gm by r, थोड़ी देर में ये इस सैटेलाइट को बोलेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. जब ये इस सैटेलाइट को रिलीज करेगा तो सैटेलाइट वुड आल्सो बी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अंडर रूट gm by r, है ना? अभी समझते हैं सैटेलाइट लॉन्च कैसे होगा, वो विल अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर नाउ डिड यू गेट इट? डिड आई सॉल्व योर डाउट? है ना? तो टूटने वाला है, आज मेरा वजन बहुत बढ़ गया है. कोई बात नहीं. तो डू वी हैव क्लैरिटी ओवर दिस? ये आप लोगों ने लिख लिया. व्हेन स्पीड इज लेस देन अंडर रूट gm by r, इट फॉल्स. व्हेन द स्पीड इज मोर देन अंडर रूट gm by r, it is an elliptical orbit. When the speed is exactly under root gm by r, it will be in circular
ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसे बदलती है सैटेलाइट की, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सर हाउ डज सैटेलाइट टर्न बैक फ्रॉम अपॉजी? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट जी एम बाई आर। इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज आर सेम ऑल द टाइम? इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आर सेम रहेगा, 6400 प्लस हाइट, that will be the r. So in case of circular velocity, speed of satellite would be same throughout, right? Earth इसके around launching something in circular orbit at a radius r, इसका speed हमेशा क्या रहेगा, under root gm by r. But when you launch something in an elliptical orbit, is r changing? है ना, यहां पे r was less, r keeps on increasing, r keeps on increasing, r keeps on increasing. Under root gm by r will keep on decreasing, will keep on decreasing, will keep on decreasing. So in an elliptical orbit, the speed of satellite keeps changing. ये जब सबसे पास में होगा, it will be moving very fast. When it is moving away, it will be moving slowly. When at the furthest point, it will be the slowest. Okay, now Yashvardhan ji has a doubt. He says, how does the satellite turn back from apogee? Please note, speed is reducing. As you are moving away, speed is reducing. Now it's reducing, it's very less here. Gravitational force will pull it in this direction, it will. So it's similar to circular orbit में क्या होता है, right? I hope your doubt is resolved. But what would happen in case of elliptical orbit? In case of elliptical orbit, speed will keep changing. So here the satellite may be moving very fast, but as it moves away, it will be moving very slowly. Then its speed will start increasing, fastest at the perigee. Are we getting this? Are we understanding this? Clarity hai yahan? Okay, this is also understood. Now we'll come to types of orbits. We'll understand various types of orbits. उनका पर्पस क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं, which kind of satellites go where, we'll go for that crucial understanding. Okay, for now we have looked at two broad classification of orbits, circular orbit and elliptical orbit. Elliptical orbit is not of much use, but कोई मुझे बताएगा why in nature most of the things are revolving in a elliptical orbit? अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं घूम रहा है, मून सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं घूम रहा है? नहीं, वो तो सर्कुलर ऑर्बिट में भी तो ड्यू टू ग्रेविटी ही होता। अर्थ की शेप एलिप्टिकल है, नहीं यार, एलिप्टिकल तो नहीं है अर्थ की शेप। अबे सुनो, शांति रखो एक मिनट। अगर अर्थ को सर्कुलर ऑर्बिट, इफ अर्थ हैड टू गो इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट वाज द स्पीड विथ विच अर्थ शुड हैव बीन लॉन्च्ड? अंडर रूट जीएम बाय आर, है ना। अब इतने सारे स्पीड्स नेचर में अवेलेबल होंगे, अर्थ अंडर रूट जीएम बाय आर पे ही लॉन्च होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑलमोस्ट जीरो। देखो प्लैनेट्स बने कैसे हैं, प्लैनेट्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल ऑफ स्टार ओनली। स्टार रिवॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, उसका कुछ मटेरियल रिलीज हुआ है, वो कंडेंस हुआ, उससे प्लैनेट्स बने। बट वो मटेरियल किस स्पीड पे इनिशियली रिवॉल्व कर रहे थे, क्या वो कैन दैट बी अंडर रूट जीएम बाय आर? अंडर रूट जीएम बाय आर इज वन स्पेसिफिक स्पीड, अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस 1, अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस 2, अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस 3 प्लस 4 प्लस इंफिनिटी। बहुत सारे और भी स्पीड्स अवेलेबल है। तो चांसेस दैट ये पर्टिकुलर स्पीड हम नेचर चूज करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लेस।
दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी इन इज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। मून कैसे बना है? एक थ्योरी बोलती है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आके टकराया किसी और रीजन से, अ पार्ट ऑफ अर्थ गॉट ब्रोकन इनटू मून। अब वो जो पार्ट ऑफ अर्थ दैट वेंट इनटू एन ऑर्बिट एंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग, उसका इनिशियल स्पीड क्या √gm/r एग्जैक्टली था? नहीं। इफ इट स्पीड वाज लेस देन दैट इट वुड हैव फॉलन, इफ इट स्पीड वाज मोर देन दैट इट रिमेन्ड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। So in nature, by default, you will see everything revolving in a elliptical orbit because it's one specific speed at which it goes in circular orbit. Anything beyond that, and anything is lots of things beyond that, it remains in an elliptical orbit. Are we getting this? Okay. The velocity of planet is greater than √gm/r. हाँ वो तो है, बट क्यों was the question. Now अब एक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। मुझे एक और चीज बताओ, क्या अर्थ का रेवोल्यूशन का स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर? अर्थ इज रिवॉल्विंग एट डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट पॉइंट बिकॉज आर इज चेंजिंग। Total Earth takes 365 days, but while it at different point, its speed of revolution around sun are different. Same is the case with moon. अभी और हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, सारे aspects related to that would be understood. But one difference that we have seen between between orbits is we have elliptical orbit, we have circular orbit. But most of our classes would be focused around circular orbit because most of our launches are in circular orbit, and that's why now we are going to classify circular orbits into various subcategories. Circular orbits के classification को हमें समझना है. Okay, now let's say this is Earth. अब देखो, Earth has an atmosphere, right? Which is pretty dense when you are close to Earth. So if you take a satellite and launch it at a height of 10 kilometers above Earth, at the speed with which it should be launched to keep it revolving around Earth in a circular orbit. आप Earth से 10 किलोमीटर की हाइट पे जाते हो और horizontally you launch something with a speed of √gm/r. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, if there was no atmosphere, it would have kept on revolving around Earth in a circular orbit. But because atmosphere is there, its horizontal velocity is slowed down by friction. And eventually what happens? It falls back on Earth. तो जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर का रोल रहता है, the height to which Earth's atmosphere plays some role, we cannot launch satellites in that height. Why? Because satellites will face a drag because of Earth's atmosphere, and their horizontal speed would reduce, and they would eventually, when the speed becomes less than √gm/r, what happens? Falls back on. Right? So the orbits, Earth का orbit, satellite revolving around Earth, इनका orbit only starts at a height of 160 kilometers. तो अपना जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 160 किलोमीटर के हाइट से. ओनली बियॉन्ड दिस, बिलो दिस व्हाट वुड हैपन? ऑर्बिट वुड नॉट बी पॉसिबल, सैटेलाइट ऑर्बिट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ Earth's atmosphere. There would be a drag which will make it fall on Earth. So from where is it possible? From a height of 160 kilometers. तो अपना जो लो अर्थ ऑर्बिट है, it starts with a height of 160 kilometer and goes to a height of 2000 kilometers. इस में जो ऑर्बिट्स होते हैं, we call them low earth orbit. So let me take a different color for satellite. Let's say this is the color. If our satellite is revolving in this orbit, in circular, please note now we are talking about circular orbits only. It's in circular orbit, it's in low earth orbit. It's in circular orbit, it's in low earth orbit. Okay, so around up 160 kilometer, 170 kilometer के height पे, if you launch a satellite, it will take around 60-70 minutes to complete one revolution around Earth.
till a height of 2000, at a height of 2000 kilometers when you launch a satellite, it will take 2 hours. 2 घंटे में वो अर्थ का एक चक्कर लगा देगा. So 160 kilometer to a height of 2000 kilometer, it is low Earth orbit. From 2000 kilometers to a height of 35786 or roughly 36,000 kilometers. 35786 नहीं तो roughly 36,000 kilometers. This range is called medium Earth orbit. When you launch a satellite in circular orbit in medium Earth orbit, what happens? It goes at a speed, it will take its orbital time will be from 2 hours to 24 hours. अगर आप इसे 2000 किलोमीटर के हाइट पे लॉन्च करोगे, इट विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 2 hours. अगर आप इसे 3000 किलोमीटर के हाइट पे लॉन्च करोगे, इट विल टेक मोर टाइम. If you launch it at a speed of 36,000 kilometers, it will take 24 hours. That is medium Earth orbit. The specific height of 35786 kilometers or roughly 36,000 kilometers, that particular height, when you launch a satellite at that particular height, it is said to be in geosynchronous orbit. So low Earth orbit, medium Earth orbit, and that particular height of 35786 kilometer is geosynchronous orbit. और उसके beyond, क्योंकि geosynchronous orbit में जितना टाइम अर्थ लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ जितना टाइम एक रोटेशन कंप्लीट करने में लेता है 23 hours and some minutes, some seconds. It doesn't exactly take 24 hours. It's 23 hours, 56 minutes and some seconds, है ना? हाँ, वो इट विल टेक एग्जैक्टली दैट मच टाइम 35786 किलोमीटर के हाइट पे. 35786 किलोमीटर के ऊपर जो ऑर्बिट्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट. हाई अर्थ ऑर्बिट आर अगेन ऑफ नॉट मच यूज फॉर अस. हाई अर्थ ऑर्बिट आर नॉट ऑफ मच यूज फॉर अस, बट वी मस्ट नो किसे लो अर्थ ऑर्बिट बोल रहे हैं, किसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, किसे हाई अर्थ ऑर्बिट. एंड वी आर नोटिसिंग समथिंग, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज reducing and the time that it takes to complete one revolution around Earth is increasing. यहाँ पे 80-90 minutes में ही 2 hours, 10 hours, 12 hours, eventually 24 hours at geosynchronous orbit at a height of 35786 kilometers. And beyond that, more than 24 hours. Okay. So let us start with low Earth orbit. So a low Earth orbit is an orbit around Earth with an altitude between 160 km to 2000 km. ये समझ में आ रहा है? Now, sorry, any doubt? No, 160 km to 2000 km would be low Earth orbit. Objects below approximately 160 km will experience orbital decay because of drag and it would fall back. Most of our satellites go in low Earth orbit only. Now, please note, low Earth orbit is very near to Earth. If you have to take pictures of Earth, if you have to make map of Earth, if you have to observe Earth, if you have to do remote sensing of Earth, where will you do it from? Low Earth orbit. You will do it from low Earth orbit, near Earth. So most of the Earth observation satellites, I'm using the word most because समझो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे जहां अर्थ ऑब्जर्वेशन वुड बी इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, फाइन, बट मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वुड गो वेयर इन लो अर्थ ऑर्बिट. So in fact most of the satellites go in low Earth orbit because most of our satellites are generally Earth observation satellites. Then all human space flights, humans have gone to space. जितने भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स हुए हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में गए, एक्सेप्ट पीपल गोइंग टू मून. मून का हाइट कितना है? 3.8 लाख. रफली ऐसे मानो जो जियो सिंक्रोनस है ना 36,000, उसका 10 टाइम्स रफ, उसका 10 टाइम्स इज द डिस्टेंस ऑफ मून. तो एक्सेप्ट व्हेन ह्यूमंस वेंट टू मून, अपोलो मिशन, यूएस के अपोलो मिशन से ह्यूमंस वेंट टू मून, अदर देन दैट ह्यूमंस हैव नॉट गॉन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट. Humans have not gone beyond low Earth orbit. So most of the human space flight have been in low Earth orbit. क्या हुआ है? हाँ? सिर्फ चला तुम्हारी स्टोरी पता है सारे बच्चों को?
जो बच्चे हंसे उनको पता है खाली। तो किसी दिन हम हमारी क्लास बहुत बोर हो रही होगी और अजय क्लास में आ जाएगा तो आप बस हैं, थोड़ी थोड़ी आज भी हो रही है। अभी तो बोरियत शुरू नहीं हुई है अभी तो कहाँ। चलिए, आप स्टोरी के लिए कह रहे थे, ये स्टोरी अभी नहीं आएगा, एकदम बोरियत वाला फेज आएगा जब ना ऐसे बहुत सारे डिजीजेस पढ़ रहे होगे, ये वायरल, ये बैक्टीरियल, इसके लिए दवाई है, इसके लिए नहीं है, परेशान हो जाओगे। अभी तो एटलीस्ट फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स। वो अभी फैक्चुअल नहीं है चीजें, कुछ चीजें हमें फैक्चुअल भी पढ़नी पड़ती है, इसका वैक्सीन है, इसका नहीं है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो डू कम इन द एग्जामिनेशन, तब थोड़ा बोर हो रहे होंगे। तो कम बैक टू दिस। तो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स गो हियर, ऑल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सेप्ट द मून मिशन हैज गॉन हियर, ऑल आर स्पेस स्टेशन, चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो नासा और बाकी कनाडा और इन सब लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है, या अभी रशिया का एक स्पेस स्टेशन हुआ करता था विच इज डिसफंक्शनल नाउ, और अभी चाइना ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। कल हम इन सारे स्पेस स्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम आर इन लो अर्थ ऑर्बिट। अभी SpaceX when it is sending humans for tourism purposes, it's sending them to low earth orbit। सब वो 300, 500, 600 किलोमीटर की हाइट पे जा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म वाला सेक्शन। ओके, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट? वन, ऑर्बिटल पीरियड कम होता है, लेस देन 2 आवर्स। 2 आवर्स में लो अर्थ ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, इट विल हैव लेस ऑर्बिटल पीरियड। सैटेलाइट आर क्लोजर टू अर्थ and thus are able to take better pictures of Earth, and therefore you will see Earth observation or remote sensing satellites going where? In low Earth orbit. Easier placements of satellite, आपको सैटेलाइट दूर लेके जाना पड़ेगा तो ज्यादा मेहनत लगेगी, you will need much more powerful rockets. When the satellites have to be launched in low Earth orbit, less powerful rockets would be required. Common sense, वो तो दिवाली के रॉकेट्स में भी यही होता है। when the Diwali rockets with less fuel goes to lesser height, Diwali rockets with more fuel go to bigger heights. So it's easier to make rockets which takes you to a height which takes you to lower height. That's what we are saying here. Then lower latency in communication, that's also important. See, we communicate using electromagnetic waves, but electromagnetic waves travel with the speed of light. अगर सैटेलाइट पास में है तो कम्युनिकेशन फास्टर हो सकता है, latency would be lesser. But if satellite is far away, in geosynchronous orbit of 36,000 kilometers away, it will take its own time. और जब आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, लेट्स से आर्म्ड फोर्सेस, दे यूज सैटेलाइट फोन्स, वहां टेलीफोन टावर्स एंड दीस थिंग्स मे नॉट बी अवेलेबल, दे विल बी यूजिंग सैटेलाइट फोन्स। When they are using satellite phones and those satellites are very far away from Earth, then communication में गैप आएगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, there will be gap of few milliseconds which may create problems. So generally Earth observation satellites are in low Earth orbit, but sometimes communication satellites which are used for, let's say, armed forces का satellite communication, satellite telephony वाले satellites भी कहाँ होंगे? low Earth orbit में। satellite telephony वाले satellites भी low Earth orbit में होंगे, otherwise ज़्यादा lag होगा, and there would be other problems also. Let me explain you other problems too. रिमेंबर, नोट दिस, आप जब अपने फोन में डेटा ऑन कर लेते हो, अपने फोन में डेटा ऑन करते हो तो फोन का बैटरी जल्दी ड्रेन होता है। इट्स बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टावर एंड अ लॉट ऑफ डेटा इज गेटिंग कम्युनिकेटेड, अ लॉट ऑफ डेटा इज बीइंग सेंड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द नियर बाय टावर। वो नियर बाय टावर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अवे, समथिंग विच इज 300 kilometers away, 400 kilometers away, your traditional phone will not be able to make two-way communication happen there. And that's why armed forces will carry big equipments on their back which is able to communicate with the satellite. But that satellite is 400 or 500 kilometers away. If the satellite is 36,000 kilometers away, उनके साथ communicate करने के लिए तो और बड़े equipments चाहिए होंगे, right? So that is another problem. That is why satellite telephony, एक तो latency वाला issue होता है, एक equipment strong enough to communicate with a height of 36,000 kilometers. That's difficult. Now some of you may have a question कि सर हम GPS से communicate तो करते हैं, GPS तो हम सब use करते हैं, तब बहुत सारा बैटरी कंज्यूम नहीं होता है, and GPS satellites are at a height of 20,000 kilometers. You'll understand
It's only one-way communication. We just receive signals. We're not sending anything. You have something? नहीं, we'll have multiple satellites. No, we'll not have. देखो, satellite communication जब हम कर रहे हैं, now what's your name? Abhishek, right? Abhishek is saying कि sir, suppose you are communicating with the satellite here, and satellite 1 घंटे बाद तो यहाँ पे आ जाएगा. How will you communicate? So in this orbit, we'll not have only one satellite. No, we'll have 6 satellites, which would ensure that always some satellite is available to us, or 12 satellites, or 20 satellites. Costly ज़्यादा हो जाएगा. That's true, but that's what something that we have to use. Now let's come back to this. So lower latency in communication, do we understand this? And satellite face lower radiation also. Now what is ये solar radiations के बारे में हम पढ़ेंगे. In tomorrow's class we'll study. We know that sun releases solar flares. वो solar flares because of Earth's magnetic field get diverted. They don't reach Earth. वो solar storms don't reach Earth, else they would have damaged equipments here. So the satellites which are far away from Earth, geosynchronous वाले, they will face more such solar radiations flares, whereas satellites which are lower, satellites which are near Earth, Earth's magnetic field would be able to protect them more, and they will be facing lower radiation and thus may have higher life. Did we understand this? So these are some of the key aspects related to satellites in low Earth orbit, or key aspects related to low Earth orbit. Then applications. अरे लो अर्थ ऑर्बिट भैया 160 किलोमीटर के बियॉन्ड, क्या? अरे ठीक है, उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, ड्रैग इतना नहीं होता. मैं बोला ना 160 किलोमीटर के बियॉन्ड. ओके, देखो तुम्हारे डाउट्स काउंट कर रहा है. तुम्हारा एक डाउट हो गया, दो हो गया. इसीलिए ना, मतलब ऐसी चीजें पूछो जो काम की हो. ये भी काम की है. अच्छा एक और चीज ना, प्लीज रेज योर हैंड. जब भी डाउट पूछना हो ना, when you will raise your hand, I'll let you speak when मेरा फ्लो नहीं बिगड़ रहा हो. आपस में बात करना अलाउड नहीं है. तुम लग गए गुटुरगु करने. एप्लीकेशंस तो अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेयर वुड दे गो? लो अर्थ ऑर्बिट. वी नो द रीजन. द नियरर यू आर टू अर्थ, द बेटर पिक्चर्स यू विल बी एबल टू टेक. कैमरा जितना उसके पास होता है, इमेज जिसकी इमेज ले रहे हो, उतने अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो. कम्युनिकेशन सैटेलाइट, स्पेशली द सैटेलाइट फोन्स का जो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट फोन्स में यू विल नॉट वांट अ लॉट ऑफ लेटेंसी. वेयर वुड द सैटेलाइट्स गो? लो अर्थ ऑर्बिट में, बिकॉज इफ इट गोज इन geosynchronous orbit, it will have a lot of latency. Then international space station या space station generally go at low earth orbit only. Now low earth orbit में एक special type of low earth orbit होता है, that is sun synchronous orbit. So we want to understand what is sun synchronous polar orbit. It's one of the subtypes of low earth orbit, and most of the earth observation satellite that India launches goes in sun synchronous polar orbit. आपने ये नाम कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम हर जगह सुना होगा कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में हमने लॉन्च किया. तो व्हाट इज द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट? तो इट इज लो अर्थ ऑर्बिट ओनली, बट लो अर्थ ऑर्बिट में भी वन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. लेट्स टॉक अबाउट दिस. फॉर अ सेकेंड, फॉरगेट सैटेलाइट्स, जस्ट थिंक ऑफ अर्थ. ये इक्वेटर है, एंड लेट्स से दिस इज सन. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, प्लस अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग. 24 आवर्स में इट कंप्लीट्स वन रोटेशन, है ना. लेट्स से सन इज हेयर, तो सन राइट नाउ, लेट्स से दिस इज इंडिया. इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है ना. दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका नॉर्थ साउथ दोनों में है, राइट. दिस इज साउथ अमेरिका. I'm not very good at drawing or writing, इसलिए printed notes देता हूँ. Let's say this is the scenario. Let's say this is sun. Sun right now is directly falling, and let's say it's 23rd September. 23rd September को क्या होता है? Sun is directly above equator, equinox है. Sun is directly falling here.
श्रीलंका के जस्ट नीचे। क्या श्रीलंका से इक्वेटर पास होता है? नहीं, नहीं, श्रीलंका इज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मालदीव से होता है, मालदीव्स एंड उधर इंडोनेशिया। दीज आर द ओनली टू कंट्रीज इन एशिया फ्रॉम विच इक्वेटर पासेस। डोंट वरी, अभी मैपिंग भी मैं ही कराने आऊंगा आपको इंटरनेशनल वाली, तो वहां पे पढ़ेंगे। सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर हियर, श्रीलंका के जस्ट नीचे। सन इज डायरेक्टली अबव इक्वेटर, श्रीलंका के जस्ट नीचे। ये चीज समझ में आ रही है? 2 hours later what would happen? Earth would have rotated a bit. सन तो वही है, हमें लगता है सूरज घूम रहा है, पर सन इज at the same point, it is Earth which is rotating. So Earth would have rotated in this direction. 2 hours later, sun would be directly overhead here. Sun would be directly overhead here. यहाँ पे ऐसे 2 बज गए होंगे, and sun would be available at an inclination. Sun would have moved to the west. Right? 2 hours later, sun would be here, directly overhead here. 2 hours later, sun would be directly overhead here. 2 hours later, sun would be directly overhead here. ये तो समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज है। व्हाट इज सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ये समझना है हमें, पर हमें पहले द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी अंडरस्टूड। नाउ इंग्लिश, प्लीज रिमाइंड मी द मोमेंट आई स्पीक समथिंग इन हिंदी दैट आई एम नॉट अलाउड टू। हिंदी इज माई मदर टंग, सो inadvertently we get diverted in that language, but this batch is supposed to be in English. So please remind me the moment I speak in Hindi, sir, डट जाओ। Okay, let's come back to this. So when we launch a satellite, which is let's say in low earth orbit, एक तो पहले polar orbit क्या है? We'll come to sun synchronous polar orbit. First let's understand what is polar orbit. This is Earth. When the satellite is moving from pole to pole, we call it polar orbit. It need not be exactly from north pole or south pole से move कर रहा हो, even at 80 degrees or 75 degrees, we call it polar orbit. When satellite is moving from pole to pole, the orbit that it takes is polar orbit. Polar orbit is clear. Now, what is sun synchronous polar orbit? Sun synchronous polar orbit basically means this, that whenever it crosses equator, it should be in sync with sun. Sync with sun matlab, let's say it's crossing equator here and sun is directly overhead. Then next time, 2 hours later, it will again come and cross the equator, but Earth would have revolved a bit, rotated a bit. It will be crossing equator here 2 hours later. Satellite revolving around Earth, Earth is rotating niche. So 2 hours later, when it will again cross the equator, it will be crossing from here or here or here. It's always in sync with sun. Sun was overhead at the first go, sun is overhead in the second go, sun is overhead in the third go, sun is overhead in the fourth go, and always it is in sync with sun. Sun synchronous polar orbit. Most of our low earth orbit satellites go in sun synchronous polar orbit. Now, clarification. What is the clarification? Clarification is sun need not be overhead all the time. Matlab, if for the first time when it is crossing equator and it is 6 PM there, solar time 6 PM है, sun डूब रहा है. So next time when it will be crossing equator, sun should be going down. When it's crossing equator, sun should be going down. When it's crossing equator, sun should be going down. It means solar time should be same all the time. 12 noon का example I had taken just to help you understand. It's 12 noon. If it's solar noon, then it should remain solar noon all the time. If it's 6 PM, it should remain 6 PM all the time. It's 6 AM, it should remain 6 AM all the time. That is sun synchronous polar orbit. So it will always be in sync with sun. It will always be in sync with sun. So sync with sun doesn't mean it has to be, sun has to be overhead. It can be the same time all the time, every time it crosses. Now, why sun synchronous? So do we all understand what is SSPO? अभी हम notes में एक बार फिर से read करेंगे इसे, but
SSPO ब्रॉड आइडिया लगा कि व्हाट इज SSPO. नाउ व्हाई SSPO, व्हाई SSPO. हाँ, विजुलाइज नहीं हो पाए. अच्छा, आप विजुलाइज नहीं कर पाए. एक ना ग्लोब पड़ा होगा इस वाले रूम में, तो आप जाके लेके आओगे. इस वाले रूम में ग्लोब रखा हुआ है, एक लेके आओ टेबल पे. ये सब ऐसे बंद करा दिए क्या? गर्मी काहे लग रही है? करवा दूं भाई, मुझे गर्मी लग रही है. टेबल पे ग्लोब था, कहाँ चला गया? हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी से ले आओ. उसे ऐसे विजुलाइज कराते हैं. ये अर्थ पूरा विजुअलाइज हो रहा है पक्का? आपका क्या नाम है? मनीष. ये जो मनीष हैं ये मानते हैं सन है. ठीक है, अब फिर से देखो. सपोज दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ एंड our satellite is crossing the equator and Manish is right in front of the satellite. Satellite directly overhead है जब वो इक्वेटर क्रॉस कर रहे हैं. अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग. नेक्स्ट टाइम अर्थ यहाँ पे रोटेट होकर यहाँ आ चुका होगा. इन 2 hours when the satellite would come back, बट मनीष अभी भी ओवरहेड है. 2 hours later अर्थ would have rotated a bit and satellite घूम के वापस क्रॉस करेगा. अभी भी सन इज ओवरहेड. ओवरहेड वाला फंडा समझ आया? सपोज ओवरहेड इज नॉट समथिंग दैट वी वर लुकिंग एट. सपोज जब आई एम क्रॉसिंग द इक्वेटर, सन इज देयर. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्रॉस द इक्वेटर, सन शुड बी देयर. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्रॉस द इक्वेटर, सन शुड बी देयर. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्रॉस द इक्वेटर, सन शुड बी देयर. इट इज इन सिंक विद सन. ओके, नाउ विजुअलाइजेशन हो गया. चलो, वो जो लेके आए उन्हें थैंक यू बोलो. सच में पीछे ढूंढ रहा है उसे. ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट इज अंडरस्टूड. नाउ व्हाई डू वी नीड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट? हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस पोलर में क्यों डाल रहे हैं? सो दैट व्हेनेवर वी आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अ प्लेस, इट शुड बी एट द सेम लाइट. अगर 12 नून 12 नून पे हम पिक्चर ले रहे हैं किसी जगह का, तो इट शुड बी एट 12 नून ऑल द टाइम, सो दैट विल बी एबल टू कंपेयर पिक्चर 2 years लेटर ऑल्सो. अगर कोई रात के अंधेरे में पिक्चर लिया गया है कोई दूसरे, तो कंपैरिजन वुड बी डिफिकल्ट. बट इफ वी हैव टेकन पिक्चर in sync with sun, if we have taken picture at the same sunlight, then what would happen? We'll be able to make better comparison. What has happened to greenery over the 5-year period? What has happened to other images over the 10-year period, regions over the 10-year period? That is sun synchronous polar orbit. बात समझ में आई? sun synchronous polar orbit. But now come to the problem. अब प्रॉब्लम क्या है? मनीष खड़े हो गए, सूरज को खड़ा कर देते हैं. हाँ, इधर आ जाओ. और इधर ये अपना सूरज है. ठीक है, ये अपना सूरज है. वैसे ही रहो. ये अपना अर्थ है. लेट्स से राइट नाउ अर्थ इज हियर एंड सूरज इज हियर. It's revolving. Our satellite is revolving like this. Our satellite is revolving like this. Earth is revolving like this. Satellite is in sync with sun. But 3 months down the line, Earth would have revolved and would have reached here. And if satellites keep revolving like this, is it still in sync with sun? Sync में होने के लिए तो इसे ऐसे होना पड़ता ना, right? When it reaches here, here it was directly in front of sun, but here if it keeps revolving like this, it will not be in front of sun. It has become out of sync. It has become out of sync. Do we have clarity here? तो ये तो सिंक में नहीं रहा, तो अब सिंक में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? It will also have to revolve. So this orbit which was like this here,
will have to become like this, will have to यहाँ will have to become like this, right? Let me draw it. Sun नहीं, हाँ, अर्थ, ये क्या हो गया, अपने विंटर्स आ गए, दिसंबर का महीना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम सन, विंटर्स आ गए, है ना, एंड लेट्स से दिस इज आवर ऑर्बिट, this is our orbit. So whenever this satellite is crossing equator, it is right in front of sun, right? Now this was our earth, ये दिसंबर का टाइम है जब ये यहाँ पे आते हैं, मार्स आ गया इक्विनॉक्स, and if our satellites keep on revolving like this, it is not in sync with sun, है ना, it is not in sync with sun. What do we need to do? We need to revolve our satellite orbit like this, or it eclipse आज नहीं आएगा, कल आएगा. Did we understand this? In fact, on the very next day, when Earth has revolved by 1 degree, Earth 365 days में 360 degree revolve करता है Earth, तो Earth has revolved by 1 degree in 1 day, roughly approximately, it has become out of sync. The satellite has become out of sync. So roughly satellite को भी हर रोज 1 डिग्री से, ऑर्बिट को भी हर रोज 1 डिग्री से रिवॉल्व करना. So if this was the orbit, this has to be orbit, this has to be orbit, this has to be orbit. It should have moved 90 degrees in 3 months. Another 90 degree in 3 months. Another 90 degree in 3 months, another 90 degree in 3 months, total 360 degrees in 12 months. This is called precession of the orbit. Have you played with lattu? Lattu, what is lattu called in English? Top, वो रस्सी बांध के ना घुमा देते थे, क्या बोलते हैं, बेबलेट, ये कहाँ बोलते हैं, okay, modern नहीं है. So lattu, notice that lattu does 2 things. One, it rotates, and then it also keeps on revolving. One, it is rotating, but it's also precession. So our orbit will also have to precess. It will also have to precess. So to achieve sun synchronous polar orbit, there has to be precession happening, and this precession is only possible in oblate planets. What are oblate planets? Oblate planets are those planets जहाँ इक्वेटर पे ज्यादा फैट है. तो इंसान समझो, मेरी तोंद निकल गई, मैं ओबलेट हो गया, तो अर्थ ओबलेट है. जब तक प्लैनेट ओबलेट नहीं है, उसका प्रिसिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. विल नॉट गो इनटू द कैलकुलेशंस ऑफ दैट, बट if a planet is not oblate, their precision is not possible of the orbit, and when the precision is not possible in the orbit, sun synchronization is not possible. So only around oblate planet sun synchronous polar orbit is possible. Earth, we know Earth is northern hemisphere और southern hemisphere में थोड़ा सा, सॉरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा सा दबा हुआ है, और इक्वेटर के पास उसका वेट ज्यादा है. Earth is not actually spherical. Earth is of geoid shape. It is oblate planet, and precision is only possible in oblate planets. अब क्लास में लेट आए थे, टाइम पे आए थे, तो क्या रूल था, तब सबको दो. अब कब मंगवा रहे हो, बुलाओ मैं जो लेके आएंगे, मुर्गा बना दूंगा मैं. मतलब अकेले अकेले खा रहे हैं, गलत बात है, सब मिल बांट के खाएंगे. चाय कहाँ पी मैंने, अभी तक रखी हुई है भाई, देखो कहाँ पी. अब इसने रूल तोड़ दिया है, चाय नहीं, अब ना बस गर्म पानी, वो जो भी पानी है.
डू वी हैव क्लैरिटी ऑन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, SSPO, है ना? सन सिंक का मतलब समझे, प्रिसिशन की जरूरत है, उसका मतलब समझे, दैट इज, एंड प्रिसिशन इज ओनली पॉसिबल अराउंड ओब्लेट प्लैनेट्स, दैट इज सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. कम हियर, लुक एट दिस फिगर. ये पहली बार जब इक्वेटर पास हो रहा है, नेक्स्ट टाइम इक्वेटर पास हो रहा है, थर्ड टाइम इक्वेटर पास हो रहा है, द टाइम satellite is passing equator, the time should be, the solar time should be same. So whenever and wherever the satellite crosses the equator, local solar time on the ground is always the same. Local solar time on the ground, it can be 12 noon, and we are saying solar time because जो टाइम अलग अलग कंट्रीज ना अलग अलग वो टाइम का पीरियड फॉलो करती है. तो if it's 12 noon in northeast India and 2 hours later, let's say our satellite is passing over Gujarat, India के टाइम के हिसाब से तो it will become 2 PM. Why? Because India follows one standard time. But solar time would be Gujarat में 12 noon again, because sun is overhead now. Are we getting this? So that's why we have used the term solar time. Okay. A sun synchronous combines altitude and inclination such a way, हमने पढ़ लिया है. It has to precess once in a year, that is, it has to revolve once in 3 year, and it is possible only around oblate planets like Earth and Mars. आप अगर वीनस के अराउंड जाके ये करना चाहोगे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, नहीं होगा, बिकॉज वीनस इज नॉट अ oblate planet. Why do we need sun synchronous orbit? We need sun synchronous orbit so that we can take pictures, images in the same light all the time, so that in long run we'll be able to compare it. Kinds of satellites which are put in sun synchronous polar orbit, generally Earth observation satellites. जैसे अपना Cartosat 2 series of satellites have been put in sun synchronous polar orbit. Got it? Clarity है? सब नोट्स में दिया हुआ है, वो इसलिए कि ना आप लोग यहाँ पे बस लिखने के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है. मेंस में हम आंसर्स लिखेंगे जितना, जब हम टारगेट में, अभी आप PMP बैच में हो, ऐसे हमारा एक मेंस मास्टर्स प्रोग्राम आता है, तो उसमें भी ट्राई टू राइट एज मच आंसर्स. नोट्स हम तब भी देते हैं, आंसर्स लिखो. नोट्स बनाने के लिए से सिलेक्शन नहीं होगा. 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स में यू शुड बी एबल टू राइट एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल. ओके, नाउ लेट्स गो टू मीडियम अर्थ. Low Earth orbit is properly understood. सारे aspects about low Earth orbit. Height 160 km to 2000 km. Various features of low Earth orbit we understand. Generally Earth observation satellites go there, go here, we understand this. Then low Earth orbit में ही एक special type of orbit is sun synchronous polar orbit. This orbit is low Earth but from pole to pole, and this orbit is in sync with sun. And how does it come in sync with sun? We have understood that as well. Most of the satellites that are launched in low Earth orbit by India would go in sun synchronous polar orbit. Most, I mean always using the word most. जैसे ही all हो जाए ना, गलत कर दो. All planets revolve around stars in a elliptical orbit. गलत कर दो, कुछ तो होगा ना सर्कुलर कहीं पे. There are so many planets. All the planets around sun, all the known planets around sun revolve in an elliptical orbit too. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, no Pluto. Pluto is no more a planet. They all are in an elliptical orbit. Yes, they are in 9 लोगों में elliptical होने के chances हाँ हैं. But if you take infinite number of planets or billions of planets, उसमें कुछ circular रहेगा, हो सकता है. Chances हैं that some may be circular. Now medium Earth orbit. Medium Earth orbit 2000 km to 35786 or roughly 36,000 kilometers. Satellite speed is lower compared to low Earth orbit. Under root GM by R, R increase हो गया तो satellite speed would be lower. Orbital period range from 2 hours to 24 hours. 2000 किलोमीटर पे 2 hours हो गया है, 35786 किलोमीटर पे 24 hours है. तो इसके बीच में इसके बीच वाली हाइट पे जब आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे, इट विल बी इन 2 to 24 hours वाला रेंज. मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस सैटेलाइट इज इन SAT-NAV सिस्टम. SAT-NAV, satellite navigation system. GPS is launched in medium Earth orbit. Galileo, जो कि इसका है, यूरोप का GPS है, यूरोप का SAT-NAV सिस्टम है, that is in medium Earth orbit. Baidu,
जो चाइना का सैटनैव सिस्टम है, उसमें भी मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इनफैक्ट यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर हाइट है 20,200 किलोमीटर। When you launch a satellite at a height of 20,200 kilometers, it will go in medium Earth orbit, yes, but it will complete one revolution in 12 hours. आधे दिन में, तो एक दिन में वो 2 revolution complete करेगा। जैसे when you are launching satellite at a height of 2,000 kilometers, it was taking 2 hours to complete one revolution. When you launch a satellite at a height of 20,200 kilometers, it will take 12 hours to complete one revolution. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पहले जियोसिंक्रोनस को समझते हैं। व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट? दिस इज आवर इक्वेटर एंड लेट्स से दिस इज एन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर। दिस इज इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैं नॉर्थ वाला बना नहीं पाता हूँ, मैं नॉर्थ वाला बनाऊँ तो वॉर हो जाए, चाइना वाइना सब इंडिया में ही बना देता हूँ, है ना। तो दिस इज इंडिया, दिस इज दिल्ली, पाकिस्तान में चला गया कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रेजेडी होती है मेरे साथ। तो वी हैव लॉन्च्ड सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट। लेट्स से हम दिल्ली में हैं अभी, है ना, नॉर्थ इस तरफ होगा, इस तरफ भी सी द सैटेलाइट देयर। 24 आवर्स विल बी बैक एट दिस प्लेस। सैटेलाइट भी घूम के ऑर्बिट लेके वापस वहां पे आ गया होगा 24 आवर्स बाद। तो 24 आवर्स बाद यू विल सी द सैटेलाइट देयर। It is in sync with Earth. Earth will complete one rotation in 24 hours. It will complete one rotation in 24 hours, and 24 hours later, it will be back at that particular point. It would happen only at a height of 35,786 kilometers in a circular orbit. It will be in sync with Earth, and 24 hours later, you will be able to see it. Right? नहीं ना, ऑलवेज ऊपर नहीं रहेगा। देखो आप तो यहां ही हो ना, ये तो नीचे भी जा रहा है ना। इसका ऑर्बिट कैसा बनाया हमने? नीचे जाएगा ना, राइट? समझो, लेट्स से इंडिया हैज गॉन ऑन द अदर साइड, इंडिया हैज गॉन ऑन द अदर साइड। वो घूम के ऊपर से नीचे आ रहा होगा, अभी इट्स गोइंग अपवर्ड्स, दैट टाइम इट वुड बी कमिंग डाउनवर्ड्स। तो दिस इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पता है ऐसा दिखता है एज इफ इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ 8। यू कैन सी दिस 8 शेप, इट विल बी फॉर्मिंग रफली अ शेप ऑफ 8। वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और एक पॉइंट ऑफ अर्थ से इट वुड अपीयर एज इफ इट्स फॉर्मिंग अ शेप ऑफ 8। तो जैसे इफ यू लुक एट दिस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, इट विल बी गोइंग अप। अभी तो इट्स गोइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट्स गोइंग अप, बट इट विल रीच द टॉप, देन इट विल स्टार्ट कमिंग बैक। बाय दैट टाइम आप भी उस तरफ जा चुके होगे व्हेन इट्स फॉलिंग बैक। तो इट्स फॉलिंग बैक, you can see it falling back, then you will see it going below the equator, coming up. So it roughly forms a shape of 8. It roughly forms a shape of 8. Are we getting this? Are we understanding it? So for a satellite to be in geosynchronous orbit, what are the conditions that are required? One, it should be at a height of 35,786 kilometers. अगर उससे कम की हाइट पे what would happen? It will be faster. अगर उससे ज्यादा की हाइट पे तो पीछे रह जाएगा। It should be at a height of 35,786 kilometers. It should be circular orbit. Please note, it has to be circular orbit, and it should be revolving in the same direction as that of Earth. अर्थ ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, तो 12 घंटे बाद वो फिर आपको दिखने लग जाएगा। So it should be revolving in the same direction as Earth. This is the feature for geosynchronous orbit. 24 hours later, it will be at the same place. कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? It should be at a height of 35,786 kilometers, circular orbit,
and it should be revolving in the same direction as that of Earth. If it's not revolving in the same direction, समझो हम इस तरफ घूम रहे हैं, वो उस तरफ घूम रहा है, 12 घंटे बाद हमें दोबारा दिख सकता है वहां पे, तो it should be revolving in the same direction as that of Earth. This is the situation for geosynchronous orbit. Okay, मेरे को फिर ऐसे अर्थ अज्यूम कर लो कि बेल्ट इज इक्वेटर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. थिंक ऑफ दिस सैटेलाइट, ये ऐसे घूम रहा है एट ए हाइट ऑफ 35786 किलोमीटर. तो 24 आवर्स बाद ये वहां वापस यहाँ पे आ जाएगा. बट 6 आवर्स लेटर अर्थ वुड हैव रोटेटेड लाइक दिस, इट वुड हैव कम हियर. तो यहां से आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है, राइट? 6 hours later, Earth would have revolved another 90 degree. It would have started going down. 6 hours later, it would be further going down. 6 hours later, it would be back at the place where you saw it. So it's revolving like this, but for a person who can see it, it would appear as if it's making a shape of 8. It's making a shape of 8. Geosynchronous orbit. But if we put one more condition in this geosynchronous orbit, it becomes geostationary orbit. What is that condition? Condition, let us, rather than making it go in an inclination, let us make its inclination to be 0. इसको exactly इक्वेटर के ऊपर लॉन्च करो. ये मेरा बेल्ट इक्वेटर के exactly ऊपर. Now Earth is rotating 24 hours में, coming back here, it is rotating, and in 24 hours it's coming back here. So it is geosynchronous at a height of 35786 kilometer, circular orbit and revolving in the same direction as that of Earth. So it is geosynchronous, but it's satisfying one more condition. It is revolving in it is coplanar with equator plane, or its inclination with equator is 0. In that situation, something interesting would happen. It would always appear stationary. Geosynchronous के केस में it was coming back to the same point in 24 hours. Geostationary के केस में it would remain stationary all the time. कैसे? Let's understand this. Northern hemisphere, southern hemisphere, let's say it is exactly above equator. 1 घंटे बाद it would have come here, Earth would have also rotated here. वहीं पे let's say इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप दिल्ली से देख के बैठ के इसे देख रहे हो, 1 घंटे बाद भी उसे यहीं देख रहे होगे, 6 घंटे बाद भी यहीं देख रहे होगे, 12 घंटे बाद भी यहीं देख रहे होगे, 18 आवर्स बाद भी यू विल सी इट हेयर ओनली, एंड 24 आवर्स लेटर ऑल्सो यू विल सी इट हेयर. तो जियोसिंक्रोनस का एक स्पेशल टाइप होता है जियो स्टेशनरी, वेयर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ऑर्बिट विथ इक्वेटर इज 0. That is geostationary satellite. Now imagine it in the real world. We are in northern hemisphere, तो इक्वेटर साउथ में होगा, इक्वेटर हमारे साउथ में होगा, इक्वेटर के ऊपर 35786 किलोमीटर at the height of equator, launch a satellite which is remaining above equator only. So after some time we would have also moved a bit, the satellite would have also moved a bit, it would appear there only. For us it would appear there all the time. It would appear stationary. Suppose you had launched it there, अफ्रीका के ऊपर जो इक्वेटर वाला पोर्शन है आपने वहां पे लॉन्च किया था, तो फ्रॉम इंडिया यू कैन ऑलवेज सी इट देयर. और सपोज यू हैड लॉन्च्ड इट ओवर इंडोनेशिया अबव इक्वेटर, इक्वेटर पासेस थ्रू इंडोनेशिया, उसके ऊपर आपने उसे लॉन्च किया, इट वुड ऑलवेज अपीयर देयर फॉर यू. इट्स स्टेशनरी, geostationary. It is always stationary. So geostationary is a subtype of geosynchronous where you make angle of inclination to 0. Orbit का angle of inclination with equator to 0. That is geostationary. Are we getting this? Now, generally, जब हम communication satellite launch करते हैं, when we launch communication satellites, we put it in geostationary orbit. Why would we do that? देखो, communicate करने के लिए you need an antenna which should point in the direction of satellite. अब if the satellite is moving, then you will also have to continuously keep the antenna moving. But if the satellite is stationary, point the antenna in that direction, life chill. Suppose you from this point you want to communicate with some other point,
वो भी अपना एंटीना उस डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं, सैटेलाइट के डायरेक्शन में, एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली कैन टेक प्लेस। एंड देयरफॉर जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गो इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और स्पेसिफिकली इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट गो इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और स्पेसिफिकली इन जियोस्टेशनरी। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वर गोइंग वेयर, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गो वेयर, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इससे इक्विपमेंट का लाइफ टाइम पे बढ़ जाता है। जब आपको एंटीना बार बार घुमाना पड़ता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक, अगर आप लेट 1990s में जाओगे, 99 2000 वाला पीरियड, तो वहां पे ना जैसे हमारे हमारे गांव में वो नहीं आया था, डिश और ये सारी चीजें नहीं थी, वो ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम वाला एंटीना हुआ करता था, उसे घुमाते रहते थे। हा? जाली वाला नहीं, वो पाइप जैसा होता था। अच्छा, जाली भी होती थी बंदरों से बचने के लिए। ओके, सॉरी, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो हुआ करता था, तो आपको बार बार रोटेट करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पॉइंट इट इन द डायरेक्शन जहां से उसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से मिल जाए, राइट। बट communication satellite, if it can point in one direction, antennas can always keep in that direction and handle it well. So the three kinds of orbits, I hope you get clarity. See, this was geosynchronous when the inclination was there, geostationary when there is no inclination, it is revolving right above the गॉट इट, क्लैरिटी है। तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस, और जियोसिंक्रोनस का एक स्पेशल टाइप जियोस्टेशनरी। लो अर्थ ऑर्बिट में वी प्राइमरली हैड, लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे हम रिमोट सेंसिंग भी बोलते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? रिमोट इज दूर, सेंस इज फील करना, दूर से देखना, दैट इज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑल्सो गो इन लो अर्थ ऑर्बिट। Now, can remote sensing satellites go in geostationary orbit? Yes, they would not give you that clear a picture, but they may serve some other purpose. They can always keep pointing at you, है ना। आपको इधर उधर वो हमेशा एक ही सैटेलाइट आपको देखता रह सकता है। तो इसीलिए some remote sensing satellite may go in geostationary also, geosynchronous also, but most of them would go in low Earth orbit. Are we getting this? Okay. Advantages. One advantage of geostationary satellite और geosynchronous satellite is कि आप ना 3 सैटेलाइट से पूरा अर्थ कवर कर सकते हो। 3 satellites and you can cover the entire earth. Why? See, this is earth and see, earth's radius is only 6400 kilometers. आप कितने हाइट पे लॉन्च कर रहे हो उसे? 36,000 किलोमीटर। एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर इट कैन सेंड सिग्नल टू ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ। ऐसी अगर 3 सैटेलाइट आप लॉन्च कर दोगे, यू विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट एंटायर अर्थ। वेयरएज in case of low earth orbit satellite, when a satellite is at this height, it will be able to send signal only in this region. So to cover entire earth, you will need much larger number of satellites, but at higher heights you can have bigger coverage. So geo systems have significantly greater available bandwidth. They cover 1/3 of the earth's surface, less expense on tracking activities because tracking is pointed, and higher lifespan of the satellite because satellite doesn't have to move around or the equipments don't have to move around. Limitations है, line of sight वाला एक problem आता है, and then there are other aspects, delays. Communication में delay होगा, real time communication would not be possible because 36,000 kilometers and 36,000 kilometers, 72,000 kilometers signal has to travel. Satellites are costlier to install because sending satellite to this height would be expensive. Rocket would use much more fuel, and geostationary orbit cannot cover poles. जब आप geostationary हो, देखो अर्थ इज अ जियोइड, पोल के पास क्या है? थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, पोल के पास आके थोड़ा सा, दिस इज द सिचुएशन। So this
satellite here, when it sends signal, it's not able to reach the pole. So geostationary cannot cover polar region. Geosynchronous can. Geosynchronous तो ऐसे move हो रहा होगा ना, so it can cover pole, but geostationary will not be able to cover pole. That is one of the limitations of geostationary. Then we have highly elliptical orbits. Highly elliptical orbits में जाते हैं, but do we have complete clarity on low Earth orbit, medium Earth orbit and geosynchronous orbit? पक्का सारी चीजें समझ में आई इसके बारे में, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? बिकॉज कल जब हम PYQs करेंगे, यू विल सी UPSC हैज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. They've even asked questions related to numbers for 21,200 kilometers, and those numbers they have talked about that, those also. So you should have clarity on the pura concepts of orbit, and also not only because of the questions that were asked in the examination, but to understand everything else that we are going to study. These orbits are very crucial. Elliptical orbit, so I have already spoken about elliptical orbit. While launching, when you launch it at a speed more than √gm/r, what would happen? It will go in an elliptical orbit. The furthest point पे ये slowest होगा, and the nearest point पे it will be the fastest. Okay. The furthest, this thing is called apogee, and the nearest point is called perigee. Transfer orbits. Let's understand the concept of transfer orbits. Earth. Low Earth orbit. Low Earth orbit. Geosynchronous orbit. Right? When a rocket has to take satellite to low Earth orbit, is it easy? Yes. If a rocket has to take satellite to this height, it would be difficult. It would be more expensive. It will require a lot of fuel. Sometimes all the time we do this. Rather than launching satellite in geosynchronous orbit, we launch the satellite in a transfer orbit. So क्या होता है transfer orbit? Transfer orbit would basically use a different color. Transfer orbit would basically be an elliptical orbit using which you can move a satellite from low Earth orbit to geosynchronous orbit or geostationary orbit. So what you will do is a rocket. Again, let's consider this to be our satellite. This is our rocket. A rocket, rather than taking satellite directly to this orbit and launching it, a rocket will take satellite to this orbit, low Earth orbit. But while launching it, it will launch it at a speed more than the √gm/r. When it launches it at a speed more than √gm/r, what happens? It goes in an elliptical orbit. अब सैटेलाइट अपना खुद का जीवन जी रहा है किसमें? इस elliptical orbit में. But when it reaches this height, बैंगलोर से बैठे बैठे साइंटिस्ट सैटेलाइट में भी they send some fuel. Primarily fuel is taken by rocket, but satellite maybe they send some fuel. So when satellite reaches that orbit, in the influence of gravity of Earth, for satellite to go from here to here, it did not require any energy other than the initial speed with which it was launched. It reached that height, and there it would get some signal from Earth to start its engine and change its orbit. Rather than remaining in this elliptical orbit, it will ask it to change its direction and speed such that it goes in this circular orbit. So this is transfer orbit that we are talking about. आप छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्बिट यूज कर रहे हो, that is transfer orbit. So when you want to launch a satellite in geostationary orbit, आज जाके जितने भी geostationary orbit में सैटेलाइट इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किए ना, go and read all their newspapers and you would see
rocket has launched the satellite in geostationary transfer orbit. Rocket never went to geostationary orbit to a height of 35,786 km. Rocket always launched satellites in transfer orbit. ट्रांसफर ऑर्बिट में अब वो सैटेलाइट अपने आप ऊपर तक गया एंड फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, साइंटिस्ट वुड बी सेंडिंग सम मोर सिग्नल्स टू इट, स्टार्ट योर इंजन, चेंज योर डायरेक्शन, go to a larger orbit, geostationary orbit. Do we have clarity here? So these are special kind of orbits used to transfer satellite spaceships from one orbit to another. This was the mechanism that was used by Chandrayaan to launch, Chandrayaan GSLV Mark 3 to launch Chandrayaan. चंद्रयान को तो GSLV Mark 3 ने अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करके छोड़ दिया था ना. चंद्रयान ने फिर अपना स्पीड बढ़ाया, वो बड़े ऑर्बिट में गया, और स्पीड बढ़ाया और बड़े ऑर्बिट में गया. अभी समझते हैं, आज हम वो भी पढ़ेंगे, आज हम चंद्रयान भी पढ़ेंगे. बट यहाँ पे डू वी हैव क्लियर पिक्चर? नाउ दिस इज द एग्जाम्पल. यू लॉन्च द सैटेलाइट इन स्मॉलर ऑर्बिट. हियर यू लॉन्च इट विथ हायर स्पीड. It will go to and go in an elliptical orbit, but when it reaches that height, you ask it to put some more thrust and come to this bigger orbit. This is geostationary transfer orbit. So this is our summary of everything that we have studied. Orbits के बारे में आप don't look at this part for now, radius, height वाला part समझो. This is अर्थ से height का वेरिएशन, और हाइट में भी ऊपर वाला किलोमीटर्स के टर्म्स में समझिए. जो आप देखोगे किलोमीटर्स के टर्म्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कन्फाइंड हियर ओनली. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल स्पेस टेलीस्कोप, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी नियर अर्थ एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स. और सॉरी, कम टू दिस हाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट अराउंड 20,000 किलोमीटर्स पे क्या होगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा. 2,000 to 36,000 यू विल सी गैलीलियो, GPS, GLONASS, Baidu, almost all of them in the medium earth orbit. 36,000 kilometer pe generally you will have communication satellite. Now note one more interesting thing. This is the time that it takes to revolve around earth. You would see when it is very near earth, 1-2 घंटे लग रहे हैं, but आप एक बार 2000 kilometers के beyond हो, so you are taking more than 2 hours, 5 hours, 10 hours, 12 hours, 15 hours, 20 hours, 24 hours. Time is increasing. Time to complete one revolution is increasing. Speed of the satellite. When you are near Earth, very high speed, 25,000 km per hour, 20,000 km per hour, 15,000 km per hour, and the speed keeps on decreasing. As you move away from Earth, your speed keeps on decreasing. The time that you take to complete one revolution keeps on increasing, and here the distance is increasing. But note one thing very carefully: the speed. 25,000 किलोमीटर पर आवर. अर्थ पे कोई भी चीज इतनी फास्ट नहीं चलती जितनी फास्ट सैटेलाइट घूम रहे हैं. इन लो अर्थ ऑर्बिट अ सैटेलाइट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25,000 किलोमीटर पर आवर. दैट्स ह्यूज. अब 200 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ, बस फिर अगली बार नहीं चला पाओगे. गाड़ी भी नहीं चल पाएगी, आप भी नहीं चला पाओगे. फिर क्या पता स्वर्ग या नरक में वो ऑप्शन हो. बट 25,000 किलोमीटर पर आवर पे सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एट दिस स्पीड. इवन अ स्पेक ऑफ पेंट, जैसे कोई पेंट है, वो पेंट का छोटा सा टुकड़ा, इफ इट मूव्स एट 25,000 किलोमीटर पर आवर और वो आपकी बॉडी से 25,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे टकराए ना, इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट दैट अ बुलेट हैज. So the ways that we are leaving on in the orbit, they are moving at very high speed, and they would make life of future satellites more difficult. Why would they make life of future satellites more difficult? Because वो छोटे छोटे टुकड़े may eventually collide with the future satellites and may create their own problems. But this was everything about orbits. Now we'll go to अच्छा कुछ और basic चीजें. बहुत orbit. Why are all satellites launched from east coast? All is a extreme statement, but generally you would see जैसे इंडिया का
सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहाँ है? श्रीहरिकोटा, है ना। यूरोप का एक ना कोरू फ्रेंच गुयाना में यूरोप लॉन्चेस मोस्ट ऑफ इट सैटेलाइट फ्रॉम एयर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना में। आप यूएस का देखोगे, केप कैनावरल इज द मोस्ट फेमस सैटेलाइट लॉन्च प्लेस फॉर यूएस। We will see for most of these important launch sites are located on the eastern coast. Why most of the satellites are launched from eastern coast? जिन countries के पास ऑप्शन नहीं है उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, बट for most of the countries the satellites are generally launched from eastern coast. देखो यूरोप के पास वेस्ट कोस्ट पे बहुत सारी जगहें थी, but it came here on the eastern coast and is launching satellites from here. So why are satellites generally launched from eastern coast? Because of Earth's rotation. Earth is rotating from west to east, so Earth का surface is moving in this direction. So when we launch satellite in this direction, satellite gets a initial speed. आप जैसे किसी बस में, जो बस चल रही है, उससे जब उतरोगे तो you will have an initial speed. In the same way, when you launch the satellite and satellite is also, Earth is also moving in that direction, so satellite will get this initial speed that benefits the satellite. But that could have happened from here also. अगर हमने सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया होता तब भी तो इनिशियल स्पीड मिलती है ना. बट इन केस ऑफ एक्सीडेंट इफ वी हैड लॉन्च सैटेलाइट लेट्स से यहाँ मैंगलोर से, सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो बैंगलोर पे गिरता, मैंगलोर के उसी सेम लैटिट्यूड पे बैंगलोर पड़ता है, आगे सेम लैटिट्यूड पे थोड़ा चेन्नई पड़ता है. अब बैंगलोर से लॉन्च कर रहे हो, चेन्नई पे गिरता, बट अब चेन्नई के ऊपर जाके श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हो, समथिंग गोज रॉन्ग, इट falls in the water body. That's why we launch it from the east coast. But also note something, we try to come as close to equator. देखो फ्लोरिडा में भी US could have had it here, but US had tried to come close to equator. We could have also launched it from somewhere here, but we have also tried to come close to equator. ये यूरोप वालों के पास इक्वेटर के पास की कोई जगह नहीं थी, so they have come to a different continent. Eastern coast but close to equator. We generally prefer to launch satellites from close to equator. Why do we launch satellites from close to equator? Because the surface speed of Earth is highest here. To understand this, consider this to be Earth. Blue में बन गया अपना blue Earth. Consider this point on Earth. ये 24 hours में it is completing this revolution. Consider this point on Earth. In 24 hours, it's completing this revolution. Who's covering more distance? ये वाला point. In one revolution, ये वाला point is covering much larger distance. In 24 hours means in 24 hours it's moving more. Its surface speed is higher. That is the surface speed that was going to help our satellite. Initial surface speed ज़्यादा कहाँ है Earth की? Near the equator. Equator पे it's the highest. Pole पे it's the lowest. And that's why while we launch satellite from east coast, we also launch it from near the equator, so that initial speed support that the satellite gets is good enough. Okay, these fundamental things are understood. Okay, now let's go to a general timeline of India's space program. Now we'll come to India's space program. So far we had studied the basics of satellite. So India में the beginning of space program happened in 1962 with the formation of National Committee for Space Research. This National Committee for Space Research was headed by Vikram Sarabhai. ISRO नहीं बना था, यही बाद में ISRO में कन्वर्ट होगा. ISRO was formed in 1969. तो पहले National Committee for Space Research बना है. 1963 में we started launching sounding rockets from Thumba Equatorial Rocket Launching Station. August 15, 1969 में ISRO फॉर्म हुआ. 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट. I don't know nowadays, but when I was a kid, when I was in class 5, 6 and so, जीके की बुक्स आती थी, उसमें ना ये होता था कि इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी है, और हम बस रट लेते थे कि आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट. So India's first satellite was Aryabhat. It was launched with the help of Soviet rocket. We did not make our own rocket. At that time, we had our own satellite that was launched with the help of Russia. India's first experimental remote sensing satellite was Bhaskar 1.
Then India's first rocket was satellite launch vehicle. India's first experimental satellite launch vehicle, which took off Rohini satellite. It was a sounding rocket which was used. Then satellite launch vehicle was not a sounding rocket. Sounding rocket तो अपने 1963 में लॉन्च कर दिया था यहाँ से sounding rocket. Okay, so coming back to what were we talking about? Satellite launch vehicle 3 in 1982. INSAT 1A. INSAT 1A was launched. INSAT 1A was our communication satellite. Then 1984 में Rakesh Sharma became the first Indian to go to moon. Then first Indian to go to space. Then 2008 में launch of Chandrayaan 1 happened. Chandrayaan 1 was successful. It was an orbiter mission which orbited around moon. 2013 में Mangalyaan or Mars orbiter mission was launched, which reached Mangalyaan in 2014. 2016 में our SAT-NAV system, IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, or NAVIC, navigation using Indian constellation. It was completed. All the satellites which were needed there were launched. Then 2019 में Chandrayaan 2 was launched, in one of the phases we failed. We were not able to successfully land. 2022 में गगनयान का प्लान बना था. 2023 में Chandrayaan 3 was one of the major successes. तो ये broad areas हमने पढ़े, इनको और डिटेल में समझना है. Like I've used terms like sounding rocket, and you may be like, सर क्या बात कर रहे हो? What is sounding rocket? We don't have clarity over it, है ना? ऐसे ही we have used terms like INSAT and all those things. We have to understand this. We have to understand India's space program in general. ISRO के rockets. Let's talk about rockets of ISRO. So first of all, before we go to rockets of ISRO, let us understand how rockets function. Earth, orbit, rocket will take satellite to this orbit and will release the satellite. Rocket ऐसे काम कर रहा है. But now notice something. What is the purpose of rocket? Rocket का purpose है satellite को अर्थ से दूर लेके जाना. जैसे जैसे satellite would move away from earth, the gravitational force that is being applied will reduce. What is gravitational force? G_mm by r square. जैसे जैसे r बढ़ रहा है, gravitational force बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहा है, क्योंकि नीचे रेडियस में r स्क्वायर है. ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड हियर इज मच हायर. यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, यहाँ पे और भी कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, राइट? So the engine that you need to oppose that gravitational force, is also going to weaken in the sense you will need smaller engines. You will not need as powerful engine as you needed in the beginning. अर्थ से जब आप रॉकेट उठ रहा है, you will need a very strong engine with a lot of fuel, which can create a lot of force, because Earth's gravity is highest here. But as you move up, you do not need that powerful engine and so much fuel. As you move further up, you do not need that powerful engine and so much fuel. As you go ahead further, you will not need such powerful engine and so much fuel. So let's say, just for comparison purpose, कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं अर्थ से, यू नीड अ वेरी पावरफुल इंजन. लेट्स से इंजन ऑफ अ एयरप्लेन, एक बड़ा एयरप्लेन है, उसका इंजन चाहिए, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए. बट व्हेन यू आर एट द हाइट ऑफ लेट्स से 500 किलोमीटर, एट दैट टाइम द इंजन दैट यू नीड इज दैट ऑफ अ स्कूटर. उतना ही फोर्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला. So if you keep using the same engine that you used at the time of thrust, at the time of launch of the rocket, then it will be waste of resource. Not only because you do not need that much of force now, but also because ये जो इंजन का साइज था बहुत बड़ा था, इसको भी कैरी करने का कोई मतलब नहीं है. You don't want to carry this in the space. It's something like you have to ride a scooter
और लगा लिया दोनों तरफ एरोप्लेन का इंजन। तो स्कूटर में तो आप स्लोली ही चलोगे, स्कूटर में आप कम फ्यूल यूज करोगे, बट एरोप्लेन का इंजन का वजन अलग है, इस वजह से यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो जनरली व्हाट हैपेंस, रॉकेट्स में मल्टीपल इंजन होते हैं। तो रॉकेट के इंजन इस तरह से डिजाइन होते हैं कि एक इंजन बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा होगा, देन कम पावरफुल छोटा इंजन, और कम पावरफुल और छोटा इंजन। तो आफ्टर गोइंग टू अ पर्टिकुलर हाइट, ये बड़ा वाला इंजन विल फॉल बैक, अदर इंजन विल कम इनटू प्ले। जैसे आप पढ़ोगे PSLV हैज 4 स्टेज इंजन। Why 4 engines? Which will be the most powerful one? The one with stage 1, the one which starts in the beginning, because it has to oppose the strongest gravitational force, the most powerful one. Then usse kam powerful wala, it will also fall after going to a certain height. Then third one, it will also fall. आखिरी में सबसे छोटा वाला इंजन, इट क्या हो रहा है, परेशान कर रहे हैं आपको? नहीं, आप परेशान कर रहे हो सबको। ऐसे मूवी देख रहे होते ना, कोई खड़ा हो जाता है बैठ भाई, ऐसे कुछ कर रहे थे। ओके, तो द इंजन्स फॉलिंग, डू वी अंडरस्टैंड दिस? द लास्ट स्टेज, जैसे PSLV में 4 स्टेजेस होते हैं, द लास्ट स्टेज, ये अपना रॉकेट गया था, बच के इतना तरह जाएगा। It will, that's this small component along with satellite will start revolving, and then the 4th stage will release the satellite. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन अर्थ के चारों तरफ कितना भी घूमती रहेगी, अर्थ के पास नहीं पहुंच पाएगी। सैटेलाइट है ना, उसके लिए उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी और गिरना पड़ेगा। वो अगर प्यार में गिरने भी लगेगी अपनी स्पीड कम करके, वो फ्रिक्शन से जल जाएगी, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से जल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, पर प्यार नहीं मिल पाएगा। ओके, डिड वी अंडरस्टैंड हाउ रॉकेट्स फंक्शन? व्हाई डू वी हैव मल्टीपल स्टेजेस इन रॉकेट? GSLV has 3 stage, PSLV has 4 stage. Why do we have multiple stages? Because we do not want this strong powerful engine being used here also. यहाँ पे इतना फोर्स चाहिए ही नहीं ना भाई, throw those engines away, else a lot of fuel would have been consumed, a lot of wastage would have occurred. That's why multiple stages. अब रॉकेट में एक और चीज होती है, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन, हम उसको भी समझते हैं कि what are the, like PSLV has solid engine, then it uses liquid engine, then uses liquid engine, solid engine का मतलब fuel, it uses solid fuel, liquid fuel, solid fuel, liquid fuel, we'll come to that, but first of all ये सबको समझ में आ रहा है? Okay, so when we'll talk about India's launchers, India's rockets, we'll talk about PSLV, GSLV and sounding rockets. Rohini series of rockets in India are sounding rockets. So let's talk about PSLV first. हम बोल रहे हैं PSLV is 3rd generation of satellite launch vehicle of India. इंडिया का तीसरा जनरेशन, 4th जनरेशन is GSLV and 5th जनरेशन is GSLV Mark 3. GSLV Mark 3 जो अभी अपन ने चंद्रयान लॉन्च करने के लिए यूज किया था, that is 5th जनरेशन. तो PSLV is 3rd जनरेशन ऑफ इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इससे पहले के जो 2 जनरेशन थे वो SLV और ASLV थे. नाउ where is PSLV used? देखो, look at the full form of PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अपन ने अभी पोलर ऑर्बिट पढ़ा था, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. तो PSLV was primarily made for launching remote sensing satellite in sun synchronous polar orbit, SSPO. PSLV was primarily made for launching sun synchronous remote sensing satellites into sun synchronous polar orbit. तो आप देखेंगे it was developed to allow India to launch its own remote sensing satellite into sun synchronous orbit, a service that was until that time commercially available only from Russia. उससे पहले before the beginning of PSLV, for our launch of our remote sensing satellites, we were taking help of Russia only. Now, suppose it can carry a satellite weighing 1800 kgs.
टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। क्या ये छोटी सैटेलाइट को और ज्यादा हाइट पे लेके जा सकता है? अगर ये बहुत ज्यादा हैवी सैटेलाइट को कम हाइट तक लेके जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है, एसएसपीओ में लेके जा सकता है, कैन इट टेक स्मॉलर सैटेलाइट टू मच बिगर हाइट? तो PSLV, while it was primarily made for launching remote sensing satellite in sun synchronous polar orbit, it can also launch communication satellite into geostationary transfer orbit. Geostationary transfer orbit में height same रहेगा, but the initial speed that with which it has to be launched is much higher, and thus much more power would be needed, and thus smaller satellites could be launched. So look at the comparisons. ये अपना SLV ASLV था PSLV से पहले वाला, this is PSLV. देखो PSLV क्या वेट कैरी कर सकता है? PSLV SSP 1860 kg का सैटेलाइट कैरी कर सकता है मैक्सिमम। व्हाट इज द पेलोड, व्हाट इज द वेट ऑफ सैटेलाइट दैट PSLV कैन कैरी? 1860 kg। द बेस्ट वर्जन ऑफ PSLV XL। देखिए यहाँ पे PSLV XL यूज किया ना, हम अभी 6 वर्जन ऑफ PSLV पढ़ेंगे। PSLV कोर अलोन, PSLV DL, PSLV QL, PSLV G, PSLV XL, विल कम टू दैट। But the best version of PSLV can do what? It can carry 1860 kg of satellite into sun synchronous polar orbit. But it can also carry लगभग 1450 kg into GTO. It can also carry 1450 kg, roughly 1450 kg to GTO. GTO is what? Geostationary transfer orbit, जिससे satellite would be launched in geostationary orbit. पहले तो रॉकेट तो उसे ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके जाएगा ना, so it can carry 1860 kg to sun synchronous polar orbit, low earth orbit, and 1450, roughly 1450 kg to geostationary transfer orbit. Notice one more thing, सैटेलाइट का वेट जो ये कैरी कर रहा है is only 1860 kg, but what is the weight of rocket? 3.2 lakh kilogram, 320 ton, 1 ton is 1000 kg। रॉकेट का वेट है 3 लाख kgs, 3.2 lakh kgs, and the weight of the satellite that it is carrying is 1860 kgs. Why is rocket weighing so much? 90% of the weight is of fuel, and that is why we want to make it as efficient as possible. जब ज्यादा फ्यूल बर्न करने की जरूरत है तो बड़ा इंजन है, फिर गिरा दो उस इंजन को। We could have used the same engine पूरे ऊपर तक ना, why multiple engine? Because the weight, the cost of carrying this engine would be much higher. Are we getting this? Are we understanding what PSLV can do? PSLV का best version PSLV XL. What PSLV XL can do? 1860 kg to SSPO, 1450 kg to low earth orbit. Okay. Now, अभी हम उस पे आएंगे, GSLV Mark 2 Mark 3 को भी समझेंगे, but sequentially चलते हैं। तो PSLV was developed and started getting used in early 1990s. Its first launch was a failure. PSLV का जो पहला लॉन्च था वो फेलियर था। उसके बाद उसका सेकेंड फेलियर हैपेंड ओनली इन 2016. तो सो फार 59 लॉन्चेस ऑफ PSLV हैज टेकन प्लेस, उसमें से ओनली 2 फेलियर्स आर देयर. इट्स लास्ट लॉन्च वाज PSLV C57 which was the 59th launch. 59 launches में there have been only 2 failures. 1994 से 2023 तक, अब 2024 आ जाएगा. 1994 में इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था, 1993 में पहला लॉन्च हुआ था विच वाज अ फेलियर. 1994 में इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था, से ऑलमोस्ट 2024 तक, टोटल 1993 से 2023 तक इट्स बिन 30 इयर्स. 1993 से 2003 तक 2023 इट्स बिन 30 इयर्स. उसमें सिर्फ 2 फेलियर्स है, एक तो पहला वाला, सबसे पहला वाला, और एक बाद में हुआ था. विल टॉक अबाउट वो बाद वाला फेलियर ऑल्सो. इट वॉज व्हाइल लॉन्चिंग एन IRNSS सैटेलाइट. And therefore PSLV is considered the workhorse of ISRO, the most reliable rocket that India has, the most successful rocket that India has. Technical specification, SSPO में 1860 kg कैरी कर सकता है, GTO में 1450 kg कैरी कर सकता है रफली. It has 4 engines, 4 stages हैं. पहला इंजन सॉलिड फ्यूल वाला है, दूसरा लिक्विड फ्यूल वाला, फिर सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल. नाउ ये देख रहे हैं आप, these are the इंजन. तो ये पहला
सबसे नीचे वाला पहला इंजन होगा वो यूज होगा, वो गिर जाएगा, फिर सेकेंड इंजन विल कम इन टू प्ले, फिर थर्ड इंजन विल कम इन टू प्ले, फिर फोर्थ इंजन वुड कम इन टू प्ले। ऊपर होता है सैटेलाइट छोटा सा, ओके ये ऊपर होता है सैटेलाइट छोटा सा, बाकी उसमें इंजन और फ्यूल इज द मोस्ट ऑफ द वेट, 3.2 लाख kg। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द सैटेलाइट, वेट ऑफ द सैटेलाइट 1860 kg, less than 1%, less than 1%. Just understand the extent of fuel, amount of fuel that is getting used. Okay, now there's a PSLV is a expandable vehicle. PSLV is a expandable vehicle. Expandable. एक्सपैंडेबल का मतलब क्या है, एक्सपैंडेबल का मतलब ये है, अब देख रहे हो ऐसा लग रहा है इसके बगल में और रॉकेट लगा दिए नीचे, और रॉकेट स्ट्रैप ऑन कर दिए। तो एक तो पीएसएलवी कोर अलोन है, कोर अलोन मतलब ओनली द 4 स्टेजेस ऑफ पीएसएलवी, पीएसएलवी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। बट देन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पे चाहिए होगा, फोर्स कहां पे चाहिए होगा, नीचे वाले लेवल पे। वहां के लिए कुछ स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी अवेलेबल होते हैं, these are called strap on motors. You can strap these motors in a PSLV vehicle, PSLV launch vehicle, and these strap on motors can increase the capacity of PSLV. तो ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाना, स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं। एक स्ट्रैप ऑन मोटर्स होता है एक्सेल टाइप का, लार्ज वाला। 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाने के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड PSLV एक्सेल, द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ PSLV। हमने अभी देखा PSLV कैन कैरी 1860 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। विच वर्जन ऑफ PSLV कैन कैरी दैट? एक्सेल। और सबसे वीकेस्ट वर्जन ऑफ PSLV जो होता है दैट इज PSLV कोर अलोन। नाम में ही लग रहा है कोर अलोन, ओनली द कोर PSLV, नो स्ट्रैप ऑन मोटर्स, नो स्ट्रैप ऑन मोटर्स। इसके बीच में आते हैं PSLV G। G में क्या है? स्ट्रैप ऑन मोटर्स है बट नॉट द एक्सेल वन। PSLV एक्सेल में 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स थे एक्सेल साइज के, PSLV G में स्ट्रैप ऑन मोटर्स आर देयर बट नॉट द एक्सेल वन, तो लेस पावरफुल। PSLV QL में 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, PSLV DL 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एंड PSLV CA। बात समझ में आई? These are the various versions of PSLV. We do not need to remember capacity for each one of them, but we have to understand कि PSLV XL is the most powerful one, PSLV core alone is the weakest one. नाम से ही पता लग रहा है दोनों के। XL extra large strap on motors, the most powerful one. Core alone, only the PSLV core, so it doesn't have extra support. And then PSLV G, QL and DL. G में 6 मोटर्स हैं, नॉट द एक्स्ट्रा लार्ज वंस। DL में QL में 4 मोटर्स हैं, 4 और एक्स्ट्रा मोटर्स हैं, एंड DL में 2 और एक्स्ट्रा मोटर्स। तो बेस्ड ऑन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेट दैट यू हैव टू कैरी टू एट द टाइम ऑफ लॉन्च, you decide which engine to use, which version to use. Agar you have to carry something around 1000 kg, 1100 kg, you go for with PSLV core alone only. That will be good enough. आपको थोड़ा और वेट बढ़ाना होता है, you add DL, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स। और ज्यादा वेट लेके जाना है, you add 2 more मोटर्स, QL बना दो। और ज्यादा लेके जाना है, आप 6 इंजन लगा दो, PSLV G। और ज्यादा लेके जाना है, आप एक्सेल इंजन लगा दो, 6 एक्सेल इंजन लगा दो, PSLV एक्सेल। आर वी गेटिंग दिस? वेरियस वर्जन। तो अभी हम देखेंगे, ये लॉन्च हुआ, इसमें PSLV कोर अलोन यूज हुआ, यहाँ पे QL यूज हुआ, यहाँ पे DL यूज हुआ। छोटी सिंपल सी चीजें हैं, बिना वजह कंफ्यूज करके रखते हैं, है ना। जब तक हम पढ़ते नहीं हमें लगता है यार पता नहीं है क्या कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स चीजें, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। DL में तो लिख रहा है ना 2, QL में दिख रहा है 4, एक्सेल में दिख रहा है एक्स्ट्रा लार्ज, कोरोलोन में दिख रहा है, CA में दिख रहा है कोरोलोन, है ना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो कमिंग बैक टू
एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटी स्ट्रैप ऑन मोटर्स, डू वी अंडरस्टैंड दिस? हम 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगा सकते हैं. When these strap-on motors are extra large, this is PSLV XL. When these strap-on motors are of normal size, this is PSLV G. When these strap-on motors are in number 4, it is QL. Number 2, DL. No strap-on motors, PSLV core alone. So core alone, DL, QL, G, extra large. बात समझ में आ गई? Okay. So what has been the achievement of PSLV so far? Reliability, only 2 failures in 59 launches. Commercial use, PSLV has launched more than 350 foreign satellites from 34 different countries so far, and thus has earned a lot of revenue for ISRO. It has played significant role in various major ISRO missions. जैसे Chandrayaan 1 2008 में जो लॉन्च हुआ था, it was launched using PSLV. Mars Orbiter mission, it was launched using PSLV. IRNSS, इंडिया का नाविक, नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन, इंडिया का SAT-NAV सिस्टम, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इट वाज आल्सो लॉन्च्ड यूजिंग PSLV सिस्टम. इनफैक्ट GSLV Mark 3 आने के बाद दो चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 आर द ओनली 2 सिग्निफिकेंट मिशंस ऑफ ISRO दैट वेंट ऑन GSLV Mark 3. अदरवाइज जितने बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्चेस इंडिया ने किए थे, most of them happened through PSLV. That's how significant PSLV is. It enhances India's soft power, and many learning from the development of PSLV has helped us in civilian activities. For example, fire resistant tiles, better engines for missiles. इन सारी चीजों के लिए भी these engine development and these material development of rocket has played a role, has benefited us. PSLV, अब आप PSLV इमेजिन कर पा रहे हो, 4 इंजिन्स, स्ट्रैप ऑन. मेरे पास एक्चुअली PSLV का मॉडल भी है, निखिल सर ने मुझे गिफ्ट किया था. आपको अब तक पता लग गया होगा निखिल सर कितने एकेडमिकली इंक्लाइंड है. वन रीजन आई थिंक कि LevelUp IAS वुड बिकम द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इज निखिल सर. उनसे कंपैरिजन करना किसी के लिए भी वो है. तो हमें ऐसा होता है ना कि हम जब बच्चों को कन्विंस करें कि नहीं हमारा इंस्टीट्यूशन बेटर है, तुम एक हिस्ट्री किसी और से पढ़ लो और एक हिस्ट्री निखिल सर से पढ़ो, यू विल सी द ड्रास्टिक डिफरेंस. तो निखिल सर हैज गिफ्टेड मी एक मॉडल ऑफ PSLV. मैं आज लाना भूल गया, मे बी मैं कल लाऊंगा. वो अब रियल लाइफ मॉडल तो हो नहीं सकता 3.2 लाख किलोग्राम का. Why I am giving you these numbers to help you understand the extent, scale, कितनी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, है ना. बट यू शुड बी एबल टू इमेजिन दिस. 3.2 लाख किलोग्राम का एक व्हीकल, 4 इंजन, स्ट्रैप ऑन मोटर्स, can only carry 1800 kg. Worst case में it can only carry, in the best case it can only carry 1800 kg of satellite. This humongous task, हमें लगता है कि दिवाली के रॉकेट की तरह इसरो के साइंटिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, बट द थिंग्स आर वे मोर डिफिकल्ट. ओके, तो देखो प्लेन से लॉन्च हो रहा है तो हम अरे उसकी बात करेंगे. टूरिज्म के वर्जिन गैलेक्टिका लॉन्च हुआ था ना, तो टूरिज्म पर्पस के लिए जो हुआ था, देख लेंगे, मतलब उसे पढ़ लेंगे, मैं एक बार देख लूंगा फिर बता. बट हो सकता है हम प्लेन से भी लॉन्च, सॉरी हो सकता है. देखो क्या होता है ना, प्लेन से हम उसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, तो क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होगा. वो देखो उसे बहुत ज्यादा हाइट पे लेके नहीं जाएगा प्लेन. हाँ 8-9 किलोमीटर ना, वो ज्यादा हाइट नहीं होता है, वो उसे इनिशियल स्पीड दे दिया है. इससे ना इनिशियल जो आपको पेलोड रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटी, एंड इसीलिए फोर्स रिक्वायरमेंट, थ्रस्ट रिक्वायरमेंट वुड बी लेसर, एंड दैट्स व्हाई किया होगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. लेट मी स्टडी इट, लेट मी लुक इनटू इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. ओके, नाउ सॉलिड इंजन वर्सेस लिक्विड इंजन, ये एक अलग ही स्टोरी आती है. PSLV का जो फर्स्ट स्टेज इंजन है वो सॉलिड इंजन है. सॉलिड इंजन मतलब इट इज यूजिंग अ फ्यूल विच इज सॉलिड फ्यूल. तो कोयला सॉलिड फ्यूल होता है, ऐसे ही इट यूजेस समथिंग कॉल्ड HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, पर आप लोग पूछने लगते हो इसलिए मैं बता देता हूँ. HTPB एक फ्यूल होता है, वो यूज करते हैं. आप GSLV में भी जाओगे, GSLV का भी पहला स्टेज
सॉलिड फ्यूल यूज करता है। जीएसएलवी में भी पहला स्टेज, चाहे जीएसएलवी मार्क 2 हो चाहे मार्क 3 हो, इट यूजेस सॉलिड फ्यूल। जनरली जो लास्ट स्टेज होगा, लास्ट स्टेज, वो लिक्विड फ्यूल यूज करेगा। पीएसएलवी का फोर्थ स्टेज का लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, यस। जीएसएलवी का लास्ट स्टेज लिक्विड है, क्रायोजेनिक इज लिक्विड ओनली, क्रायोजेनिक इज लिक्विड ओनली, है ना। जनरली लास्ट स्टेज हमारा लिक्विड होता है। अब वाई दिस काइंड ऑफ थिंग? अब इतना बड़ा ट्रेन कोयले पे ही चल सकता था, सॉलिड पे ही चल सकता है, देन वाई सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड दिस? देखो, सॉलिड फ्यूल हैव हाई डेंसिटी, कम स्पेस में बहुत सारा वेट ऑफ फ्यूल ऐड कर सकते हो। तो व्हेन यू नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ फ्यूल, when you need to burn a lot of fuel, you would want to carry that fuel। अगर वो लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी की वजह से कम स्पेस में आ जाएगा, तो यू वुड प्रेफर दैट सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज में प्रेफर किया जाता है। प्लस सॉलिड ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ थ्रस्ट, a lot of force at one go. But then in second stage PSLV, why is it not continuing with solid? Why liquid? Solid fuel का ना एक प्रॉपर्टी होता है, it has to be burned at the same time। आपका इतना बड़ा कोई फ्यूल है, उसमें आपने आग लगाई तो उसे बुझाया नहीं जा सकता, वो पूरा फ्यूल जलेगा। वेरएस लिक्विड इंजन का एक एडवांटेज होता है, आप उसे लिक्विड फ्यूल सप्लाई करो, पाइप बंद कर दो, लिक्विड इंजन का सप्लाई बंद हो गया, है ना। तो इनिशियली यू नीड अ लॉट ऑफ थ्रस्ट, so you burn a lot of solid fuel, but if you'll keep giving this kind of thrust, you will achieve what is called escape velocity and you will go beyond Earth's gravity। तो फिर ना अगले स्टेज में क्या कोशिश करी जाती है? लेट्स ब्रिंग लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल विल गिव यू द एबिलिटी टू स्विच ऑन द मोटर, स्विच ऑफ द मोटर, स्विच ऑन द इंजन, स्विच ऑफ द इंजन। तो ऐसे सोचो, लास्ट स्टेज में पीएसएलवी है, पीएसएलवी का लास्ट स्टेज वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट करते करते उसे क्या करना है? सैटेलाइट्स को रिलीज करना है। सपोज पीएसएलवी हैज हैड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि उसने एक बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। पीएसएलवी कैन आल्सो लॉन्च सैटेलाइट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। तो फोर्थ स्टेज ऑफ पीएसएलवी इज लॉन्चिंग अ सैटेलाइट एट लेट्स से 350 किलोमीटर की हाइट पे। उसने लॉन्च कर दिया, ये सैटेलाइट घूम रहा है। नाउ पीएसएलवी हैज टू रीस्टार्ट इट्स इंजन एंड गो टू हायर। इस रॉकेट को और भी ऊपर जाना है, वहां पे भी कुछ सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, फिर उसको अपना इंजन दोबारा शुरू करना है और हाइट पे जाना है, फिर दोबारा से लॉन्च करेगा। तो इन द लास्ट स्टेज इट नीड्स द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी। दिस मैन्यूवरेबिलिटी वुड कम फ्रॉम लिक्विड फ्यूल, and that's why this hybrid system is used. Solid fuel where a lot of thrust is required, liquid fuel to bring control, to bring maneuverability, then why not use liquid only at the ground level? Liquid, देखो एक तो लिक्विड इंजन हेवी होगा, बहुत सारे। अब देखो कोयला जलाना और पेट्रोल जलाना, इंटरनल कंबशन इंजन इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर पाइप्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो इट विल बी हेवियर एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज, we use a hybrid system taking advantage of both the sides. Are we understanding it? Are we getting it? Okay, solid fuel, liquid fuel, complete picture होना चाहिए आपको, PSLV GSLV कैसे काम कर रहा है। no one should tell you कि तुमसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि भाई PSLV में ये solid liquid क्या है, और आप बोलो पता नहीं क्या है। इतना साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, तो मेरे स्टूडेंट तो मेरे नाक नहीं कटनी चाहिए ना। पता है, when you will get selected, one thing that would happen to you, आपकी एक ट्रिप इसरो में भी होगी, you will be visiting ISRO as well, and जब मेरे को वहां से मैसेजेस आते हैं ना बच्चों के, सर आज आपकी क्लास याद आई, आपकी पहली क्लास याद आई। जनरली बच्चा मेरे से टारगेट 3 के टाइम पढ़ना शुरू करता है और मेरी फर्स्ट क्लास स्पेस की होती है, एंड दिस इज द मैसेज आई जनरली रिसीव। आपकी पहली क्लास है, आई कुड एक्चुअली सी ऑल दोज थिंग्स हैपनिंग, ऑल दोज रॉकेट्स एंड दोज कंपोनेंट्स, एंड आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मेरा एक स्टूडेंट है मतलब अनमोलम, ही इज एन IFS ऑफिसर एंड ही विजिटेड दैट प्लेस, एंड उसके बाद उसने बोला, सर आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, मैंने लॉ ही पढ़ा है, बट आई कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बेटर देन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इन माई बैच, बिकॉज एक एक चीज पे क्लैरिटी है कोई, और जब ये क्लैरिटी रहेगी ना,
अब यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी नहीं कर पा रहे, आप जितना पढ़ के जाओगे साइंस एंड टेक उतना कोई पढ़ के नहीं जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब वो नहीं होगा, किसी चिल मारो, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन। अब किसी ने उस एरिया में पीएचडी कर रखा होगा वो कर देगा, उससे तो कंपटीशन डिसाइड नहीं होता ना, कंपटीशन डिसाइड होता है व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट एनीथिंग दैट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम यू शुड बी अ स्टेप अहेड ऑफ दैट, सो दैट उससे भी डिफिकल्ट कुछ आए कोई बात नहीं, दैट्स नॉट डिटरमाइनिंग माई सिलेक्शन। माई सिलेक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाय द एरियाज जो जनरली सब लोग पढ़ लेंगे, वहां पे हमें एक स्टेप आगे रहना है। आर वी गेटिंग दिस? तो अब हम सोच पा रहे हैं क्यों लिक्विड इंजन, सॉलिड इंजन, वो वाले एस्पेक्ट्स। लेट्स गो थ्रू द नोट्स वंस। तो सॉलिड रॉकेट फ्यूल हैज इट्स फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट मिक्स टुगेदर एज अ फाइन पाउडर। सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है या की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट गिव्स हायर थ्रस्ट, हायर फोर्स टू लॉन्च द व्हीकल इनिशियल लेवल पे, लेस वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा होगा सॉलिड फ्यूल का, तो इट विल बी 1 kg of solid fuel would take less space when compared to 1 kg of liquid fuel. One time burn, solid fuel you cannot control its burn, एक बार आपने आग लगा दी उसमें तो वो चलता रहेगा। Then it produces a lot of smoke, large particles when fired. This is a disadvantage, pollution वाला aspect होता है। You know, कोयला बर्न करने से आप ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करोगे when compared to लेट्स से आप लिक्विड हाइड्रोजन बर्न कर रहे हो तब, या फिर लिक्विड केरोसिन बर्न कर रहे हो तब। A liquid fuel engine gives you ability to control the thrust, switch off the engine, switch on the engine. Engine can be shut down and restarted. It gives you higher energy density, joule per kg of propellant. Now note something. 1 किलो solid fuel और 1 किलो liquid fuel में, liquid fuel 1 किलो में may give you more thrust, but 1 किलो will consume more space. Liquid of 1 kg of liquid will consume more space. Then higher specific impulse. This is an important thing. Do we understand what impulse is? This specific impulse would keep coming again and again. Let's understand that. Specific impulse से पहले what is impulse? Impulse होता है force into time. Force into time. Let's say कोई एक फ्यूल है जो बहुत सारा फोर्स दे रहा है, बट वो जल जाता है जल्दी से, खत्म हो जाता है जल्दी से, तो the time for which it will be able to give you that force would be much lesser, so its impulse would be lesser. कोई दूसरा फ्यूल है वो बहुत टाइम तक जल रहा है but its force is very less, so its impulse will also be lesser. but एक फ्यूल है जिसका फोर्स भी अच्छा है और वो धीरे धीरे चल रहा है तो टाइम भी ठीक है. No, force is not as strong as solid but not very bad. Time is not as bad as solid but good enough. So overall force into time would be better. ऐसे समझो, like 100 into 0.1 और 0.1 into 100 की बजाय if you get 10 into 10, 10 into 10 is 100, 100 into 0.01 और या 0.1 10, 0.1 into 100 10. तो दोनों तरफ अगर बैलेंस रहेगा, फोर्स में भी टाइम में भी, यू विल गेट बेटर इंपल्स. लिक्विड फ्यूल गिव्स यू बेटर इंपल्स एंड बेटर स्पेसिफिक इंपल्स. सो व्हाट इज स्पेसिफिक इंपल्स? इंपल्स पर केजी ऑफ फ्यूल. तो लिक्विड फ्यूल हैज बेटर स्पेसिफिक इंपल्स per kg of fuel. Liquid will provide you better specific impulse. And what do you need at higher heights? You need better impulse. Why? You will need to use small force for a much longer period rather than a lot of force which you need to need while getting away from the gravity. Are we understanding this? Clarity hai? So it gives you higher specific impulse. Liquid fuel gives you higher specific impulse. That's an advantage. अभी हम cryogenic fuel पे आएंगे, वहां पे बेस्ट स्पेसिफिक इंपल्स किसका है? क्रायोजेनिक फ्यूल का. एंड दैट इज व्हाई लास्ट स्टेज में हम क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करेंगे इन जीएसएलवी एंड जीएसएलवी मार्क 3. ओके, व्हाट इज क्रायोजेनिक लिक्विड? आते हैं, विल कम टू क्रायोजेनिक. और क्रायोजेनिक का स्पेलिंग CRYO होता है. विल कम टू दैट. विल अल्ताफ ने क्वेश्चन पूछा है क्रायोजेनिक क्या होता है. विल कम टू क्रायोजेनिक वाला एस्पेक्ट. तो डिसएडवांटेज, लिक्विड फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या होता है? The engine is more complicated to build. There are more pipes and more components there, and thus is heavier.
अब हम हेवी इंजन को ऊपर लेके जाएंगे, वो एक डिसएडवांटेज होता है। नाउ टू गेट एडवांटेज ऑफ बोथ सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल, हम द इंजन्स दैट वी हैव मेड पीएसएलवी जीएसएलवी दे आर हाइब्रिड इंजन्स, सॉलिड भी है लिक्विड भी है एंड गोज ऑन अकॉर्डिंगली। समझ में आ रही है बातें? ओके, नाउ these are some of the recent launches of PSLV. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, your exam will be in May 2026, तो from May 2026 बोल रहा हूँ, May 2024, तो from May 2023 से जो भी launches हुए हैं that should be there in your notes. बहुत पुराने launches करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चंस आएंगे तो they will come on fundamentals, they will not come on factual aspect. हमें factual aspect पिछले एक साल के देखेंगे, ठीक है। तो रिसेंट जो लॉन्चेस हैं पीएसएलवी के, भी सितंबर में आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, हम उसे आदित्य L1 पढ़ते टाइम और डिटेल में देखते हैं। देन PSLV C57 वाज द 59th लॉन्च ऑफ पीएसएलवी, सो फार 59 लॉन्चेस ऑफ पीएसएलवी हैज टेकन प्लेस, वी हैड सीन दैट। उससे पहले इन जुलाई 2023 PSLV C56 वाज लॉन्च, इट इज आल्सो कॉल्ड DSSAR मिशन, इट वाज अ कंप्लीटली कमर्शियल मिशन। कंप्लीटली कमर्शियल मिशन मतलब वो इंडिया के लिए कुछ लॉन्च नहीं कर रहे थे, सिंगापुर के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे। इसरो हैड लॉन्च सैटेलाइट्स फॉर सिंगापुर, तो ये जो DSSAR है ये भी सिंगापुर का सैटेलाइट था, एंड अलोंग विद दिस अ नंबर ऑफ अदर स्मॉल सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड, दोज वर आल्सो सिंगापुरियन सैटेलाइट्स। So you will see the launch of PSLV C56 carried DSSAR satellite along with 6 co-passengers. All these 7 were Singaporean satellites. This was accomplished in 2023, July 2023. PSLV C56 was configured in core alone model. Core alone का मतलब 1100 kg most basic वाला जो PSLV है that was used. इसे एक और चीज समझ में आएगी, the weight of all the satellites combined together should not be more than 1100 kg. It should not be more than 1100 kg. So, what is DSSAR? DSSAR is a 360 kg satellite into near equatorial orbit. So it was launched into near equatorial orbit at 5-degree inclination at 535 km altitude. So please note it was not launched in SSPO. Near equatorial orbit है ना? So it went into low earth orbit. Height कितना है? 535 km. PSLV जनरली चीजों को low earth orbit में लॉन्च करता है रिमोट सेंसिंग के लिए, but it was not launched in SSPO, sun-synchronous polar orbit. DSSAR satellite is used for satellite imagery requirement of various agencies of government of Singapore. It's a synthetic aperture radar, और उसके अलावा these were other satellites, Velox, AM, Arcade, Scoop 2, Nilian. आप इनके weights देखो, जैसे Velox का weight 23 kg है, तो overall total combined weight of all these 7 were not more than 1100 kgs. Then April 2023 का लॉन्च है PSLV C55 और टेलियोस मिशन। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट इसमें ना आई हैव इंक्लूडेड इट हियर बिकॉज आई वांटेड टू स्पीक अबाउट पोएम, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। व्हाट इज दिस पोएम थिंग? देखो, अभी हमने समझा PSLV had 4 stages, सॉलिड स्टेज पहला वाला, फिर लिक्विड स्टेज, फिर सॉलिड स्टेज, फिर लिक्विड स्टेज। 3 स्टेजेस तो नीचे गिर जाते हैं, दे फॉल बैक ऑन अर्थ। 4th stage starts revolving in the orbit. While it is revolving in the orbit, it releases satellite. ये पढ़ा अपन ने, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, यही होता है। उसने सैटेलाइट्स रिलीज कर दी, नाउ सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग। व्हाट हैपेंस टू फोर्थ स्टेज आफ्टर दैट? 4th स्टेज वैसे ही घूमता रहता है जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। नाउ इट्स अ इंजन, इट्स नॉट अ सैटेलाइट, so it has not been designed to work as a satellite, and therefore it would get destroyed in 6 months or so. It would not remain there like other satellites जो सालों सालों तक रह सकते हैं, because they were designed for that purpose, they were constructed for that purpose. But 4th stage of PSLV was not designed for that purpose, but it will still keep revolving for 3-4 months, 5 months, 6 months, sometimes up to 1 year.
इट विल स्टिल कीप रिवॉल्विंग। अब हमने ये सोचा भाई घूम तो रहा ही है ना, तो सपोज मनीष को हो रहा था कि सर मुझे भी अपना सैटेलाइट बनाना है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है मनीष, और मनीष ने बोला कि सर मुझे अपना सैटेलाइट बनाना है। तो इसरो ने बोला बेटा एक काम कर, तू ना उसके पहले कंपोनेंट्स बना ले, सेंडर रिसीवर, सेंडिंग रिसीविंग के जो सिस्टम है वो बना ले, हम अपने फोर्थ स्टेज पे लगा देंगे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अब फोर्थ स्टेज, रॉकेट का फोर्थ स्टेज घूम रहा है, इट्स नॉट अ सैटेलाइट, बट उस पर आपने कुछ सेंसर्स लगा दिए हैं, कुछ सेंडिंग रिसीविंग का सिस्टम लगा दिया। अब मनीष एक यूनिवर्सिटी में बैठा है इंडिया में, इसने अपना एक कंपोनेंट वहां पे लगा रखा है, उससे सिग्नल रिसीव कर रहा है, उससे सिग्नल भेज रहा है, इज एबल टू एक्सपेरिमेंट विथ हाउ सैटेलाइट्स वुड फंक्शन। इसरो का ज्यादा कॉस्ट भी नहीं गया, एंड इसरो वाज एबल टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी वेयर दीज पीपल आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग ऑफ द सैटेलाइट्स। दिस इज पोएम। The mission has the PSLV orbital experiment module where the spent PS4 stage of the launch vehicle would be utilized as an orbital platform to carry scientific experiment through non-separating payloads। तो यहाँ पे पेलोड सेपरेट नहीं होंगे PSLV स्टेज 4 से, वो PSLV स्टेज 4 पे लगे रहेंगे। द पेलोड्स बिलोंग टू इसरो, बेलाट्रिक्स, ध्रुव स्पेस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब इसे पोएम 2 इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। इन 2019 इसरो स्टार्टेड डूइंग इट। आई टॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 कि इसरो हैज स्टार्टेड यूजिंग फोर्थ स्टेज इंजन एज एन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम वेयर opportunity would be provided for various components to be added। ये बात समझ में आई? पक्का? पोएम स्टेज। ओके, नाउ लेट्स गो टू GSLV, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज GSLV? देखो, PSLV was designed for launching satellite in sun synchronous polar orbit। It can launch satellite weighing up to 1800 kg to sun synchronous polar orbit। पर ये छोटे सैटेलाइट्स, लगभग 1300-1400 kg वाले सैटेलाइट्स को it can also carry to GTO, geostationary transfer orbit। But now we know that geostationary transfer orbit is pretty far away, 36,000 kilometers। Generally, the communication satellites that we launch in geostationary transfer orbit are eventually to geostationary orbits। हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, दे आर प्रीटी हेवी, 1300-1400 किलो, 1300-1400 kg is not good enough, they are heavier, and thus PSLV was not in a position to launch those heavy satellites। कोई सैटेलाइट 2000 kg का होता और हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, and we had to launch it in geostationary orbit, then could PSLV launch it? 1500 kg भी होता तब भी PSLV लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि PSLV कैन कैरी GTO ओनली अप टू 1450 kg, राइट। So for launching communication satellite, scientists in India developed geosynchronous launch vehicle। Geosynchronous orbit we understand, scientists developed GSLV। इसमें GSLV Mark 1 आया था पर वो अब यूज नहीं हो रहा, will primarily talk about GSLV Mark 2। तो GSLV is an expandable launch system operated by ISRO। expandable का मतलब क्या है? स्ट्रैप ऑन मोटर्स यहां भी ऐड हो सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेज। इसका फर्स्ट लॉन्च हैपेंड इन 2001 बट फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हैपेंड इन 2003। GSLV ना इतना रिलायबल नहीं रहा है, ये फेल होता रहा है, अभी 2021 में इसका एक फेलियर हो गया। तो GSLV हैज बीन less reliable unlike PSLV। PSLV में in 59 launches we see only 2 failures, GSLV में number of failures have been much higher। main purpose क्या है? It was primarily developed to launch INSAT। INSAT series is India's communication satellite series, INSAT और GSAT, ये दो सीरीज हैं अपने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सीरीज हैं। It was primarily used for launch, these satellites were primarily used for communication purpose and thus were going to geosynchronous orbit or geostationary orbit, that is to a height of 36,000 kilometers। So it was primarily developed for launching INSAT। तो पहले INSAT था,
कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज अपना, फिर जीसैट आया, जैसे अभी भी इंडिया का जो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इंडिया हैज एवर लॉन्च्ड इज जीसैट 11, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जीसैट 11. तो इनसैट सीरीज, जीसैट सीरीज, दीज आर सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. बट नाउअडेज UPSC, ISRO has started using common names. Now it uses names like CMS-01, Communication Satellite 01, Communication Satellite 02, Communication Satellite 03. तो पहले INSAT series थी, फिर GSAT series थी. Now you'll have CMS series. So these are communication satellites. So GSLV was launched primarily for what purpose? For launching communication satellite in geosynchronous transfer orbit or geostationary transfer orbit. So payload that it can carry roughly around 2500 kgs to GTO. GTO में PSLV कितना कैरी कर सकता था? 1450, 1450 ना, 450 नहीं, 1000. PSLV could carry 1450 kg. GSLV increased its capacity to 2500 kg. अब satellite weighing up to 2500 kg India could launch at its own. And देखो, अगर GSLV GTO में 2500 kg कैरी कर सकता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में तो it will be able to carry much more. So from 4000 to 5000 kg it can carry to low earth orbit. Okay, now GSLV Mark II जो है, उसमें पहला स्टेज सॉलिड मोटर स्टेज है, सॉलिड इंजन वाला स्टेज है विथ 4 लिक्विड इंजन स्ट्रैप ऑन मोटर्स. इसके 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी लगते हैं पहले स्टेज में. दूसरा स्टेज लिक्विड स्टेज है और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है. GSLV हैज 3 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक. PSLV हैड सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन. PSLV का ये था सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड. GSLV क्या है? सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक. सॉलिड एंड लिक्विड वी अंडरस्टैंड, ये हमें क्रायोजेनिक समझना है. क्रायोजेनिक क्या होता है? थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज, इसे हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी बोलते हैं. जनरली क्रायोजेनिक इंजन वुड बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट. क्रायोजेनिक इंजन वुड बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट. तो व्हाट इज दिस क्रायोजेनिक अपर स्टेज? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस फ्यूल, दिस इंजन इज कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन. क्रायो का मतलब क्या होता है? बहुत ठंडा, है ना. आपको क्रायोस्फेयर की बात करते हैं कि इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड अर्थ का क्रायोस्फेयर इज फेसिंग क्राइसिस. गिव रीजंस. इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, यू विल हैव टू टॉक अबाउट दोज एरियाज व्हिच रिमेन फ्रोजन, दे आर फेसिंग क्राइसिस. गिव रीजंस फॉर दैट. तो वेरी कोल्ड रीजंस आर कॉल्ड आर पार्ट ऑफ क्रायोस्फेयर. तो जब फ्यूल आपको बहुत कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, और जो इंजन उन फ्यूल को यूज करते हैं उन्हें हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, द फ्यूल दैट वी यूज हियर इन क्रायोजेनिक इंजन इज लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए आपको लेस देन -250 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ता है. हाइड्रोजन को आप गैसेस फॉर्म में ले जा नहीं पाओगे. इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, it will require a lot of volume, so it is pressurized and cooled so that it becomes liquid. इसका वजह एक और रूल, कौन बच सकता है? कोई है, कोई करंट अफेयर्स वाला बच्चा है वो पूरे रूल समझाएगा? नहीं? संजू समझा दो सबको रूल. सिर्फ ये रूल नहीं है बेटा, सिर्फ तुम्हारे लव इंटरेस्ट का कॉल आ सकता है और किसी का नहीं आ सकता, और तुम्हें स्पीकर पे बात करनी पड़ेगी. ठीक है, वरना फोन बजाओ मत. और अगर 30 साल से ऊपर हो गए हो, मेरी वाली कैटेगरी में हो, तो पेरेंट्स का कॉल आ सकता है. फिर तब तक रियलाइजेशन हो जाता है पेरेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, है ना. 30 साल से नीचे वाले हो, तुम्हारे लव इंटरेस्ट का कॉल आ सकता है, पर तुम्हें बात करनी पड़ेगी, काटोगे नहीं सबके सामने, है ना. नहीं तो फोन सब लोग साइलेंट पे करके रखो, नहीं तो फिर से मुर्गा बना दिया जाएगा. ओके, चलिए वापस आते हैं. तो क्रायोजेनिक इंजन, द फ्यूल दैट वी यूज हियर, एंड नॉट ओनली फ्यूल, यहां तो ऑक्सीडाइजर भी, ऑक्सीजन को भी लिक्विड में रखने के लिए आपको
-250 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जाना पड़ता है, -250 डिग्री सेल्सियस। तो यू विल बी लाइक सर काहे इतना परेशान कर रहे हो, चल तो रहा था लिक्विड फ्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना? वाई लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन? बिकॉज इट हैज द बेस्ट स्पेसिफिक इम्पल्स। लास्ट स्टेज में हमें क्या चाहिए? इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स। इम्पल्स क्या था? फोर्स इनटू टाइम, स्पेसिफिक इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम पर यूनिट केजी ऑफ पर केजी ऑफ फ्यूल। दिस हैज बेस्ट स्पेसिफिक इम्पल्स। थोड़ा सा फ्यूल लेके जाओगे, बहुत टाइम तक एंजॉय करोगे। कम फोर्स चाहिए होगा, वो कम फोर्स बहुत टाइम तक आपको मिलेगा, धीरे 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 धीरे, एंड ऑल योर मैन्यूवरेबिलिटी दैट इज नीडेड एट द लास्ट स्टेज वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। And therefore we use cryogenic engine in the fourth stage here. We use liquid hydrogen and liquid oxygen. तो अभी तक GSLV Mark 1 था जिसका ABC वर्जन है, but they are not used anymore. So we are not going to cover it. GSLV Mark 2 we have seen that it uses solid first stage. Strap-on motors जो यहाँ पे, please note something. Solid engine का जो strap-on motor था वो liquid था. फिर second stage liquid, but उसे हम बोल रहे हैं अर्थ स्टोरेबल लिक्विड। व्हाट इज मेंट बाय अर्थ स्टोरेबल लिक्विड? वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड में स्टोर हो जाता है। UMDH यूज करते हैं, असिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन एज फ्यूल विच इज लिक्विड, बट नॉट, अब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो, मन है बहुत तो UMDH, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल, UDMH, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन, रेलेवेंट नहीं है, दैट इज द लिक्विड फ्यूल वी यूज। नो स्टेप 1 नहीं, लिक्विड फ्यूल कहाँ यूज करते हो? स्टेप 2 में ना। क्या यार, स्टेप 1 में तो क्या यूज किया था अपन ने? STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। या उसे इंटरेस्ट नहीं है, बोले सर आप जब बोल दोगे इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, अब पिछले 3-4 साल में ना मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया, सब कर लिया, तो अब मैं थोड़ा बड़ा लगता हूँ। 3-4 साल पहले जब मैं पढ़ा रहा होता था तो वैसे लौंडा सा दिखता था, तो बच्चे ना बहुत जज करते थे, अरे ये तो अपने जैसे ही पढ़ाने आएगा, और यूजलेस सवाल फेंक के मारते थे ताकि इसे परेशान किया जाए। तो मैं उन्हें अब एक स्टेप एक्स्ट्रा ही बताता हूँ, खुश रहो तुम। बस ऐसे सर कौन सा सॉलिड फ्यूल, कोयला यूज करते हैं क्या? अब क्या बताऊं मैं? ब्रेक सही है, ब्रेक ही तो चल रहा है, इसने बीच में टॉफी वॉफी भी खा ली अकेले अकेले, तो तुम इसे पीटो, उसने रूल ब्रेक किया है। ब्रेक नहीं मिलेगा अभी, पढ़ते हैं, चलो रुको। देखो जब 6 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे बाद ब्रेक है, जब 6 घंटे पढ़ना है तब 3 घंटे बाद ब्रेक है। सुनता है नहीं। इस कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ करोगे, ध्यान से थोड़े थोड़े, ये JSLV खत्म करते हैं, ठीक है? वो तो बीच में सोया भी था, है ना? सोए थे ना तुम? तुम्हें लगा मैंने देखा नहीं? क्या कर रहे थे तुम रात भर? अबे हंसने की क्या बात है, बेचारा पढ़ भी सकता है। तुम कुछ और सोच रहे हो, वो कंपटीशन बढ़ा रहा है, पढ़ रहा था बेचारा। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? सो गए थे। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा अभी, ताकि लोग ना सोएं, है ना? लेट्स कम बैक टू, डिड वी अंडरस्टैंड GSLV 3 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में वी हैव लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। नाउ लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3, जिसे हम ने चंद्रयान के लिए भी यूज किया था, इसे GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं, बट जैसे हमने कहा अब UPSC ISRO has started using generic names. Launch vehicle Mark 3, LVM-3. It's basically GSLV Mark 3. इसे बाहुबली भी बोलते हैं, और बाहुबली रॉकेट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल रॉकेट that we have developed, GSLV Mark 3. Now GSLV Mark 3 also has 3 stages. पहला स्टेज solid rocket booster, दूसरा स्टेज liquid, तीसरा स्टेज cryogenic. But its capability is much higher. It can carry 4-ton class of satellite, 4000 kg of satellite in GTO, geostationary transfer orbit. 4000 kg of satellite in GTO can be carried by this. GSLV Mark 2 कितना कैरी कर सकता था?
2500 kg, PSLV 1450 kg, to GTO roughly 1450 kg. It can carry up to 4000 kg. तो अपना जो डिपेंडेंसी था ना दूसरी कंट्रीज पे फॉर लॉन्चिंग जियोस्टेशनरी for launching communication satellite in geostationary transfer orbit, that has been reduced a lot. That has not been eliminated. Please note carefully. क्योंकि अभी भी 4000 kg के सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है ना. Our best satellite, communication satellite GSAT-11 was weighing 5800 kg. 5800 kg का सैटेलाइट तो अभी भी ये लॉन्च नहीं कर सकता. हमें उसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का Ariane 5 रॉकेट यूज करना पड़ा था. वी हैड टू टेक देयर कमर्शियल हेल्प. सिर्फ हम ही पैसे नहीं कमा रहे, बाकी स्पेस एजेंसीज भी सैटेलाइट लॉन्च कर करके पैसे कमा रहे हैं. नाउ इफ टू GTO it can carry 4000 kg, so to low earth orbit it can carry 8000 to 10000 kg, 8 to 10 tons. Okay, so now our best satellite, our best rocket is launch vehicle Mark 3. देखो इसका लिफ्ट ऑफ मास कितना होता है, 640 टन, 6 लाख kgs, और द वेट दैट द पेलोड दैट इट कैन कैरी, द सैटेलाइट इट कैन कैरी इज ऑफ 4 टन टू GTO 4000 kg. तो GSLV Mark 3 का वेट रफली इज ट्वाइस दैट ऑफ PSLV. वो 3 लाख kg था लिफ्ट ऑफ मास, इसका लिफ्ट ऑफ मास इज 6.4 लाख kg. तो PSLV 3 लाख kg रफली, GSLV 4 लाख kg, 6 लाख kg. लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 1800 टन, वो नंबर्स थोड़े इधर उधर करते रहते हैं. GTO में 1.4 टन 1400 kg, GTO में 2500 kg रफली, GTO में 4000 kg. लो अर्थ ऑर्बिट में 1800 kg रफली, लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 kg ये, एंड लो अर्थ ऑर्बिट में 8 to 10,000 kg. Can you make this comparison of our rockets? But let's compare our best rocket with the best rockets of other country. Ariane 5 जो किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. GTO में it can carry 10,000 kg. So our GSAT-11 which weighed around 6000 kg was carried by Ariane 5. Okay, हाँ 10,000 kg का वेट ये ले सकता है. और इसका लिफ्ट ऑफ मास देखो 780 टन, 7.8 लाख kg. लॉन्ग मार्च चाइना का GTO में 14 टन. फैल्कॉन हेवी स्पेस एक्स का GTO में 27 टन. नासा बना रही है स्पेस लॉन्च व्हीकल 27 टन. तो अभी हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज को बहुत डेवलप होने की जरूरत है. When compared to our competitors, even the private players have much bigger capacities. Okay, now let's look at broadly the important launches of Mark 3, GSLV Mark 3, LVM-3. देखो LVM-3 का पहला ना एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट लॉन्च हुआ था 2014 में. एक्सपेरिमेंटल में बस उन्होंने फर्स्ट स्टेज इंजन लॉन्च किया था. इसके फिर डेवलपमेंटल फ्लाइट थे GSAT-29 and GSAT-19 and GSAT-29 to GTO were launched by LVM Mark 3 in their developmental flight. अब देखो समझो, what are developmental flights? Developmental flights, first of all, what are experimental flights? Experimental flights में ना अभी आपका वो बन ही रहा है, रॉकेट बन रहा है, आप छोटे छोटे कंपोनेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ LVM-3 और GSLV Mark 3 was way back in 2014, जब आपने पहला इंजन ही टेस्ट किया. सेकेंड एंड थर्ड फ्लाइट दे वर बेसिकली डेवलपमेंटल फ्लाइट. डेवलपमेंटल फ्लाइट में आपका इंजन बन गया है, बट स्टिल यू हैव नॉट सेट कि अब वो पूरे मिशन मोड पे जा सकता है. यू आर स्टिल टेस्टिंग इट, बट व्हाइल द टेस्ट इज हैपनिंग यू आर ऑल्सो लॉन्चिंग सैटेलाइट्स. तो GSLV Mark 3 D1 एंड GSLV Mark 3 D2, ये दिख रहा है आपको D1 and D2. These were developmental flights, but these were used to launch GSAT-19 and GSAT-29. GSAT-19 and GSAT-29 were heavier than 2500 kg and thus could not be launched by GSLV Mark 2, and GSLV Mark 3 was used for launching it. यहां से शुरू होता है GSLV Mark 3 M1 या LVM-3 M1, LVM-3 M2, LVM-3 M3, LVM-3 M4, उनके प्रॉपर कमर्शियल मिशंस.
प्रॉपर लॉन्च. ओके, तो फर्स्ट GSLV Mark 3 M1 चंद्रयान 2 2019 में, GSLV Mark 3 M2 OneWeb India 1 मिशन. अभी समझाते हैं इसे. GSLV Mark 3 M2 M3 M1 क्या हुआ देखो, प्लीज नोट LVM 3 का मतलब क्या है, GSLV Mark 3. M1 पहला मिशन, M2 दूसरा, M3 तीसरा, M4 चौथा. M1 में गया चंद्रयान, M2 में गया OneWeb वाला प्रोजेक्ट, M3 में भी OneWeb वाला प्रोजेक्ट है, और M4 में चंद्रयान 3.0. तो देखो अपन ने GSLV Mark 3 के सारे लॉन्चेस देख लिए. पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च, फिर D1 एंड D2 जिसमें 19 और 29, GSAT 19 एंड GSAT 29 गए. M1 M2 M3 M4, M1 में चंद्रयान 2, M2 M3 में OneWeb वाला प्रोजेक्ट, और M4 में चंद्रयान 3.0. ओके, तो ये OneWeb थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज ये GSLV Mark 3 का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट था. व्हाट इज दिस OneWeb India 1 मिशन? OneWeb ना, ये एक यूके की कंपनी है. इट इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज, लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स. तो इन LVM 3 M2 लॉन्च व्हीकल Mark 3, GSLV Mark 3 का M2, they launched 36 satellites for OneWeb in low Earth orbit. Now you will say, sir, low Earth orbit? GSLV Mark 3 can go to low Earth orbit. Up to 8,000 to 10,000 kg वो weight low Earth orbit तक लेके जा सकता है. All these 36 satellites together weighed around 5,800 kg. क्या वो 5,800 kg को low Earth orbit में लेके जा सकता है? लेके जा सकता है. तो इनके लिए 36 सैटेलाइट M2 में, इनके लिए 36 सैटेलाइट M3 में किसने लॉन्च किया? GSLV Mark 3 या फिर LVM 3 ने लॉन्च करके दिया. नाउ लुक एट सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस मिशन. फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ GSLV Mark 3 और LVM 3. इससे पहले क्या था? चंद्रयान 1.0. वाज दैट कमर्शियल? नो, वो इंडिया का खुद का था. GSAT 19, GSAT 29 वो इंडिया का खुद का था. तो इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ LVM 3, फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन. इससे पहले एक एक सैटेलाइट ही लॉन्च हुए थे. GSAT 19, GSAT 29, चंद्रयान, यहाँ पे 36 सैटेलाइट लॉन्च हुआ. फर्स्ट लॉन्च ऑफ LVM 3 टू LEO, लो अर्थ ऑर्बिट. LVM 3 had never gone to low earth orbit before. It was always launching things in GTO. First Indian rocket with 6 ton payload. पहली बार कोई इंडियन रॉकेट है जो 6000 kg का पेलोड लेके गया. इससे पहले तो we did not have any rocket which could do that. GSLV Mark 2 could only carry up to 4,000 5,000 kg to low earth orbit. So first time an Indian satellite has carried around 6,000 kg of weight. First NSIL mission with LVM 3. NSIL एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो इसरो के रिसोर्सेज को कमर्शियल यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है. विल स्टडी अबाउट NSIL. So it was first NSIL mission with LVM 3 and it was first OneWeb mission with NSIL या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके अंदर इसरो आता है. ओके, इसी का सेकेंड LVM 3 M3 was launched for OneWeb India 2. OneWeb India 1 पहले हमने देखा. OneWeb India 2 was also similar. It was done in March 2023 इस साल. And last में we have LVM 3 M4 that was Chandrayaan 3.0. Chandrayaan 3.0 अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ बस एक छोटा सा ये क्रायोजेनिक, जिससे हमारा GSLV पूरा खत्म हो जाएगा. क्रायोजेनिक इंजन, India's journey towards cryogenic engine. Okay, there are some doubts. Cryogenic liquid. Cryogenic liquid. Now I think you have understood, Altaf. And there's another student, Divya, is asking, sir, please repeat Earth storable liquid stage. बेटा अर्थ स्टोरेबल नॉर्मल टेम्परेचर पे हम उसे स्टोर कर ले रहे हैं. हमें उसे क्रायोजेनिक स्टेज में ले जाके बहुत ठंडा करके लिक्विड में बनाने की जरूरत नहीं है. अर्थ स्टोरेबल लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहता है. वो फ्यूल जैसे UMDH वो अर्थ स्टोरेबल लिक्विड है. ओके, आई होप इट्स क्लियर बेटा. नाउ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स डेवलपिंग इट्स ओन क्रायोजेनिक इंजन. देखो, सबसे पहले व्हेन GSLV started, it was in GSLV we started using cryogenic engine. In PSLV we were not using cryogenic engine, right? GSLV was the first rocket that we had which had cryogenic engine. PSLV was the first rocket that we had which had liquid stage.
पीएसएलवी से पहले लिक्विड स्टेज नहीं था किसी में, तो पीएसएलवी में हम पहली बार लिक्विड स्टेज लेके आए, जीएसएलवी में हम पहली बार क्रायोजेनिक इंजन लेके आए। बट मेकिंग क्रायोजेनिक इंजन इज डिफिकल्ट। व्हाई इज इट डिफिकल्ट? बिकॉज इतने कम टेम्परेचर पे -250 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज है, उसे एट वेरी हाई टेम्परेचर आपको बर्न करना है, दैट वुड हैव इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज। स्टोरिंग थिंग्स एट दैट टेम्परेचर, releasing it, burning it at very high temperature, it has its own complexities. Initially, for the initial GSLVs, we dependent on Russia. हमने रशिया से वो GSLV लिए, और इनिशियल GSLV मतलब पहला GSLV छोड़ के हम सक्सेसफुल भी थे। उसके बाद रशिया से अपन ने जितने क्रायोजेनिक इंजन लिए थे वो सब खत्म हो गए। आपको पता है हम एक इंजन एक ही बार यूज कर पाते हैं, वी डू नॉट हैव रीयूजेबल इंजन। जो अपना पीएसएलवी का स्टेज 1 इंजन जब वो गिरता है, बिकॉज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड फ्रिक्शन एंड ऑल, इट इज डिस्ट्रॉयड। पीएसएलवी का स्टेज 2 इंजन जब वो गिरता है, इट फॉल्स बैक इन द वाटर बट इट इज डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट इन अ गुड शेप, इट्स नॉट इन अ कंडीशन टू बी यूज्ड अगेन। सेम वाज द केस विद क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, they were used to launch satellites, and then we had taken some engines from Russia, but after that got over, we had to develop our own engines, and it is there that we have faced some problems. So difficulties in developing cryogenic engine, it's more sophisticated, super cooled fuel has to be burned at super extreme temperature, developing material that can withstand high temperature and pressure during combustion is difficult, but it has advantages. हमने बोला specific impulse सबसे अच्छा किसका है? cryogenic engine का है। तो currently we have two types of cryogenic engine. One is CE 7.5 cryogenic engine 7.5 that we are using in GSLV Mark II, and we have cryogenic engine 20 CE20 which is being used in GSLV Mark III. Some upgradation is happening. For example, जो अपना CE20 है which is being used in GSLV Mark III और LVM3, उसका एक hot test conduct हुआ था in November 2022. This successful hot test was at an uprated thrust level of 21.8 tons, so it was able to give higher thrust, and this will enhance LVM3's payload capability by up to 450 kg. So this test has happened recently. Then yeah, this was it in general about ये। एक इसके बारे में एक और important चीज है, a 3D printed LOX and LS2 turbine exhaust casings were also inducted in the engine for the first time. तो 3D printing के बारे में हम पढ़ेंगे, but 3D printed turbine exhaust casings etc. were used while making this test happen. That happened in November 2022. Okay, so this was about the PSLV and GSLV. अब एक प्राइमरी रॉकेट बचता है, साउंडिंग रॉकेट, बिफोर अदर काइंड्स ऑफ एडवांसमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन, बिफोर वी स्पीक अबाउट दोस। ओके, अब ब्रेक लेते हैं। पक्का खुश हो? चलो, कितने टाइम का ब्रेक चाहिए? हाफ एन आवर। क्या करोगे हाफ एन आवर में? घर जाके रोटी बना के खा के, चाय बनाने में टाइम लगा देता है। चलो फिर हाफ एन आवर, इट्स 5:16 राइट नाउ, 5:36 पे हम मिलेंगे। 5:40, चलो 5:40 पे विल मीट, एंड देन विल स्टडी टिल 8:40 कम से कम, बिफोर द नेक्स्ट ब्रेक। अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्राजीन, हाँ वो लिक्विड नहीं, इसमें नहीं, लिक्विड फ्यूल सेकेंड स्टेज में। नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को पता रहे ना।
करें, शुरू करें। So I think we had completed everything till GSLV. Now we have to study sounding rockets. साउंडिंग रॉकेट्स का ना फंडा समझो पहले। देखो PSLV, GSLV M2, GSLV M3, they were all used for launching satellites to low Earth orbit or geostationary orbit, geostationary transfer orbit, and so on. This is in the case with sounding rockets. Sounding rockets are used for experimental purposes. For example, let's say आप PSLV का फर्स्ट स्टेज इंजन कुछ नया डेवलप कर रहे हो, तो to test that you will not use the entire PSLV rocket, right? When new engine is being developed, so you will use sounding rocket, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे PSLV का इंजन रहेगा. It will take it to the, let's say PSLV engine is supposed to go to 100 kilometers. First engine is supposed to go to 100 kilometers. It will take it to 100 kilometers तक का height, then it will fall back, and everything that PSLV is supposed to do in the first stage would be done. So sounding rockets are used for these purposes. Then because it's going up to a height of, let's say 50 kilometers, 60 kilometers, 80 kilometers, 100 kilometers, so upper atmospheric studies can also be done. Sometimes some images from the top can also be taken. This is the purpose of sounding rockets. So generally when any country starts its space program, it starts with sounding rockets, because sounding rockets are a prerequisite or preliminary requirement before full-fledged rockets are launched for launching satellites. ओके, तो मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ ये रॉकेट बस आवाज करते हैं, काम नहीं करते. रॉकेट का काम है सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ना, दे डोंट डू दैट. बट ये सिर्फ आवाज नहीं कर रहे, दे आर हेल्पिंग अस इन एक्सपेरिमेंट, दे आर हेल्पिंग अस इन अपर एटमॉस्फेरिक स्टडीज. एंड इंडिया में साउंडिंग रॉकेट सीरीज, द most popular one is Rohini series. Rohini series of rockets are the sounding rocket series. Okay, so you would see probing the upper atmospheric region. That is one thing that they do, and they do space research. India का जो पहला rocket that was launched was sounding rocket, which was launched in 1963. Then these are the rockets that we have: Rohini 200, Rohini 300 Mark II, Rohini 560 Mark III. You look at the payload, it can carry a payload of 10 kg, 60 kg, up to 100 kg, up to a height of 80, 160 and 470 kilometers. Purpose क्या है? Meteorology, astronomy and so on. Now एक example आप देखिए sounding rocket का, वो ये है. ISRO's RS-200 sounding rocket records 200 consecutive successful flight. So in November 2022, this Rohini series of rocket RS-200 had completed its 200th flight, indicating that it has done around 200 experiments. Then another experiment was this air breathing propulsion experiment that happened in August 2016. Now what is this air breathing propulsion experiment? Now this is an experiment, again हम कोई नया इंजन बनाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स अगर टेस्ट करने हैं, it will be tested using these sounding rockets. So air breathing propulsion experiment was one such experiment. Now what is this? समझते हैं. देखो, right now what happens is when we are launching a rocket, PSLV launch कर रहे हैं, तो PSLV में the first stage पे what is the fuel? Solid fuel, STBP, hydroxyl terminated polybutadiene. This is the fuel in the first stage. This fuel actually also goes with its oxidizer. Oxidizer मतलब ऑक्सीजन जो इसे चाहिए. ऐसे ही लिक्विड फ्यूल भी UDMH, unsymmetric dimethyl hydrazine, it also goes with its oxidizer, right? But in the lower atmosphere we have oxygen in the air. Then why carry oxidizing agent and increase the weight unnecessarily? Why carry the oxidizing agent, right? For burning the fuel, we could have taken oxygen from the atmosphere. Right now we don't do that. वैसा कर पाने वाली इंजन को हम बोलेंगे एयर ब्रीदिंग इंजन, जो हवा से ब्रीद ले रहा है. हम अपने फ्यूल को कैसे बर्न करते हैं, कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं? बाय टेकिंग ऑक्सीजन, बाय ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन. In the same way, if engines could breathe in oxygen, then their
load that they will carry would be much lesser. So one such air breathing propulsion experiment was done in 2016 using a Rohini series of rocket, where a flame was maintained using the air from the oxygen from atmosphere for a few seconds. It's a difficult thing to achieve because rockets are moving at very high speed. At that high speed, when the air enters, उसमें flame maintain कर पाना would be difficult. जब बहुत तेज पंखा चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप गैस स्टोव चला देते हो तो बुझने वाला सीन होता है, वहां पे that's going at a very high speed. So that's why achieving it is difficult, but that's a possibility for future. So can you understand what are the kind of experiments? What are the kind of experiments that Rohini series of rockets could do? Those are basically sounding rockets which will do these experiments. अब हम real PSLV में ये नहीं बोलेंगे PSLV. We are not giving you any oxidizer this time. You take it from the atmosphere. हम जब ensure कर लेंगे कि yes PSLV can function like that, the lower engine can function like that, then we'll do this. तो वो ensure कैसे होगा? Experiment से होगा. वो experiments किस पे होगा? Sounding rockets पे होगा. That is the purpose of sounding rockets, Rohini series of sounding rockets. Do we have complete clarity here? Okay. Now there are some new engines which are being developed which remain in news. आपको समझ में आया? There are some new engines which are being developed, जैसे new generation launch vehicles. PSLV ऐसा बोला जा रहा है कि PSLV अब next generation में replace होगा जिस vehicle से, that will be this new next generation launch vehicle. ISRO is working on it. So it will be you will see in the NGLV, ISRO is understood to be looking at cost efficient 3-stage orbit reusable heavy lift vehicle with a payload capacity of 10 tons to GTO. That is, अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, but NGLV next gen launch vehicle is something that is being envisaged, जो कि GTO में up to 10,000 kg वेट लेके जा पाएगा. तो फ्यूचर में PSLV, GSLV सबका रोल इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स कर पाएंगे. नाउ it will be featuring semi-cryogenic propulsion. We have already studied what cryogenic propulsion is. Cryogenic engine जहाँ use हो रहा है, that is cryogenic propulsion, and we have studied non-cryogenic propulsion, liquid solid वाला. But what is this semi-cryogenic? इसे भी समझते हैं अभी. Then let's come to semi-cryogenic propulsion system or semi-cryogenic engine. It's under development, but let's get a broad idea about what this semi-cryogenic engine is. देखो, in cryogenic engine we have both fuel as well as oxygen. We had to keep both of them at very low temperature for them to remain liquid. We had to keep both of them at very low temperature for them to remain liquid. In semi-cryogenic engine, instead of hydrogen, we use kerosene. Kerosene, मिट्टी का तेल, we use that. But kerosene का एक refined version which ISRO has developed, that we call ISRO scene. Now ISRO scene can be liquid at normal temperature, but here oxygen still has to be kept at cryogenic system. So this is semi-cryogenic engine. An engine which will be using this kind of fuel would be semi-cryogenic engine. Are we understanding this? Now, in fact, ये तो अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, but ना एक next table है that will give us a better picture. Comparison of cryogenic and semi-cryogenic engine. Cryogenic engine में liquid hydrogen and liquid oxygen is being used as fuel. In semi-cryogenic engine, ISRO and liquid oxygen. Cryogenic engine में liquid hydrogen is required to be stored at temperature of -253 degrees Celsius. Kerosene can be stored at normal temperature in case of semi-cryogenic engine. Oxygen still has to be kept at very low temperature. Weight, liquid hydrogen and liquid oxygen is heavier. Then liquid hydrogen is heavier than the kerosene, and thus थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. Specific impulse किसका ज़्यादा है? Cryogenic का. So even now the new engines, new rockets which are being planned, उसमें last stage क्या रहेगा? Cryogenic रहेगा. But cryogenic और semi cryogenic में thrust better किसका है? Semi cryogenic. And therefore जो second stage है, जहाँ liquid stage हम use कर रहे हैं second level पे, that second level would be replaced by semi cryogenic. So first stage में still remain solid. Second stage जो liquid वाला है, that may get replaced by
सेमी क्रायोजेनिक, एंड थर्ड स्टेज वुड स्टिल रिमेन क्रायोजेनिक. तो स्टेज देखो, बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पेसिफिक इम्पल्स it would be used in upper stage, whereas semi-cryogenic engine has been preferred in lower stages when high thrust is must have over specific impulse. Are we getting it? तो जो हम नए व्हीकल्स बना रहे हैं, जैसे GSLV का नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, फॉर दैट वी आर डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन. गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बहुत पहले इनिशिएट कर दिया है, एंड वेरी फ्यू कंट्रीज हैव सेमी क्रायोजेनिक इंजन, लाइक USSR and USA have semi cryogenic engine. If India is able to develop it, India would be among the first few countries in the world to have semi cryogenic engine. So देखो, we have studied the existing rockets, but we are also trying to study other future prospects in rocket development. Okay, then एक और टॉपिक जो आता है वो है reusable rocket और reusable rocket वाला. Now what is reusable rocket? देखो, अभी what is happening, PSLV we know the bigger engine, then the smaller engine, and then further smaller engine, and so on. This bigger engine goes to a particular height, then falls back on Earth, but while falling back on Earth, it is destroyed. It is damaged so much because of friction and all that it cannot be reused. It can't be reused. This situation. Now consider a scenario. Suppose you had to go from Delhi to Noida. You were using a car, but that car can be used only once. Would the cost of travel be very high? If the car could be used only once, the cost of travel would be very high. It's because the car can be used again and again. It can come back, it can again take passenger, it can come back, it can again take passenger, though you do not have to pay for the entire car for your one trip. For your one trip, you pay 400 rupees, 500 rupees, or whatever. You don't have to pay for the entire car. But in case of when we are sending satellite from Delhi to Noida, from Earth to space, we are paying for the entire rocket, and thus the cost is very high. And therefore, all over the world, there is focus on developing reusable launch vehicle. Reusable मतलब इंजन गिरेगा, इंजन को हम रिकवर करेंगे, एंड इतना डैमेज नहीं होना चाहिए इंजन कि इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. तो सेम इंजन कुड बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. दैट इज द आइडिया बिहाइंड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल. आर वी ऑल गेटिंग इट? आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? तो आर देयर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड? तो कंप्लीटली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डोंट एग्जिस्ट. Okay, let's divide it in two parts. First, suborbital launch vehicles reusable exist. Suborbital launch vehicle मतलब वो ऑर्बिट में नहीं जा रहे हैं, वो कुछ हाइट तक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे reusable launch vehicles exist करते हैं. Fine, but we are talking about rockets which can take satellite to an orbit. ऐसे reusable launch vehicle 100% exist नहीं करते. तो फॉर एग्जाम्पल SpaceX has a vehicle जिसका फर्स्ट स्टेज reusable है पर सेकेंड स्टेज एक्सपेंडेबल है, मतलब वो अभी भी reusable नहीं हो पाता है. So till now several fully reusable suborbital system and partially reusable orbital system have been flown. So suborbital system fully reusable है, but orbital system are only partially reusable. SpaceX Falcon 9 rocket has a reusable first stage and an expendable second stage. अपन ने Falcon 9 के बारे में भी देखा था, one of the largest rockets in the world. It has reusable first stage and expendable second stage. Earlier there were plans कि Falcon 9 would be made completely reusable. That is, उसका second stage भी reusable बनाएंगे. But now they have given up on that because they are working on Starship, which will be fully reusable launch vehicle. So they are not now no more working on making Falcon 9 का second stage reusable. They are trying to make the next vehicle that they are making, Starship, as completely reusable. Then if ISRO is able to achieve reusability, let's say PSLV का, उसका cost 70 to 80% कम हो जाएगा. Now notice something, because our cars are reusable, our cost is like 1% of the car's cost. कार का प्राइस 5 लाख रुपए हो सकता है, पर हमारे ट्रैवल का कॉस्ट 500 रुपए होता है. कार्स प्राइस में भी 5 lakh rupees, but our travel cost is only 500 rupees. But in so our cost is 1%, let's say. But we are saying कि ISRO का cost will not reduce by 99%. It will only reduce by 70 to 80%. Why are we saying that?
because cars can be used hundreds of times, but that is in the case with engines. Engine reusable भी होगा तो इसे 3-4-5 बार reuse हो जाएगा, not more than that, because it faces extreme damages while passing the atmosphere, while facing the friction, but still the cost reducing by 70 to 80% is huge reduction, right? So what has ISRO done to develop reusable launch vehicle? अभी तक ना बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है. एक RLB टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट हुआ था, where what we did, first stage engine was sent to orbit, not orbit, to the height जिस पे हो जाता है 70-80 kilometers. From there it was made to fall back and we were able to recover it. हम उसे पानी से रिकवर करके ले आए. वो reusable है नहीं, but at least recovery has started. We were able to recover the vehicle. That is the first stage in reusability. उसके बाद we will further work on it to strengthen it, to make it strong, so that next time when it falls and when we recover it, the vehicle is strong enough so that it can be safe enough, so that it can be used again. SSLV. SSLV actually has already been developed. SSLV का फंडा समझने के लिए let us go back to PSLV. PSLV का weakest version क्या है? core alone. PSLV का जो सबसे कम स्ट्रेंथ वाला वर्जन है, that is PSLV core alone. PSLV core alone कितना पेलोड लेके जा सकता है? 1100 kg. Right? PSLV core alone can carry 1100 kg. PSLV XL can carry 1860 kg. But PSLV core alone can only carry 1100 kg. Now think of a scenario. Singapore comes to India. Please launch my satellite, which is weighing 200 kg. India, like bus conductors would tell them, अभी बहुत सीट खाली है, बैठो. आपका बस वाला बस तब तक नहीं चलाता ना जब तक उसकी सीट्स नहीं भर जाती, sufficient amount of passenger नहीं होते. Singapore would say, no, I'm in hurry. If you won't do it, I'll go to some other agency and would get it launched. India would say, okay, fine, because हमारे तो पूरी बस भरनी नहीं तो लॉस हो जाएगा. Because our lowest capacity is of 1100 kg. So in a way समझो कि we have a bus, we want to make a car which can carry 1 or 2 passengers. We'll need to fill the bus to make it profitable. But if we had a taxi, if we had a car, if we had a motorbike, जो पीछे बिठा के सस्ते में पहुंचा दिया किसी को, then services would have been faster. We would have been able to cater to more passengers, more people. So idea behind SSLV was this: in future, lots of small vehicles are going to be launched. Its market is going to be huge. Why not develop capacities? Why not develop capabilities? So that हम छोटे satellites को भी कम time में fast तरीके से launch कर पाए. And for that purpose, SSLV was developed. Small satellite launch vehicle was developed. Now, SSLV does not have only this advantage that it will be able to carry smaller satellites quickly. It has other advantages too. For example, PSLV को assemble करने में कई months लगते हैं. एक PSLV को assemble करने में कई बार 2-2 महीने लग जाते हैं assemble करने में. नए PSLV को बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर उसमें लगते हैं असेंबली में. That diverts resources of ISRO for assembly work. SSLV has been designed in such a manner that it can be assembled very quickly and not a lot of human resource would be required. So it can have very fast turnaround time, it can provide very fast services, plus it can improve the overall service quality. It can reduce the cost of launch also, because instead of sending a bus for 2 people, you are sending a car for 2 people. For this purpose, SSLV has been developed. Now, SSLV is a 3-stage rocket, but all 3 are solid stage. I will say, sir, if all 3 is solid, then last stage में तो हमें liquid चाहिए ना control करने के लिए. So they have a liquid trimming engine also. पर जो primary stages हैं engine के rocket के,
They are all three solid stages. So it is the smallest vehicle at 110 ton mass at ISRO. 110 ton mass मतलब 1 लाख किलो. What was the weight of PSLV? 3.2 lakh kg. So it is much smaller. It has low turnaround time. It will take only 72 hours to assemble, unlike PSLV, which sometimes took 70 days to assemble. Low human resource requirement. Only 6 people will be required to do assembly, unlike PSLV, which needed 60 people to do the assembly. It's cost effective. The overall cost of building SSLV will only be 30 crores. Capability, it can carry a payload of 500 kg to 500 km planar orbit or 300 kg to SSPO. It uses 3 solid fuel stages. Note it carefully. इसके तीनों स्टेज क्या हैं? Solid fuel है, but it also has a liquid fuel based velocity trimming module in the end for launching purposes. Now it is ideal for on demand quick turnaround launch of small satellites, and major technologies that has been developed as part of SSLV are flexible nozzle control, electromechanical actuators and so on. Need because demand for small satellite launches are increasing. इसका पहला developmental flight 2022 में हुआ था, August 2022 में, but it wasn't successful. Do you remember for LBM-3, first developmental flight launched GSAT-19, second developmental flight launched GSAT-29. उसके बाद M1, M2, M3, M4 has happened. M1 launched Chandrayaan 2.0, M2 was OneWeb 1, M3 was OneWeb का 2, M4 was Chandrayaan 3.0. In the same way, इसका पहला developmental flight was launched in SSLV का पहला developmental flight was launched in 2022, and this developmental flight faced challenge in the end. When it came to the stage when the satellite had to be set in orbit, that is in the last stage when satellite had to be set in orbit, there was a glitch which resulted in satellite being lost. So SSLV का D1 faced challenges. It was not successful, or we can say it was partially successful, because it was able to carry satellite to that place, but only at the time of launching the satellite problem occurred. Then इसका second developmental flight happened just 10 months back in February 2023, and it was successful. You would see it intended to inject Earth Observation Satellite 07. अब हम ना पहले हमारे सैटेलाइट के कंफ्यूजिंग नाम हुआ करते थे, स्कैटसैट, कार्टोसैट, ऐसे अलग अलग नाम हुआ करते थे, बट अब हम बोल रहे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. दीज आर द नेम्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट इंडिया इज लॉन्चिंग. So Earth Observation Satellite 7, JNS-1 and AZADI-SAT-2 satellites were launched into 450 km orbit. EOS-07 was of 156 kg, JNS was of 10 kg, AZADI-SAT was a very small satellite which was combined effort of 750 girl students across India guided by Space Kids India, Chennai. तो ये factual चीजें कुछ हैं, but we already have a developmental flight of SSLV which was successful. हमें ये पता होना चाहिए. Okay, do we have clarity here? So these are work on various rockets of ISRO. PSLV, GSLV Mark II, GSLV Mark III, next gen launch vehicle, sounding rocket, semi-cryogenic engine, SSLV which has already been developed. इसके दो developmental flights जा चुके. One was a failure, one was a partial failure, second was successful. These are various rockets. I hope we are all able to make a picture in our head about how rockets function, the different types of rockets that we have, their functions, their role in the overall ISRO's work. We should have clarity over this. Now let's go to ISRO satellite. अच्छा, एक confusion हो गया था while calculating. मेरा भी CSAT weak हो गया लग रहा है. While calculating 5:16 पे हमने छोड़ा था. I should have written 546 और 550, बट मैंने यहाँ गलती से 540 लिख दिया था और किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं. फिर when I started having my fruits, I realized इतनी जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया. हाफ एन आवर तो मिले नहीं मुझे. Then I noticed कि ओके गलती से गलत हो गया. चलिए, let's come back to ISRO satellites now. We have understood rockets. Rockets are the vehicles which will take satellite to the orbit. Now we have classified satellites on the basis of their function. Broadly हम satellites को अलग अलग functions के basis, जैसे कुछ satellites हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होंगे, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होंगे. कुछ satellites हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे.
कुछ सैटेलाइट्स हैं जो सैट-नाव के पर्पस के लिए, सैटेलाइट नेविगेशन, जैसे IRNSS नाविक। कुछ सैटेलाइट्स हैं जो सन को स्टडी करने के लिए यूज होंगे, आदित्य L1। So we have categorized our satellites on the basis of their functions. Fine, but सबसे पहले what is a satellite? A satellite is a smaller space-based object moving in loop or in an orbit around a larger object. In simple terms, this is satellite. आप एक छोटा सा पत्थर ले जाके अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करा दो, that will also be considered अर्थ satellite. सैटेलाइट आपका वो प्यार है जो आपके चारों तरफ घूमता रहता है पर मरने से पहले मिल नहीं पाता। चांद है जैसे, चक्कर लगा रहा है, अब कितने भी चक्कर लगा ले मिल नहीं पाएगा। अर्थ है, सूरज के चक्कर लग रहे सालों से चल रहा है, बट दूरियां उतनी की उतनी है, राइट? सैटेलाइट वो है। अब कुछ सैटेलाइट नेचुरल होते हैं, जैसे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट आर्टिफिशियल होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01, 02, 03, 04, GSAT सीरीज, INSAT सीरीज, these are all communication satellites. Then Earth observation satellite 01, 2, 3, 4 and so on, SCAT-SAT, CARTOSAT, these are all Earth observation satellite. IRNSS 01, 02, 03, these are SAT-NAV वाले satellites, satellite navigation वाले satellites. Then we have Aditya L1. Aditya L1 will basically be revolving around sun and would be, so it will be kind of satellite to sun and it will be observing or studying the sun. That's also satellite, it's revolving around sun. Okay, let's start with communication satellites. Communication satellites का primary purpose क्या है? Let's understand that. See, this is Earth. This is Earth. Now I'm trying to make a bigger Earth, so I'm only making a small part of it. Now, जो आप Earth को ऐसे देख रहे हो, a tower which is created, let's say a tower which is of 100-meter height, would be very small. जब आपने अर्थ को ही इतना कम स्केल किया तो उस टावर का एक डॉट से भी कम हाइट होगा. यूजिंग दिस टावर यू विल नॉट बी एबल टू सेंड अ सिग्नल हियर. So this tower, because of Earth's curvature, if Earth was plane like this, then a tower of 100 meters here, a tower of 100 meters 200 kilometers away, they could have still communicated. But because of Earth's curvature, these towers, these communication towers cannot directly communicate. इस अर्थ के कर्वेचर को इस अर्थ के कर्वेचर से डील करने के लिए वी हैव सैटेलाइट. दिस टावर विल सेंड सिग्नल टू दिस सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट कैन सेंड सिग्नल टू द रिसीवर. So in a way, communication satellite act as space mirrors. In very simple terms, communication satellites are what? They are space mirrors. आप उसकी तरफ एक सिग्नल भेज रहे हो, वो सिग्नल दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो डायरेक्टली यू कुड नॉट हैव सेंड. Right? It will do a lot of other things also. It will receive the information, it will process the information, it will remove the noises, it will amplify it, then it will send it back. So it will do a lot of other things also. But अगर ये बहुत सारे और भी गड़बड़ियां नहीं होती तो this was basically space mirror. Communication satellite was basically space mirror. And Earth observation satellite are basically space cameras. आप यहाँ पे खड़े खड़े बहुत बड़े रीजन का प्रॉपर पिक्चर नहीं ले सकते, स्पेस से इजीली ले सकते. So communication satellites act as space mirrors and Earth observation satellites act as space cameras. Got it? Clarity है इस पे? A communication satellite is an artificial satellite that is placed in Earth's orbit
for the purpose of sending and receiving communication data between the source and destination. They're basically space mirrors that can help us bounce radio, TV, internet data and other kinds of information from one side of the earth to another side of the earth. It's used to provide data communication and relaying services, televisions, radio, telecommunication, weather, internet, किसी भी तरह का data. It's something it will be able to do this. They're generally placed in geostationary orbit. Do we know the reason? Geostationary orbit में क्यों place करते हैं हम communication satellite को? Because geostationary orbit में satellite would be stationary, would appear to be stationary, so our antenna can point in that direction. There are two types of there can be two types of communication satellite, passive and active. Passive वाला बस mirror की तरह काम करेगा, but active वाला will do a lot of processing also. We can be storing data, can be removing noise and so on. Okay, आप इंडिया के communication satellites की बात करोगे तो हम बोल रहे थे जैसे INSAT series of satellites. The purpose for which GSLV was developed. What was the purpose of GSLV? Launching INSAT series of satellite. So INSAT series of satellite was launched. Is a series of India's communication satellite. In fact, आप देखेंगे this INSAT series was established in 1983 with the launch of INSAT 1B. It initiated a major revolution in India's communication sector and sustained this for some longer period. आप देखोगे currently the system has INSAT system which consists of 20 operational satellites. INSAT 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR, GSAT 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी है, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 17, 6, 8, 29. We already know GSAT 19 and GSAT 29 अपन ने पढ़ा था अभी. LVM 3 was used to launch it. GSAT 11 is the largest of Indian satellites. 5850 kg का है. Communication satellite है, geostationary orbit में होगा. Geostationary orbit में कैसे क्या होगा? 5850 kg. Can we send 5850 kg to geostationary orbit at our own? No. हमारा maximum capacity is 4000 kg. So how do we send 5850 kgs to geostationary transfer orbit? With the help of some other organization. So Ariane 5 rocket was used for this purpose. Then there are some other satellites that you should know about. जैसे GSAT 7A है. It is mostly used for serving Air Force. GSAT 7 है. GSAT 7 was primarily used for Navy. Then GSAT 31 है. These are some other communication satellites. We do not have to go into details of each one of them, but INSAT series, GSAT series, now CMS series, they are in general communication satellite. There can be some INSAT Earth observation satellites also, there can be some GSAT Earth observation satellites also, but they are generally communication satellites. Now, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, because in tomorrow's booklet we will talk about wireless communication. There we'll understand this more, but briefly let me help you understand this. How is this communication taking place? This communication is taking place with the help of electromagnetic waves, right? When we talk about electromagnetic waves, how are the electromagnetic waves को ना सबसे पहले simple तरीके से समझो. What is electromagnetic wave? जैसे light को we call it electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. तो लाइट को अगर आप उसके वेव के कंपोनेंट्स में देखोगे, इट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके परपेंडिकुलर में इट हैज मैग्नेटिक फील्ड. इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर में इट हैज मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. देयर आर अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are not of this frequency and we cannot see it, our eyes cannot observe it. For example, infrared waves. Infrared waves are also electromagnetic waves, but we cannot see them. Infrared waves से भी कम frequency के होते हैं microwaves और radio waves, but we cannot see them. Infrared के ऊपर आता है visible. We can see visible light. We can observe visible light. We are sensitive to, our retinas are sensitive to visible light. उसके ऊपर होते हैं अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज. दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बट एज यू गो अप, जैसे लेट्स से दिस इज द स्पेक्ट्रम, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ. वेवलेंथ इधर बढ़ता है, तो ज्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पे आएंगे. रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, छोटा सा पोर्शन होगा विजिबल का, विजिबल लाइट,
ultraviolet, X-rays, gamma rays. There may be more classification based on frequencies of gamma rays. Gamma rays may be further classified into other things, but this is our electromagnetic spectrum. और spectrum में this is something that is visible to us. Visible light is the only portion that is visible to us. Rest anything is not visible. Are we understanding? But जब हम communication के लिए कोई चीज यूज करते हैं, we generally don't use ultraviolet, X-rays और gamma rays. Why? Because they are of high frequency. They are of high frequency. They'll have a lot of energy. This lot of energy may be harmful for us, may be dangerous for us. For example, let's say हमारा phone communication was using ultraviolet rays और X-rays. X-rays बहुत सारा डेटा भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, तो टावर से X-rays आ रहे हैं, हमारे फोन उससे कम्युनिकेट कर रहा है ना। इधर से आप बात कर रहे हो, हाय बेबी, उधर से बेबी बोल रही है ज्यादा बात मत करो कैंसर हो जाएगा। X-rays dangerous, harmful. Ultraviolet rays higher energy, gamma rays harmful. So communication happens with visible light. जैसे आपके घर में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आ रहे हैं, दे आर यूजिंग विजिबल लाइट। हमारे ऑफिस में जो इंटरनेट आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, दे आर यूजिंग लेजर और विजिबल लाइट। कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू इंफ्रारेड। आपने अभी आप रिमोट से खेल रहे होते हैं, आप लोग रिमोट के आगे एक एलईडी लगा होता है, दैट्स नॉट एक्चुअली एलईडी, दैट इज IRED, इंफ्रारेड इमिटिंग डिवाइस। कभी उससे लाइट निकलते हुए देखी है? उससे इंफ्रारेड निकलता है। इंफ्रारेड हम देख नहीं सकते, लाइट हम देख सकते हैं, जो लाइट वाली एलईडीज होंगी वो हम देख सकेंगे, बट इंफ्रारेड वी कैन नॉट सी। तो आपके जो रिमोट होते हैं उसके आगे IRED लगा रहता है। व्हेन यू प्रेस द रिमोट, IRED इज रिलीज्ड, it sends signal to the TV and the TV changes channel or increases volume and so on. Those are using for wireless communication, that is infrared communication. Then microwaves and radio waves. आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, और जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन FM AM जो कम्युनिकेशन ये वाला मैकेनिज्म है उसके लिए अपन रेडियो वेव्स यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए विच स्पेक्ट्रम आर वी यूजिंग? Microwaves. Now these microwaves can also be subdivided into different frequency ranges. जैसे विजिबल लाइट हम डिवाइड करते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, रेड कम फ्रीक्वेंसी वाला है। We divide visual light into various frequencies. In the same way, microwaves can also be divided into various frequencies. जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगा उसके साथ काम करना आसान होगा, जो हायर फ्रीक्वेंसी होगा उसके साथ काम करना मुश्किल होगा। बट द हायर फ्रीक्वेंसी वुड बी एबल टू सेंड मोर डेटा, बट इट विल रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स। इट विल रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस यूजिंग माइक्रोवेव्स, एंड माइक्रोवेव्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सबस्पेक्ट्रास. They are called C band, L band, K band, KA band, KU band. तो आप यहाँ देखोगे जैसे जो अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम अभी है, इनसैट सिस्टम विथ मोर देन 200 ट्रांसपोंडर्स इन C, extended C, KU bands. What are these C band, extended C band, KU band? These are various subspectrums of microwaves. इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला ना, कल अपन स्पेस पढ़ते टाइम ही वायरलेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा समझेंगे। अपन ज्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड आईटी में जाके, जहां पे विल स्टडी अबाउट हाउ ब्लूटूथ फंक्शंस, हाउ NFC फंक्शंस, वो सब वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला सारा एस्पेक्ट अपन कल पढ़ेंगे। आपको पता है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड? सन से बहुत लाइट हमारी तरफ आ रही है। लाइट इज व्हाट? लाइट आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? वहां से इंफ्रारेड भी आ रहा है, वहां से माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स भी आ रहे हैं, वहां से अल्ट्रावायलेट भी आ रहा है, वहां से एक्सरे और गामा रेज भी आ रहे हैं। तो ये सन में बन कैसे रहे हैं? हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय
वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप एक इलेक्ट्रॉन को लेके वाइब्रेट करोगे, ऑसिलेट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके इंपैक्ट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन हाउ फास्ट यू आर वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग, हाउ फास्ट यू आर ऑसिलेटिंग, it will decide the frequency of electromagnetic waves। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से, एंड उसका फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट हो रहे हो तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग वेव्स व्हिच आर वेरी हाई इन एनर्जी एंड मे कॉज प्रॉब्लम, दिस इज गामा रेज, एक्स-रेज, it can cause problem for other living beings, but that isn't the case with lower frequency। बट अगेन कमिंग बैक टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कैसे हो रहा है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोस्टली माइक्रोवेव्स में हो रहा है, एंड दोज माइक्रोवेव्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड, 𝐭𝐿 बैंड, 𝐾A बैंड, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। विल टुमारो इन टुमारोज क्लास विल डिस्कस दैट थॉरली इन मोर डिटेल। बट इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स में या इनसैट का जो फैमिली है, इसमें इनसैट, जीएस, जीसैट, सीएमएस, ऑल ऑफ देम कम। There these different bands are used for communication। Okay, some recent example of communication satellites। अब देखिए CMS-01, now we have moved to standard definition communication satellite 01। it was India's 42nd communication satellite and it provides services in extended C band। GSAT-7A, Angry Bird is first satellite built primarily for Air Force। 70% of its capacity would be used by Air Force, remaining by Navy, and other armed forces, etc। GSAT-11, our biggest satellite, our biggest communication satellite। You see, GSAT-11 was launched using Ariane 5 rocket। GSAT-11 के आप देखोगे, it's a high throughput communication satellite। अभी let me explain you what high throughput communication satellite is, but before that, see, GSAT has 40 transponders, 32 in 𝐭𝐿 band and 8 in 𝐾A band, more advanced band, more higher frequency band। It will deliver improved services in 16 Gbps over the Indian region and in the nearby island। It has a lifespan of 15 years। It has been launched in 2018, so 2033 तक तो GSAT-11 would be serving as a communication satellite for us। Are we getting this? तो इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे फंक्शन करता है क्या। Some important communication satellites you should be aware of। इंडिया का लार्जेस्ट पता है, आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशली जो यूज हो रहा है वो पता है। सीएमएस नाम आपको पता होना चाहिए। सीएमएस जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए नाम आर बीइंग यूज्ड। ओके, नाउ हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स। व्हाट आर हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स? देखो, हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नो, these are newer, more advanced versions of communication satellites, जिसका बैंडविड्थ 1 Gbps से ज्यादा है। पुराने जो सैटेलाइट्स थे, their bandwidth was not more than 1 Gbps। Advanced satellites with better bands being used can transmit much more data than 1 Gbps। Those satellites are called high throughput satellites। जैसे GSAT-11 is one of the high throughput satellites that India has। In fact, GSAT-19 and GSAT-29 were also high throughput satellites। Are we getting this? Are we understanding? GSAT-11 communication satellite। अब आते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कोई भी अपना नहीं, इनमें से जो अपन ने पढ़े हैं उनमें से नहीं है कोई, हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो सैटेलाइट टेलीफोनी के लिए यूज होते हैं, वो लोअर ऑर्बिट में होते हैं, बट ये नहीं है। GSAT-11 नहीं है, GSAT-19, 29 ये सब नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, व्हाट आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? देखो, जैसे हमने बोला, द वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्ट एज स्पेस मिरर, सिग्नल यहां से जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक्ट एज स्पेस कैमरा। एंड दैट कैमरा डजंट हैव टू बी विजिबल लाइट कैमरा। विजिबल लाइट वाला तो वो वाला है जो हमें दिख जाता है। दैट कैमरा कैन बी रेडियो वेव
अब कैमरा क्या करता है, सिंपल भाषा में कैमरा करता क्या है? कैमरा देखो, जो आप जैसे व्हेन इफ आई टेक अ पिक्चर लाइक दिस, मनीष इज सिटिंग हियर, कैमरा विल बेसिकली इफ आई एम पॉइंटिंग लाइक दिस, it will receive visible light that is reflected from Manish. It will receive that, it will capture that. Okay, forget cameras for some time. Why am I able to see you? अमन वहां बैठा है, मैं अमन को क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि कुछ लाइट है जो अमन पे पड़ रहा है, and then it's coming to my eyes and my eyes are processing that light, and that's why I'm able to see Aman there. If there was no light in this room, it would not have been possible for me to see Aman. राइट, फिर मैं दूसरे सेंसेस यूज करता, मैं अमन की आवाज सुनता, मैं अमन को स्मेल करता, नहीं करता, बट दूसरे सेंसेस यूज करता, राइट. बट व्हाई एम आई एबल टू सी अमन? बिकॉज कुछ लाइट इस पे पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है. व्हाई डोंट वी सी ब्लैक होल? कल हम ब्लैक होल, स्टार, ये सब पढ़ेंगे. व्हाई वी डोंट सी ब्लैक होल? वी कैनॉट सी ब्लैक होल. वी कैनॉट सी ब्लैक होल बिकॉज ब्लैक होल से कोई लाइट आ ही नहीं सकता है, राइट. तो कैमरे में हम विजिबल लाइट कैप्चर कर ले रहे हैं, उसको फिर प्रोसेस कर रहे हैं बाद में. विजिबल लाइट इज ओनली वन फॉर्म ऑफ लाइट. ऐसा भी हो सकता है ना, अपन रेडियो वेव्स रिलीज करें, वो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, उससे वी आर एबल टू टेक पिक्चर्स. द वे एवरीथिंग अबाउट, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स सा पर्सन है, अजीब से बाल हैं, कैसे हम अब सिर्फ उसको नहीं, अपने आप को सोचो ना, अपन वी हैव बीन सीइंग ईच अदर, so it appears that we are so normal, but देखो अपना स्ट्रक्चर गड्ढा हो रखा है, उसके बीच में बॉल्स हैं, है ना, ऐसा मुंह खुलता है, वो दांत है ऐसे वाइट से. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट वी आर एबल टू ऑब्जर्व इट, वी आर एबल टू इन आवर हेड, वी आर एबल टू क्रिएट अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस, वी आर एबल टू डू दैट. ये विजिबल लाइट से कर रहे हैं, अपन रेडियो वेव से भी कर सकते थे, बाकी चीजों से भी कर सकते थे, बाकी किसी वेव से भी कर सकते थे. तो when it is acting as space camera, what is acting as space camera? Earth observation satellite. It's not only in the visible light, it can be using radio waves also, it can be using microwaves also, and using that it can collect pictures. It can use infrared also, infrared भी use कर सकता है, and using that it will be taking pictures of Earth, making videos of Earth. Videos क्या है? Pictures at high frame rate. Videos, what are videos? Videos are pictures at high frame rate, right? So that is Earth observation satellite. So इंडिया में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्टार्टेड विद IRS 1A in 1988. उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. अब जो जेनरिक नाम यूज हो रहे हैं वो ये है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, 02, 06 एंड सो ऑन. जो पुराने नाम यूज होते थे, रिसोर्स सैट, रिसोर्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड. कार्टोसैट, मैप मेकिंग के लिए. कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट वर यूज्ड फॉर मैप मेकिंग. कार्टोसैट 3, दोस वर लॉन्च्ड इन 2019. रीसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट. रडार में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होंगे. रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स आर देयर. देन ओशन सैट, Megatropics was an Earth observation satellite which was launched in collaboration between India and France. Then HISIS, hyperspectral imaging satellite. जैसे अपन ने अभी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट पढ़ा था, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट कैन सेंड मोर डेटा, हाई थ्रूपुट, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा था. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. अब देखो ऐसे समझते हैं, when cameras take very good quality of pictures, when cameras take very good quality, तो एकदम जो बेकार कैमरा होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर लेगा. इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स. improved quality, it can have better differentiation, it can give you more clearer picture. और भी अच्छी क्वालिटी का कैमरा वो रेड के भी अलग अलग शेड्स को कैप्चर कर सकता है, बिकॉज इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दो स्पेक्ट्रम्स ऑल्सो. तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, नेम इटसेल्फ विल टेल यू कि वो इट कैन गिव यू मच क्लियरर पिक्चर, मच क्लियरर इमेजेस व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस
previous Earth observation satellites. So जैसे in communication satellites, the new generation of satellites are being called high throughput satellites because their data bandwidth is much higher. In the same way, in Earth observation satellites, the new satellites are called hyperspectral imaging satellites. Are we getting it? So these are what? These are Earth observation satellites. I'm just giving you these names so that आप जब ये टर्म सुनो ना एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट सीरीज में, यू शुड नॉट बी कंप्लीटली ब्लैंक. अबे क्या पूछ लिया, थोड़ा अरे पढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, हो जाएगा. मेघ ट्रॉपिक्स दिख रहा है कि बादलों को स्टडी करने के लिए, है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन है. रिसोर्स सैट, फिर रिसोर्सेज देखोगे तो रिमोट सेंसिंग करोगे तभी तो रिसोर्स सैट होगा. ओशन सैट, स्कैट सैट, दीज आर ऑल फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस. और अब तो नाम ही सिंपल वाले रखने शुरू कर दिए फॉर्चुनेटली. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03. लाइफ सिंपल. ओके, नाउ सम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर आल्सो देयर इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जैसे हमने बोला था ना, ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहाँ होते हैं? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में या लो अर्थ ऑर्बिट में. बट सम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. फॉर एग्जांपल EOS 03 could not be put in orbit due to failure of GSLV F10, वो छोड़ देते हैं. But INSAT 3D, INSAT 3D are. INSAT series of satellites are going in geostationary orbit. They are acting as Earth observation also. Kalpana and INSAT 3A. These are some satellites which went there. Okay. Purpose क्या है देखो यार. The data from these satellites are used for several applications including agriculture, water resources, urban planning, rural development, mineral prospecting. Basically जब options में आएंगे देखना ऑल ऑफ द अबव वाला और सोचना कि क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते. ओशन को ऑब्जर्व करना, माइनिंग को समझना, ट्रैफिक को प्लान करना, यू विल सी नहीं, ऑल दीज थिंग्स वुड बी क्रूशियल, वुड बी पॉसिबल, वुड बी डूएबल बाय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. दैट इज द पर्पस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. बट नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ जीपीएस फंक्शन, सैट-नैव सिस्टम कैसे काम करता है एंड द वेरियस सैट-नैव सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, Ashi is asking, sir, what is liquid trimming engine? बेटा SSLV में all the 3 stages were solid engine, है ना, all the 3 stages. तो उसमें ना एक आखिरी में liquid trimming engine डाला गया है जो ना चीजों को कंट्रोल कर पाए. वो इंजन नहीं है, बस एक मॉड्यूल है छोटा सा. सर, what are the benefits of launching satellite in an elliptical orbit? बेटा एलिप्टिकल ऑर्बिट के अपने पर्पस होते हैं. जैसे हमने अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट को बहुत डिटेल में समझा नहीं है, बट एक पर्पस क्या होता है कि when you have to, let's say, ensure that this satellite is mostly pointing at you, so you launch it in such an elliptical orbit कि उसका जो फर्देस्ट वाला पॉइंट है ना वो आपको हमेशा फेस कर रहा है, और वो जब आपके अर्थ के पीछे जा रहा है, जब आपके सामने नहीं है, वो उसका पेरिजी वाला फेज होगा, तो जल्दी से वहां से निकल आएगा. एंड 1 or 2 satellites would be able to give you complete clearer picture. These are certain advantages, but बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है. लेट्स कम टू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. क्या अपन सबने जीपीएस यूज किया है? इज देयर एनीवन जिसने यूज नहीं किया है? मनीष यूज किया है जीपीएस? बताओ क्या होता है, आपका फोन कैसे फंक्शन करता है जीपीएस? हाँ, तो कैसे कैसे क्या क्या करता है? ये नहीं, आपने जीपीएस ऑन कर दिया, फिर क्या होता है? आपका तुच्छ सा फोन सैटेलाइट पे, मतलब 20,000 किलोमीटर दूर कुछ सिग्नल भेज रहा है. वो सुना नहीं, लप्पू सा सचिन, तो तुम्हारा लप्पू सा फोन वहां से फोन पे आएगा. हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सैटेलाइट नेविगेशन में, मतलब मैंने भी जब पढ़ाई नहीं करी थी तो मैं भी ऐसी बातें करता था कि मेरा फोन भेजेगा सिग्नल कहाँ पे? सैटेलाइट को. तो तुम्हारा 10,000 का फोन नहीं है, मतलब मेरे टाइम पे 10,000 का फोन वाज गुड, एक्सीलेंट फोन. आई वेंट टू कॉलेज इन 2008-9. उस टाइम 10,000 का फोन वाज, उस टाइम एंड्रॉइड आए भी नहीं थे, तो वो एन सीरीज नोकिया वाले फोन आते थे वो, तो मेरे लिए 10,000 का फोन इज बिग फोन, वैसा सीन. तो कमिंग बैक टू तुम्हारा टुच्चू सा फोन, वो सिग्नल भेजेगा नहीं, सिर्फ रिसीव करेगा. एक चीज ये समझिए कि इट विल ओनली रिसीव सिग्नल. ओके, तो सैट-नैव करता क्या है? सैट-नैव आपकी लोकेशन बताता है, आपकी स्पीड बता सकता है,
आपको टाइम बताने में भी हेल्प कर सकता है। एग्जैक्ट टाइम क्या है? इट कैन गिव यू वेरी एक्यूरेट टाइमिंग विच योर वॉच विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज सैटनैव सिस्टम में जो सैटेलाइट में जो क्लॉक्स गए हैं दोज आर एटॉमिक क्लॉक, उस पर भी आते हैं, उस पर भी समझते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस गो बैक टू क्लास 9। क्लास 9 में चलते हैं। अच्छे दिन थे, बोर्ड की टेंशन नहीं, कोई मतलब ताने भी नहीं मारा तेरे बोर्ड ईयर है पढ़ ले, और थोड़े बड़े भी हो गए। 6, 7, 8 में इतनी फ्रीडम नहीं होती जितनी 9th में हो जाती है ना। तो क्लास 9 वाज अ गुड ईयर फॉर एवरीवन। किसी को ऐसा है जिसकी क्लास 9 में भी लगी है? अब तुम्हारी जिंदगी झंड है तो मैं क्या करूं, लगी है तो लगी है। तो क्लास 9 वाज अ टेरिफिक ईयर। जनरली क्लास 9 इज कंसिडर्ड टू बी, और जैसे मेरे कॉलेज में सेकेंड ईयर जाके, जैसा फर्स्ट ईयर थोड़ा सा बहुत सारे रैंडम कोर्सेज कराते हैं, अजीबो गरीब हो जाता है। सेकेंड ईयर वाज लाइक चिल। सेकेंड ईयर को हम हनीमून ईयर बोलते थे कि जी लो जितना जीना है, तो थर्ड ईयर से लगने वाली है। जैसे क्लास 9 वाज अ चिल लाइफ। चलो चलते हैं सब लोग क्लास 9 में। क्लास 9 में ज्योमेट्री की क्लास होती थी। उसमें अपन एक चीज करते थे, एक मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम दी जाती, फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर 10 मीटर्स अवे, 10 सेंटीमीटर अवे, फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर 6 सेंटीमीटर अवे, फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर 7 सेंटीमीटर अवे। फिर आप सबका वो सर्कल बनाते थे, फिर इंटरसेक्शन निकालते थे और बोलते थे दिस इज वेयर आई एम लोकेटेड। इस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, है ना। तो इट वाज समथिंग लाइक दिस। यू वर टोल्ड कि लेट्स से from x is equal to 3 you are 5 centimeter away, so you will draw a circle 5 centimeter, है ना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। फिर बोलेंगे आपसे आप y is equal to 5 से 3 सेंटीमीटर दूर हो, तो you will make another circle जो कि जिसका रेडियस सेंटर यहाँ होगा, which is 3 centimeter from here. Then you will be said from x is equal to 5 y is equal to 5 you are 4 centimeter away, समथिंग ऐसा बोला जाएगा। यू विल ड्रॉ अनदर सर्कल एंड यू विल से तीनों कंडीशंस ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस इज वेयर आई एम, राइट। वी हैव डन समथिंग लाइक दिस इन स्कूल। संजू बाबा ने नहीं किया? नालायक। कौन सा स्कूल था, कौन सा बोर्ड था? किया था, ध्यान नहीं है तो मेरी क्लास भी भूल मत जाना, 6 महीने तो याद रख लेना। क्या होता, ध्यान नहीं है। डिड वी अंडरस्टैंड हम कैसे अपनी, तो एक 2D प्लेन पे अपनी नोटबुक तो 2D होती थी। अगर फ्रॉम 3 पॉइंट्स यू नो योर डिस्टेंस, यू कुड एग्जैक्टली आइडेंटिफाई योर लोकेशन इन अ 2D वर्ल्ड। दिस इज अ 2D वर्ल्ड। अगर आपको आपको जो फाइनल पॉइंट निकालना है, अपना लोकेशन निकालना है, वो आपको बोला जाए कि इस पॉइंट से आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, तो यू विल मेक अ 10 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल। तो मेरा सर्कल भी ऐसा बनता है। एक इस वाले पॉइंट से आपसे बोला जाए आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, तो यू विल मेक अनदर सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर अराउंड। तो यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 2 पॉइंट्स, यू आर नॉट श्योर। ये 2 पॉइंट्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर एंड सो ऑन। So you still are not sure where exactly you are located. So in a 2D world, if you know your distance from 3 points, you will exactly know where you are located. In a 3D world, if you know your distance from 4 points, you can exactly determine where you are located. तो 4 points कौन से होंगे? वो 4 सैटेलाइट्स होंगे जिनसे आपका फोन सिग्नल रिसीव कर रहा है। वो 4 सैटेलाइट जिनसे आपका फोन सिग्नल रिसीव कर रहा है। आपके फोन में जीपीएस चिप होगी, इट विल रिसीव सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स एंड देन विल टेल यू आर लोकेटेड एट दिस लॉन्गिट्यूड एंड दिस लैटिट्यूड ऑन अर्थ। देन यू ऑल्सो यूज सम मैप्स। गूगल मैप यूज करते हो, गूगल मैप उसे बोलता है इस लॉन्गिट्यूड पे, इस लैटिट्यूड पे हो, मतलब आप लेवल अप आईएएस में बैठे, बिकॉज गूगल मैप नोज कि किस लॉन्गिट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे कौन सी जगह है। जीपीएस डजंट नो दैट। जीपीएस विल टेल यू योर लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड विद द हेल्प ऑफ मैप।
आप गूगल मैप या बिंग मैप या कोई और नोकिया मैप यूज करते हो तब आपको उस जगह का नाम मिलता है। जीपीएस वुड हैव ओनली गिवन यू द लोकेशन, वो लोकेशन पे कौन सा प्लेस लोकेटेड है, दैट इज द वर्क ऑफ मैप। इट विल ओनली गिव यू द कोऑर्डिनेट्स। बट डिड वी अंडरस्टैंड हाउ डज जीपीएस फंक्शन? कई बार ना 3 सैटेलाइट से भी आपको अपना डिस्टेंस पता है ना, योर जीपीएस कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन वेर यू आर लोकेटेड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज उसमें से एक पॉइंट बहुत ना ऐसा होता है कि 50 किलोमीटर बिलो अर्थ, यू कैन नॉट बी लोकेटेड 50 किलोमीटर बिलो अर्थ, तो जो ऊपर वाला होता है वो लोकेशन दे देते हैं। वो कई बार ऐसा होगा 50 किलोमीटर अबव अर्थ, 50 किलोमीटर अबव अर्थ तो शायद 20 लोगों से ज्यादा कभी कोई नहीं होगा एक बार में 50 किलोमीटर अबव अर्थ। कुछ लोग जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह पे हैं वो हो सकते हैं, बट इन जनरल नहीं होंगे। तो जनरली इट कैन बी अज्यूम कि दोस पॉइंट्स आर रॉन्ग। तो फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑल्सो, जैसे यहाँ पे फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑल्सो these 2 locations were available, but if one of these locations were blatantly wrong, then you could have got your information from 2 points only. In the same way, if you know your distance from 3 different satellites, your location from 3 different satellites, you will be able to get your position on Earth, and this calculation will be done by the GPS chip that is being used in your phone. समझ में आ रहा है? देखो अभी तक हम लोग सब जीपीएस यूज करते आए हैं, अगली बार जब जीपीएस ऑन करें तो क्या करें, जीपीएस ऑन करें तो सोचना क्या हो रहा है। फ्रॉम 20,000 किलोमीटर्स अवे some signal is coming to my phone from multiple satellites, and then my phone, the chip in my phone, GPS chip in my phone is calculating my coordinates, and then the map that I'm using is telling me where the coordinates are. Look at the advancement in science and technology that we have done. Look at the place where humankind has reached. ये हम यूज सब कर रहे होते हैं, बट जब हम समझें कि 20,000 किलोमीटर अवे, मतलब 20,000 किलोमीटर इतना दूर है कि आप अर्थ में छेद करके दूसरी तरफ निकल भी जाओगे ना, तब भी इट्स ओनली 12,000 किलोमीटर अवे। 6400 है ना रेडियस, तो आप दूसरी तरफ अर्थ को क्रॉस करके चले जाओगे तब भी इट्स 12,000 किलोमीटर अवे। तो इतनी दूर से सिग्नल आपका एक लप्पू सा फोन रिसीव कर रहा है, एंड इट्स एबल टू प्रोसेस इट। एक 1000 रुपए का चिप होता है उसमें जीपीएस का, इट इज एबल टू डू ऑल दैट फॉर crores of people throughout Earth. This is what science and technology has achieved. ये छोटी छोटी चीजें हम लाइफ में यूज करते रहते हैं बट अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाउ इट इज फंक्शन, राइट? आप हंस रहे, बोला सर मैं तो अभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। हम ढूंढ के एटीएम कहाँ है, ये कहाँ है। आप में से कई लोग पहली बार जब हमारे यहाँ आ रहे होंगे तो आपने भी लोकेशन डाला होगा, फिर कहीं मुड़ तुड़ के आए होंगे। कुछ लोगों ने हमारा लोकेशन शंकर रोड पे डाला हुआ है, वो पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने गूगल में कई बार रिक्वेस्ट डाल दी है, कई बार बच्चे शंकर रोड पे चले जाते हैं। अच्छा, इन समटाइम्स वी आर शिफ्टिंग ऑन द मेन रोड ऑन दिस साइड। तो चलो तब तक तो आप लोग तो शायद पार्ट रहेंगे, बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग ऑन द मेन रोड। तो जो फ्यूचर जनरेशन होगा आपका, उनसे बोलिएगा कि यहाँ ना पहुंचे, अब वी आर ऑन द मेन रोड। उस तरह यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस फुलफिल नहीं हो रही है। तो ओआरएन में कोई भी बिल्डिंग जो अंदर है ना, उसमें फायर वाले नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो व्हेन वी गॉट टू नो, हमें पहले पता नहीं था, फिर हमें जब पता लगा तो वी टुक अ कॉल, वी विल नॉट बी स्टेइंग हियर, विल बी मूविंग ऑन टू इन अ बिल्डिंग वेयर ऑल द नॉर्म्स आर बीइंग फुलफिल्ड, सो दैट सेफ्टी सारे स्टूडेंट्स का मेंटेन रहे, किसी भी तरह से वहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, कमिंग बैक टू, डिड वी अंडरस्टैंड हाउ SAT-NAV सिस्टम फंक्शन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फंक्शन? नाउ लेट्स, ये बेसिक्स की बात वही कर रहे हैं कि a satellite navigation system is a technology that allows users to determine their precise location, velocity and time information. It uses a network of satellite in space and provide accurate positioning data. Currently there are 4 global satellite navigation system. Global satellite navigation system जो पूरे अर्थ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जीपीएस थ्रू आउट अर्थ, थ्रू आउट ग्लोब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ग्लोनास ऑफ रशिया कैन प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू आउट अर्थ, गैलीलियो ऑफ यूरोप एंड बाइडू ऑफ चाइना। These are the 4 global satellite navigation system. इसके अलावा 2 रीजनल भी हैं, इंडिया का नाविक और
जापान का 𝐂𝐭 नाउ SAT-NAV system work in two different ways. One is called triangulation and other is called trilateration. Triangulation angle, lateration distance. तो अपन ने जो मेथड समझा वो डिस्टेंस वाला था, बट एंगल वाले मेथड से भी आप निकाल सकते हो कि आप इस वाली लाइन से 70 डिग्री पे हो, इस वाली लाइन से 80 डिग्री पे हो, इस तरह से भी आपका एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करा जा सकता है. तो triangulation and trilateration are two different methods that can be used. For example, GPS uses trilateration. GPS does not use triangulation. GPS does not use triangulation at all. Now, application you can think of, है ना, aviation, transportation, banking services, precision agriculture, outdoor recreational activities, trekking, इन सारी चीजों में हम GPS का यूज कर रहे होते हैं. So all these things would be usable. Now, देखो, I'm located here on Earth. दिल्ली में मैं यहाँ पे located हूँ, and I'm able to get benefit of GPS. It's because at one time here 4 satellites of GPS should be visible. तभी तो उनसे सिग्नल रिसीव करके my chip would be able to process everything and then do it. ये ऊपर देख रहा है, यहाँ भाई यहाँ नहीं दिखेंगे. ये हाँ 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 यहाँ के बिल्डिंग में पूरे नहीं है. तो हाँ, अच्छा तो अच्छा मेरे को लगा देख रहा है कहाँ सैटेलाइट. चलिए, तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में 4 वो सैटेलाइट्स दिखने चाहिए. नाउ जीपीएस एंश्योर्स दिस फॉर एवरी पॉइंट ऑन अर्थ. तो सिर्फ 4 इंडिया के ऊपर 4 सैटेलाइट लॉन्च करके तो एवरी पॉइंट ऑन अर्थ पे इट कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज, राइट. तो हाउ इज द जीपीएस कॉन्स्टलेशन मतलब जीपीएस का जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है वो कैसा है, जिससे वो पूरे अर्थ पे हमेशा ये इंश्योर करता है कि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन अर्थ देर आर at least 4 satellites visible. This is the GPS constellation. Now, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसे समझने के लिए ऐसा करते हैं. This is Earth, है ना, and then in circular orbit at a height of 20,200 kilometers. इसकी हाइट 20,200 किलोमीटर, उससे एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाओ. सर्कुलर, इट्स नॉट एलिप्टिकल प्लीज, हाँ, वो सर्कुलर ऑर्बिट. ऐसे ही एक एंगल पे फिर से सर्कुलर ऑर्बिट बनाओ, फिर से सर्कुलर ऑर्बिट बनाओ, फिर से सर्कुलर ऑर्बिट. ऐसे करके इन्होंने 6 इक्वली प्लेस्ड ऑर्बिट बनाए हैं एट अ हाइट ऑफ 20,200 किलोमीटर. 6 equally placed orbit at a height of 20,200 kilometers. Each plane contains 4 slots occupied by baseline. So every orbit has at least 4 satellites. So there are at least 24 functioning satellite in GPS constellation at a height of 20,200 kilometers. What is so special about 20,200 kilometers? 12 hours. तो 12 आवर्स में वो सैटेलाइट घूमता है, बट उसके पीछे 3 सैटेलाइट और हैं उस ऑर्बिट में. देन एट सम एंगल देयर इज सम अदर ऑर्बिट, देन एट सम एंगल देयर इज सम अदर ऑर्बिट, देयर आर सम एंगल. तो इस तरह से ये कॉन्स्टलेशन बना हुआ है. एंड दिस एंश्योर्स दैट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अर्थ यू विल बी एबल टू सी 4 satellites. When you are able to see 4 satellites, you are able to receive signals from them. When you are able to receive signals from them, what happens? You are able to find your location. This is how GPS functions. 3 सैटेलाइट से कर सकता है, पर हमने आपको बताया ना कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक लोकेशन अर्थ के 50-100 किलोमीटर नीचे आ जाता है, 50 किलोमीटर नीचे आ जाता है. तो ऑप्शन है एमसीक्यू में, तो 4 एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए 4. 3D वर्ल्ड में यू विल नीड सिग्नल फ्रॉम 4 डिफरेंट सैटेलाइट्स. आर वी गेटिंग दिस? ओके. जीपीएस जैसे काम करता है, बाइडू भी कुछ वैसा ही है. बाइडू चाइना का है. चाइना का बाइडू सिस्टम स्टार्टेड, इट वाज इनिशिएटेड इन 1994
and first Baidu satellite was launched in 2000. Initially it was a regional system. Regional system मतलब कुछ रीजन में ही ये लोकेशन सर्विसेज दे पा रहा है, जैसे अपना नाविक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अभी वो इंडिया और इंडिया के अराउंड रीजन में दे पाता है. बट बाय 2020 it had launched enough number of satellites that it is able to provide global services. तो इनका कॉन्स्टलेशन कैसा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देयर आर 24 सैटेलाइट्स इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट. जैसे जीपीएस का एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स हैं, they have some reserve satellites also in those orbits, but at least 24 active satellites हैं. ऐसे ही they also have 24 satellites in medium earth orbit around 21,500 km above the earth, and which provide positioning, navigation, timing services. They also have satellites in geosynchronous orbit. Now geosynchronous orbit में जो satellites हैं उसका पर्पस प्राइमरली वो नहीं है SAT-NAV सिस्टम में सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसका पर्पस है शॉर्ट मैसेजिंग, एसएमएस सर्विस प्रोवाइड करना. इट कैन एक्ट एज कम्युनिकेशन सिस्टम. तो इनका जो SAT-NAV सिस्टम है थोड़ा कम्युनिकेशन सर्विसेज वाले फंक्शन भी दे रहा है. ओके, इट हैज फर्दर प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन. जैसे इन नवंबर 2020, तो राइट नाउ नॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर यूजिंग बाइडू. जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर यूजिंग जीपीएस और GLONASS. So it has plans of expansion. You will see Pakistan became the first country in 2014 to set up a Baidu network. Baidu has set up first of the 3 continuously operating reference stations for its network in Thailand in 2013 to serve as a hub for ASEAN, and it is taking various measures to expand the usage of Baidu. Now गगन एंड जेमिनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. थोड़ा पुराना हो गया है बट ये थोड़ा रिलेवेंट होता है. कभी कभी ना पुरानी चीजें भी आ जाती है. जैसे आई रिमेंबर लास्ट ईयर क्लास में मैंने वुलबैकिया बैक्टीरिया के बारे में बताया था. वो 2-3 साल पुराना था, बट ऐसे ही हेडिंग डाल के मैंने क्लास में समझाया था व्हाट इज वुलबैकिया, उसका क्या फंक्शन होता है. इट गॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. उससे पिछले साल भी देयर वाज अ टॉपिक जो मैंने ऐसे ही समझाया था, वो था हैवी फ्यूल से रिलेटेड एनवायरमेंट में. वो नोट्स में बस हेडिंग डाला था मैंने और क्लास में बताया था क्या होता है, और उससे एग्जाम में सवाल आ गया. तो आई ट्राई टू इंश्योर कि पुरानी चीजें भी जो रेलेवेंट हो एक बार हम पढ़ लें, एक बार सुन लें, सो दैट इन केस इट गेट्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एटलीस्ट वी वोंट गिव दिस रीजन क्या 3 साल पुराना पूछ लिया. अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं. ओके, गगन. गगन का पहले फुल फॉर्म लिखो. जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. जो गगन है ना, गगन GAGAN, जीपीएस एडेड, जीपीएस से हेल्प लेता हुआ जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. अब इसका बस फंडा समझ लो क्या था. देखो, वी यूज जीपीएस. कई बार जीपीएस ऐसे 5-10 मीटर 50 मीटर इधर उधर हो जाता है. होता है ऐसा, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वो किसी और गली में पहुंचा देता है. अब वो जीपीएस यूज करके हम फ्लाइट लैंड कर रहे हैं, वो 50 मीटर इधर उधर लैंड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो गगन वॉज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट लैंडिंग फॉर एरोनॉटिक सर्विस. इसरो ने इंडिया में एविएशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये गगन सिस्टम डेवलप किया था. आइडिया क्या था, आप जीपीएस का सिग्नल तो लो, जीपीएस एडेड है, आप जीपीएस का सिग्नल ले रहे हो, बट यूजिंग सम ऑफ योर ओन सैटेलाइट्स उसको और ऑगमेंट करो. कुछ और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यूज करके उसे उस इंफॉर्मेशन को और ऑगमेंट करो. तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं. कौन से सेक्टर के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए. जीपीएस का सिग्नल यूज कर रहे हैं प्लस कुछ और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेके ऑगमेंट करके वी आर गिविंग मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. डू वी हैव क्लैरिटी हियर? गगन है ना, बस इतना अगर आ गया कि गगन इनिशिएटिव था इसरो का, किस सेक्टर के लिए था. जैसे वुलबैकिया वाला आया कि किस चीज के लिए था, तो वैसे ही वो सब आता है. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ओके, देन जेमिनी. व्हाट इज जेमिनी? GEMINI. जेमिनी ना गगन को यूज करके एक, अब इसे भी समझते हैं ऐसे, अपना जो टेलीफोन टावर है वो 5-10 किलोमीटर दूर तक सिग्नल दे सकता है, उसके बियॉन्ड तो नहीं दे सकता, राइट.
अब फिर सोचो अपने फिशरमैन जो है वो तो समंदर में जाते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, समटाइम्स 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। उनका मोबाइल फोन तो काम 10 जैसे 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे उनका मोबाइल फोन काम करना बंद कर देगा। सपोज एंड anyone who has lived in coastal areas and have seen fishing community work, तो sometimes they go for many days, right? आपने ऐसा देखो 15-15 दिन के लिए वो गायब है, 20 दिन के लिए गायब है, महीने भर के लिए गायब है, क्योंकि दे गो इन डीप ओशन। कोई ऐसे चला गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई वो साइक्लोन आने वाला है, यू वुड वांट देम टू, यू वुड वांट कि आप उनको इन्फॉर्मेशन भेज पाओ एंड दे शुड बी एबल टू कम बैक, राइट? और अदर सच इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, we should be able to send it to them and they should be able to come back. Gemini was something for this purpose. तो Gemini में क्या किया गया था, उनके बोर्ड्स वगैरह पे एक डिवाइस सेटअप किया गया जो गगन सिस्टम से उनको इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस पे जाए, एंड दैट डिवाइस वाज थ्रू ब्लूटूथ एंड ऑल कनेक्टेड टू देयर मोबाइल फोन, सो दैट देयर मोबाइल फोन पे दे विल बी एबल टू गेट दिस इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन। दैट इज Gemini, GEMINI। एक और दूसरा जेमिनी हम पढ़ेंगे गूगल का अभी आईटी वाले में, दैट इज डिफरेंट, वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट दिस जेमिनी इज अंडरस्टूड, है ना? फिशरमैन जो कि टेलीफोन नेटवर्क से दूर चले गए उनको इमरजेंसी इंफॉर्मेशन भिजवा पाना, गगन पे क्लैरिटी है। ओके, नाउ नाविक, नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ये पढ़ना है। Gemini, no, it's not working on internet, it's working on satellite communication. इंटरनेट, फिर आपको इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए वही प्रॉब्लम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो डिवाइस है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा होगा और फिर जो फिशरमैन है वो डिवाइस से फोन में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन दे। हाँ, on the boat they put on some device. Yes. Now IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, और जब ये पूरा लॉन्च हो गया था तो मोदी जी ने जाके नाम बदल दिया नाविक, नेविगेशन यूजिंग इंडियन, तो ये थोड़ा अपना सा नाम लगा, नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन। मोदी जी इज लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों रखनी है, सिंपल सा रखो कि लोगों को समझ में आए। नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन इज सिंपलर देन IR, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, दैट्स अ टेक्निकल नेम, एक साइंटिफिक नेम बनाया रखा है। और एक, अब आप नमक मांगते हो तो नमक बोलते हो, सॉल्ट बोलते हो, या सोडियम क्लोराइड मांगते हो। मोदी जी हैज दिस फिलॉसफी, सबको इतना सिंपल सा एक नाम दे दो, अपने आप चीजें ज्यादा पॉपुलर होंगी। तो कमिंग बैक टू नाविक और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देखो अच्छा, can you see this image? ये इंडिया है, म्यांमार भी ले लेके इंडिया में, छोड़ो भाई, बांग्लादेश भी आ रहा है, और बांग्लादेश तो इंडिया ही है, चलो, है ना? थोड़ा पाकिस्तान भी ले लेते हैं, सारा ले ले अभी ना, देखो सारा ले लेंगे पर माहौल थोड़ा सही हो जाने दो वहां का, है ना? देखो सबसे अच्छा तरीका है अखंड भारत का, इंडिया को इतना डेवलप कर लो कि वो लोग अपने आप बोले कि भाई तुम लोगों ने अलग देश बना के क्या कचरा कर दिया है, इंडिया से डेवलपमेंट में हेल्प मांगे, फिर बोले हमें अपना ही बना लो, है ना? रादर देन वायलेंस करके, और अपना डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर लो कि उलप्पू सा पाकिस्तान लगे। ओके, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस। इंडिया में, इंडिया के आसपास हमें नेविगेशन सर्विसेज देनी थी, तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि एट वन टाइम देयर शुड बी 4 सैटेलाइट्स, जिससे हमेशा सिग्नल हमें मिलता रहे। व्हाट वी डिड, वी लॉन्च्ड 4 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो 24 आवर्स में विल कम बैक टू द सेम प्लेस, बट इफ यू रिमेंबर वो अर्थ से कैसे अपीयर होगा एक पॉइंट से, एज इफ इट्स मेकिंग शेप ऑफ 8। इंडिया से कैसे अपीयर हो रहा है? इट्स मेकिंग शेप ऑफ 8, इट्स मेकिंग शेप ऑफ 8। 2 सैटेलाइट इस ऑर्बिट पे, 2 सैटेलाइट इस ऑर्बिट पे,
4 सैटेलाइट चले गए। इसमें ऐसा हो सकता है व्हेन दिस सैटेलाइट इज ऑन दिस साइड इट मे बी लेस विजिबल एंड ऑल। अदर देन दिस वी आल्सो लॉन्च 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल ऑलवेज बी अवर इक्वेटर, 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर आल्सो जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस का एक टाइप है। These are the 7 satellites that we have launched. Now, at any point of time from Earth, from India, and around 1500 kilometers around India, 4 satellites definitely visible है। हो गया अपना SAT-NAV। SAT-NAV में this is what you needed, and because our system is in geosynchronous and geostationary, अगर ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे होता, इन 1 day it was completing 2 rounds of Earth. In 12 hours, if it was completing 1 round of Earth, and thus in 1 day it was completing 2 rounds of Earth, it would have been a problem for us. But right now we have launched satellite in geosynchronous and geostationary orbit, and thus is always visible to us. हम यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, ये देखो पहला ये श्रीलंका के नीचे जाके इधर है, आपको यहाँ पे ऊपर ऐसे दिख रहा होगा वो सैटेलाइट। एक वहाँ अफ्रीका के ऊपर दिख रहा होगा इक्वेटर में, एक इधर इंडोनेशिया में दिख रहा होगा। These 3 geostationary satellites, and then 8 shape में you have 4 geosynchronous satellites. एक बार 2018 preliminary examination में they had even asked this, इसमें 4 geosynchronous हैं, 3 geostationary हैं। Something like this was also asked in the examination. IRNSS has remained one of the favorite topics for UPSC. 2015 मेंस में उन्होंने सवाल पूछा IRNSS पे, 2018 मेंस में सवाल पूछा IRNSS पे, 2018 प्री में भी सवाल पूछा IRNSS पे। This is our SAT-NAV system. देखो suitable कुछ नहीं, फिर से समझो कि for us this was more suitable because this could ensure कि हम अपने रीजन में तो डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। सपोज वी हैड लॉन्च्ड इट इन लो अर्थ ऑर्बिट, प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि वो आधे टाइम वो पीछे रहते, तो we would have needed to launch more satellites. If we had launched it in medium earth orbit, half of the time these 7 satellites में half of the satellites would have been on the other side, so we would not have ensured that at least 4 satellites are visible to us. हाँ, लोकलाइज के लिए हमने जियोस्टेशनरी जियोसिंक्रोनस में डाल दिया। जनरली his question is right कि sir we have seen so far satellites going to medium earth orbit for SAT-NAV system. Why in IRNSS you are putting satellite in geosynchronous orbit and geostationary orbit? Because we wanted to ensure that it remains visible to us, and we are able to provide this service. Now the question is, एक 2018 मेंस में सवाल आया कि why did India need its own SAT-NAV system when we had GPS? GPS था, GPS हम यूज कर रहे हैं, तो the problem emerged during the Kargil war. During Kargil war, our armed forces complained कि GPS का accessibility affect हुआ था उनका, because at that time US was more inclined towards Pakistan, right? हंस रहे हो क्या? मुझे भी जोक मारो पक्का। हाँ, तो they had this complaint, so India at that time decided that we needed our own Indian regional navigation satellite system, and thus we have made it. एक और सवाल जो प्रीलिम्स में आया था उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जैसे IRNSS प्रोवाइड सर्विसेज इन इंडिया एंड 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया। एक सवाल में एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में दिया था इंडिया और इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर तक, तो गलत हो गया था। इट्स 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम अराउंड इंडिया इट वुड बी प्रोवाइडिंग सर्विस। व्हाई डिड वी नीड इट? वी अंडरस्टैंड what is the mechanism, what are the 7 satellites that we have here. We know the principle of triangulation and trilateration that would be used. So do we have clarity on how India's Indian regional navigation satellite system functions? Okay, sorry, come again. इसमें ट्राइलेटरेशन यूज कर रहे होंगे, है ना, डिस्टेंस वाला क्लैरिटी है। नाउ it provides 2 kinds of services, standard positioning service and restricted service. Standard positioning service would be available to everyone, and restricted service would be more encrypted service that will only be available for authorities, armed forces etc. Components हमने समझ लिया, 7 सैटेलाइट है, 3 इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, 4 इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब क्या हो रहा है इन 2023?
अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। देखो वी लॉन्च्ड IRNSS 1A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। दिस वॉज समथिंग दैट वी हैड लॉन्च 7 सैटेलाइट्स इनिशियली। फिर ना ए की जो एटॉमिक क्लॉक है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वी लॉन्च अनदर सैटेलाइट IRNSS. All these satellites were launched using PSLV. PSLV has faced only 2 failures so far. One was in the beginning and one was H could not be launched. Some error occurred, some failure occurred. तो गया 1I. So right now we have 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G and 1I. इतनी जरूरत नहीं है याद रखने की, बट पहले 7 गए थे नॉर्मली, 1A में प्रॉब्लम आया तो 8वां गया H, बट H could not be launched, so what went I. ABCD याद है तो हो जाएगा। ऐसे बैठ के रट के नहीं रखना है कि ये है ये नहीं है। ओके, आर वी क्लियर अबाउट दिस? हाँ, अब क्या हो रहा है देखो, IRNSS पुराने वाले जो IRNSS थे, they were older generation satellites. Now we can develop more advanced satellites with better features, better coverage and so on. Now India has started launching next generation of navigation satellites. अभी May 2023 में NVS-01 was successfully launched. Navigation satellite 01. Complexities naming में इसरो खत्म कर रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, CMS, ऐसे ही NVS. इट लॉन्च NVS-01. इसरो GSLV F12, ये GSLV Mark II का मिशन था, सक्सेसफुली प्लेस नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 इनटू इंटेंडेड ऑर्बिट. तो मेरी आवाज सुन के सही है, ऐसे कहीं और कॉल वॉल तो नहीं लग जाएगा मेरी आवाज सुन के? गूगल प्लीज कॉल माई गर्लफ्रेंड, पता लगे 5 कॉल्स आ रहे हैं। वो भी खुश है, चलो सर आप इमेजिन तो कर रहे हो, यहाँ एक के वो लाले पड़े है ना, वो देखो उसका अब सच में सैड हो गया। डोंट वरी बेटा, पढ़ाई कर ले, बस यही है और कुछ नहीं रखा है। कहाँ थे हम? NVS-01. तो हाउ इज दिस नेविगेशन सैटेलाइट, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट दैट वी आर लॉन्चिंग आफ्टर IRNSS, हाउ आर दे डिफरेंट देन दी प्रीवियस वंस? पहले देखो, दे आर हेवियर 2232 kgs का। पहले वाले सारे वर लॉन्च यूजिंग PSLV, तो दे कैन नॉट बी मोर देन 1460 kg। अगर आप जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी में डाल रहे हो तो PSLV cannot take anything beyond 1460 kg, right? It's heavier and that's why GSLV Mark II was used first. Second, it had indigenous atomic clock. इससे पहले जो अपन ने IRNSS लॉन्च किए सब में एटॉमिक क्लॉक था, but those atomic clocks were not made in India. They were not indigenous. For the first time, the satellite carries an indigenous atomic clock. The space qualified rubidium atomic clock has been indigenously developed by Space Application Center, अहमदाबाद. हमारा एक स्टूडेंट था दिनेश जांगीड़, ही वॉज वर्किंग इन दिस स्पेस स्टेशन, और वो अभी पिछले साल फॉरेस्ट सर्विस में उसकी 18th रैंक आई है, या 18th या 11th रैंक आई है। अच्छा, आपका दोस्त है क्या? भाई है। ओके, तो ही यूज्ड टू वर्क यहीं पे काम कर रहा था ना स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। तो उसने सिलेक्शन के बाद बताया कि सर मैं इसरो में काम करता हूँ और फिर भी मुझे आपकी स्पेस की क्लासेस अच्छी लग रही थी, बोला उसने ये वाला सीन। और ही वाज ऑलवेज क्वालिफाइंग फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ द टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्लासेस। उसमें मैं साइंस एनवायरनमेंट पूरा थॉरली डिटेल में कराता हूँ। यू विल गेट एन एडवांटेज ऑफ अ फ्यू मार्क्स व्हेन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स।
विल डेफिनेटली गेट इट। अगर आप सीरियसली सिंसियरली पढ़ोगे यू विल हैव दैट एडवांटेज विच अदर स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव, क्योंकि कोई इतने डेप्थ में जाके पढ़ा ही नहीं सकता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज लाइक बिफोर 2018-19 तो कोई साइंस टेक पढ़ाता ही नहीं था अलग से, अब बहुत सारे लोग पढ़ाने लगे हैं, वो मेरे नोट्स को ही लेके मॉडिफाई करके पढ़ा रहे हैं। एंड आई नो माई ओन स्टूडेंट्स टीचिंग एट 10 डिफरेंट प्लेसेस। मेरे स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एनरोल्ड है, दे आर टीचिंग एट 5 डिफरेंट प्लेसेस एंड इन गुड प्लेसेस ऑल्सो। बट वो मेहनत करनी पड़ती है ना, जो बैकग्राउंड समझने में, और पढ़ाते टाइम हम बहुत कम बताते हैं, बट खुद से पढ़ते टाइम वी हैव टू स्टडी अ लॉट। दे डू नॉट डू दैट, एंड इसलिए ना वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते हैं कि बच्चा एक एक एस्पेक्ट अच्छे से समझे। So coming back to, you'll be able to understand this very well. You'll be able to do these things when they come in examination. You'll be able to attempt them very well. Sincerely पढ़ो, आपकी मैं अपनी तरफ से ना पूरी जान लगा देता हूँ। When it comes to teaching my students, I give my everything. मेरे लिए this teaching is everything for me. I don't do anything else. क्या बोल रहे? कुछ तो बोल गए ना संजू, कुछ तो बोले तुम। सर मूवी देखते रहते हो? मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है सर। आई वांट टू टेक ऑफलाइन पीएमपी बैच, सीट्स आर अवेलेबल और नॉट। देखो, अगर पोर्टल पे अभी भी एडमिशन हो रहा है तो होगा, जैसे ही वो सीट्स खत्म हो जाएंगी वैसे ही वो पोर्टल पे बंद हो जाएगा। तो पोर्टल पे एडमिशन ले सकते हो तो होगा, नहीं तो आई डो नॉट नो। मतलब 6-7 सीट्स थी बिफोर द क्लास बिगैन टुडे, आई डो नॉट नो। अगर पोर्टल पे एडमिशन चल रहा है तो ले लो अभी, ठीक है, बट इट्स गोइंग टू गेट क्लोज, क्योंकि ऑफलाइन सीट्स आप देख रहे हो सारी फुल है और वो प्रॉब्लम रहती है। कम बैक टू नेविगेशन सैटेलाइट। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज इट्स हेवियर। सेकंड, इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक है इसमें। इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक मतलब खुद का बनाया हुआ एटॉमिक क्लॉक, जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया। तीसरा, L1 सिग्नल्स फॉर बेटर यूज इन वेरिएबल डिवाइसेस। नाउ देखो, अपन ने अभी माइक्रोवेव्स की बात करी थी, उसमें माइक्रोवेव्स वी सेड कि दे आर डिवाइडेड इनटू, दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल बैंड्स, सी बैंड, एल बैंड, एस बैंड, के बैंड, KU बैंड, KA बैंड एंड सो ऑन। L band is something that is used by something like GPS also. तो जनरली जो फोन और वो डिवाइसेस बन रहे हैं ना, दे आर मोर इन सिंक विथ L band. अपने पुराने वाले सिस्टम में L band नहीं था, तो नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड L band also. So you will see the second generation satellite have sent signals in third frequency L1 besides the L5 and S frequency signal that the existing satellite provide. They will be providing signal in L1 also. This will increase operability with other satellite based navigation system. L1 frequency is the most commonly used in GPS and will increase the use of NAVIC in wearable devices which use low power signal frequency chip. Longer mission life of 12 years. जो अपना नाविक था उसका मिशन लाइफ 10 साल का है, वो सैटेलाइट 10 साल बाद रिप्लेस करनी पड़ेगी, बट इट हैज अनदर एडवांटेज दैट इट विल हैव मच लॉन्गर लाइफ। सॉरी, आप मन ही मन में क्या बोलते रहते हो? कौन बोल रहा था? माइक्रो में ये बोल रहा था, क्या पूछ रहे थे? माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो माइक्रोवेव्स में हो रहा है ना। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है ये पढ़ाएंगे फिजिक्स में आके। चलो, लेट मी टेक 1 minute टू जस्ट एक्सप्लेन इट। देखो, यू यूज अ क्लॉक राइट नाउ ना, तो जनरली जो ये क्लॉक है ये मोस्ट प्रोबेबली क्वार्ट्ज यूज करके बना हुआ है। क्वार्ट्ज कैसे काम करता है? उसमें से व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इट विल वाइब्रेट, इट विल ऑसिलेट, एंड बाय मेजरिंग दोज ऑसिलेशन सेकंड इज कैलकुलेटेड। बट ये एक्यूरेट नहीं होते हैं, है ना। यू विल सी समटाइम्स ये 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, राइट। एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स which are there. Now how do they function? How do atomic clocks function? So they use electromagnetic waves in a way. So basically क्या होता है, atoms would emit some light or some electromagnetic wave when some energy is given to them. Electron उससे higher energy पे जाएगा, फिर drop होगा, and in the period it will release
energy of that particular frequency. Atoms can release energy of that particular frequency. हम ना सीजियम एटम या रुबिडियम एटम, यहाँ पे रुबिडियम का यूज क्या है, सीजियम का क्लॉक यूज करते हैं, उनसे रिलीज जो की एनर्जी होता है, उनसे रिलीज जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको यूज करके टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इतने सारे वेव्स पास होने के बाद 1 सेकेंड होगा, इतने सारे वेव्स पास होने के बाद 2 सेकेंड होगा, एंड दैट इज वे मोर एक्यूरेट देन व्हाट हैपेंस। वी विल स्टडी दिस इन मोर डिटेल व्हेन वी कम टू फिजिक्स। लास्ट क्लास हमने बोला ना, लास्ट क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ मिसलेनियस चीजें होंगी, वहां पे विल स्टडी दैट, so we will study this, do not worry, but they are a mechanism to calculate time and they are the most precise mechanism used all over the world. Okay, now what were we talking about? We have understood कि NVS 02 NVS 01 या नया जो जनरेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट है, we understand नाविक, we understand IRNSS, we understand GPS, we understand बाइडू, we understand ग्लोनास, जेनिथ, सारी चीजें। इस बार भी जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन था, which of the following countries have a regional सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और बस ये पता होना कि जापान के पास क्वासी जेनिथ है, इंडिया के पास नाविक है, was enough for solving this thing, है ना। तो बस मैं सिर्फ NVS 01 पढ़ाता ना तो गलत होता, सवाल कहीं से भी आ रहा है ना, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कवर इट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके बियॉन्ड कुछ पूछ ले कोई बात नहीं, कोई नहीं करेगा, बट वी शुड ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड। देखो, आउट ऑफ 5 लाख पीपल हु विल राइट एग्जाम, अराउंड 10,000 वुड क्लियर प्री, 98% स्टूडेंट्स विल नॉट, तो यू हैव टू बी अमंग द 2% पीपल, और वो 2% जैसे काम कर रहे हैं आपको वैसे काम करना पड़ेगा, ना कि अरे देखो ना मेरे 10 दोस्त मस्ती कर रहे हैं, मैं 11वां पढ़ रहा हूं, नहीं, 50 में से एक होना पड़ेगा। 5 लाख में से अगर आउट ऑफ 5 लाख पीपल, इफ 10,000 पीपल क्लियर प्री, इट मींस आपको 50 में से एक होना पड़ेगा। आपके 10 दोस्तों में आप सबसे अच्छा कर रहे हो, दैट्स नॉट इनफ, यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट सेंस। आर वी गेटिंग इट, आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? तो सब लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, हम अपनी तरफ से आपको सबसे अच्छी जो पढ़ाई करवा सकते हैं वो करवाएंगे। Okay, let's come back to this current situation of नाविक। नाविक कहाँ यूज हो रहा है, तो you will see पहले क्या था, नाविक while IRNSS was launched 2016 में, IRNSS was already, what we had not worked upon was GPS chip। हमने सैटेलाइट्स तो लॉन्च कर दी, बट अफोर्डेबल चिप्स होनी चाहिए जो फोन में लगा पाए, उस पर काम हुआ नहीं था, those chips were not available, so in spite of having IRNSS people were not able to use IRNSS. But now what is happening, the receivers have now been deployed and Navik is in use for projects like public safety, power grid synchronization, real-time train information, etc. Then other upcoming initiatives include common alert protocol based emergency warning, time dissemination, geodetic network, unmanned aerial vehicles are in process of adopting Navik. Some cell phone chipsets like Qualcomm, MediaTek, they've already started using Navik, started integrating their phones with, they have GPS plus they also have Navik ka chip. If someone wants to use Navik, they'll be able to use it. Some example of phones which are Navik enabled include Redmi Note 9, Realme 6, OnePlus Nord, और उसके जो अब नेक्स्ट वाले वर्जन आए होंगे वो भी Navik enabled होंगे। तो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है बट यूसेज नहीं हो रहा है। जैसे इवन इफ योर फोन हैज Navik, is Navik enabled, perhaps you did not know it, आपके पास ये इनमें से ही कोई फोन होगा अभी, बट यू आर नॉट अवेयर कि इसमें इट इज नाविक इनेबल्ड, यू हैव नॉट यूज्ड इट, तो यूसेज अभी भी बहुत कम रहा है। ओके, नाउ आदित्य L1। आदित्य L1 समझने से पहले ना विल अंडरस्टैंड लैग्रैंजियन पॉइंट्स, बिकॉज L1 इज वन ऑफ द लैग्रैंजियन पॉइंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑर्बिट्स पे इतना टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ओके, सन 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 मैं सन नहीं बोल रहा भाई, सन क्या हुआ, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, डालो, इतना मोटा पहन क्यों रखा है, तुम डालो से। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा, किल्विश, किल्विश नाम है तुम्हारा, अच्छा तुम पहनो से,
पहनो पहनो, ये चेन वेन बंद करो। स्टाइल मार के बैठा हुआ है, बोल रहे सर्दी लग रही है। फिर अजीब सी है, तो धोई नहीं है 6-7 महीने। हाँ, तब से नहीं धोई ना। चलो आ जाओ, सन पे आते हैं। सन। ऐसे ना नाराज मत होना, मैं मजाक वैसे ही करता रहता हूँ सबको हंसाने के लिए, तो कोई ऐसे कि सर बुली करते हैं क्लास में और ये सब मत करना। मुझे बता देना कि आपका 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 मजाक नहीं करना है क्लास के बाद, तो मैं आपका नहीं करूंगा, बाकी सबका करूंगा। क्लास में हंसना जरूरी है ना, वो हंसेंगे कैसे जब तक थोड़ा 6-6, 7-7 घंटे क्लास और मैं एकदम बोरिंग करके पढ़ाता रहूंगा, आप भी सो जाओगे, मजा भी नहीं आएगा। राइट, लेट्स कम बैक टू दिस। सन, अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। लेट्स से अर्थ यहां नहीं होता, अर्थ यहां नहीं होता, अर्थ यहां होता, तो वुड अर्थ हैव टेकन 365 डेज और लेस देन दैट? लेस देन दैट। पहला चीज जो हमने पढ़ा था, as you come closer, as radius reduces, the time duration would decrease because gravitational force, the time duration would decrease because gravitational force is higher here. So let's assume Earth is not there, हम हैं ही नहीं, पढ़ाई हो ही नहीं रही, कोई यूपीएससी की तैयारी ही नहीं है, अर्थ है ही नहीं, है ना। यहां पे you go and launch a satellite around sun. Aditya launching a satellite revolving around sun. It would have taken less than 365 days. अब satellite का size would not have mattered. It would have taken less than 365 days. Make sense? Okay. But अर्थ तो है, हम भी हैं, यूपीएससी की तैयारी भी है, रातों में नींद नहीं है, पर अर्थ तो है, अर्थ है। अब क्या होगा इस सैटेलाइट के साथ? इस सैटेलाइट को एक ग्रेविटी इधर खींच रही है, एक ग्रेविटी इधर भी तो खींच रही है। इफ अर्थ वाज नॉट देयर, if earth was not there, then it was definitely taking lesser time. If earth was not there, then it was definitely going to take lesser time. But earth is there and it is pulling it in this direction. So suppose in the absence of earth at this point, it would have taken 340 days. In the presence of earth, it would take slightly more time because earth is pulling it in the other direction. अमन, समझ में आ रहा है? अमन ही नाम है ना आपका? आप कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी बातें बतानी है मुझे। ये समझ में आया? बिकॉज अर्थ इज देयर, अर्थ इज पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन, so if instead of 340 days, it would have taken perhaps 350 days. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिड्यूस हो गया ना। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है। So in the absence of Earth, it was taking 340 days, but because Earth is there, it's taking 350 days. It will be taking 350 days. Suppose instead of here, it was launched here. तो एक तो सन से दूर गया, 350 डेज की जगह perhaps 360 डेज ले रहा होगा। अर्थ के पास चला गया तो ग्रेविटी और पुल कर रही है, 365 भी ले रहा होगा। हो सकता है। तो सन और अर्थ की लाइन पे देयर विल बी अ पॉइंट वेयर व्हेन यू लॉन्च अ सैटेलाइट इट विल टेक एग्जैक्टली 365 डेज। वो पॉइंट हम ढूंढ के निकाल सकते हैं कौन सा होगा, बट देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इट विल टेक एग्जैक्टली 365 डेज, द सेम टाइम दैट अर्थ इज टेकिंग टू रिवॉल्व अराउंड सन। So what would happen is, when Earth would reach here, it would reach here. When Earth would reach here, it would reach here. When Earth would reach here, it would reach here. So it is always in sync with Earth.
सपोज हमें सन को पढ़ना है, सन को समझना है. वन ऑप्शन वॉज वी लॉन्च अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ. सपोज हम लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर दें सन को स्टडी करने के लिए, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो आधे टाइम तो इट विल बी बिहाइंड अर्थ, इट विल नॉट बी एबल टू स्टडी सन. बट इफ वी लॉन्च इट एट आदित्य L1, L1, what would happen? It will always be facing sun and it will be able to study sun more effectively. This अभी चलो आदित्य की बात नहीं करते. This point is called L1. If you launch a satellite at this point around sun in the sun earth system, it will always remain in sync with both sun and earth. It will always remain in front of earth, in front of sun, and between earth and sun. चलो एक और चीज समझते हैं. सन, अर्थ. This orbit is taking 365 days. This orbit is taking 365 days, right? 365 days, 6 hours and something. कुछ वैसा टाइम ले रहा है. Again, if Earth was not there and if you launched the satellite here, it would have taken more than 365 days. Let's say 380 days. If Earth was not there and you had launched the satellite in a bigger orbit, it would have taken more time. It would have taken more time. Let's say 380 days. But Earth तो है ना. Sun is pulling it towards this direction. Earth is also pulling it towards this direction. Gravitational force increased. In the previous case, it had decreased. Here it has increased. What would happen? Time would reduce. Rather than 380 days, it may actually take lesser time. And there would be a point where it would take exactly 365 days. And that point will always remain behind Earth. Sunlight will never reach it. When Earth would come here, it would be here. When Earth would come here, it would be here. When Earth would come here, it would be here. This is Lagrangian point. This was L1. This is L2. समझ में आ रहा है ऑर्बिट्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हम L2 के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन विल चाइना के कुछ मिशंस को पढ़ेंगे, तब L2 पढ़ेंगे. जब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पढ़ेंगे तब L2 पढ़ेंगे. बट आज हमें L1 समझना है. बट बिफोर दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड लैग्रेंजियन पॉइंट्स. एक और चीज बताओ मुझे, ये अर्थ का ऑर्बिट है. फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. L1 L2 तो वी अंडरस्टैंड, बट सन, अर्थ, ये अर्थ का ऑर्बिट है. सपोज अर्थ के ऑर्बिट पे यहाँ पे आप एक दूसरा सैटेलाइट डाल दो. हाउ मच टाइम विल इट टेक? सेम 365 days. दिस इज L3. दिस इज L3. L1 पे, L2 पे, L3 पे आप डालो सैटेलाइट कोई भी, it will always remain with respect to sun and earth, they would remain at the same position. ऐसे ही दो पॉइंट्स और होते हैं L4 and L5. 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे have this L4 and L5. These are 5 Lagrangian points. If you place something here, they would remain in sync with the sun-earth system or any two-body system. Sun and Earth were two bodies, two large bodies that we spoke about. Earth और Moon का भी एक सिस्टम होगा. तो Earth Moon के सिस्टम में भी Lagrangian point 1, Lagrangian point 2, Lagrangian point 3, 4, 5 होगा. राइट? जुपिटर का भी एक सिस्टम होगा. जुपिटर सन का भी एक सिस्टम होगा. वहां पे भी Lagrangian point 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Did we understand what Lagrangian points are? पिक्चर एकदम क्लियर है, पर पिक्चर अभी बाकी है. पर बाकी की पिक्चर अभी नहीं बताते, वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, धीरे धीरे बताएंगे.
अब देखो बिना आपको ऑर्बिट समझाए हुए जब मैं लैग्रेंजियन पॉइंट समझाने लग जाता इतनी फील नहीं आ पाती। अभी यू कैन इमेजिन इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। यस, ग्रेविटी, रिजल्टेंट ग्रेविटी नहीं तो क्या है ना, ग्रेविटी एक साइड कहां लग रही है, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे इसकी भी ग्रेविटी लग रही है, ये इसको इस तरफ खींच रही है, मतलब इस, एक मिनट रुको, इस, अच्छा इस वाले की, हाँ हाँ हाँ, तो सन, अरे अर्थ इतनी दूर है और इतना छोटा है ना, उसकी ग्रेविटी का इतना इन्फ्लुएंस होता नहीं है। अर्थ इतना दूर, ऐसे समझो, तो एक मिनट, रुको, ये अर्थ है, इसके अराउंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट डाला हुआ है आपने, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। अब इसी ऑर्बिट पे दूसरा सैटेलाइट जाता है तो क्या दूसरे सैटेलाइट की ग्रेविटी से इंपैक्ट होता है? इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत कम है। तो जियो स्टेशनरी मतलब 35786 किलोमीटर पे आप जितने भी सैटेलाइट्स डाल रहे हो, ऑल ऑफ देम आर टेकिंग 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, बिकॉज अर्थ ग्रेविटी इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इट्स सो फार अवे from other things that only Earth's gravity, it's so far away, plus the other thing is so small that its influence is not that much. अरे L2 point of picture, एक मिनट रुको, हाँ L2 पे बैलेंसिंग, क्या बैलेंसिंग चाहिए आपको? काउंटर क्यों करना है? किस चीज, क्यों बैलेंस, क्या बैलेंस करना है? ग्रेविटी से, अरे आपकी रस्सी आपको इधर खींच रही है, आपको घूमना है, अब ज्यादा खींच रही है, ज्यादा तेज खींच रही है तो ज्यादा तेज घूमोगे, यही तो रूल था। अब दोनों मिलके आपको एक तरफ खींच रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा तेज घूम रहे हो। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ यू वुड हैव टेकन 380 days, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ यू आर टेकिंग 365 days। You can find a point जहां पे it would be taking exactly the same time. Are we getting it? L1, L2, L3, L4, the 5 Lagrangian points. Okay, now थोड़ा सा Lagrangian points के बारे में पढ़ लेते हैं before we jump on to Aditya L1. Lagrangian points mark position where the combined gravitational pull of two large masses provide precisely the centripetal force required to orbit with them, with both of them. These are Lagrangian points. Combined gravitational force of the two large masses act in such a way that at that point any satellite will be revolving with them. That is Lagrangian points. Now, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी वाले में जाना है क्या? चलो एक चीज मैं बता देता हूं, उसके रीजंस में भी नहीं जाएंगे, मतलब वो बहुत मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझाना, बट एक और चीज समझो, क्या समझना है? L1, L2, L3 आर अनस्टेबल पॉइंट्स एंड L4 एंड L5 आर स्टेबल पॉइंट्स। पहले अनस्टेबल स्टेबल में व्हाट डू वी मीन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखो लेट्स से एक वैली है, एक हिल है, सपोज एक बॉल को आप लेके यहां रखते हो, यहां पे थोड़ा सा भी इसे डिस्टर्ब करोगे, विल द बॉल गेट अवे? दिस इज अ अनस्टेबल पॉइंट। वेरएस आप एक बॉल को यहां रख दो, इसे आप थोड़ा पुश भी करोगे, इट विल कम बैक टू स्टेबल पॉइंट। तो L1, L2, L3 आर अनस्टेबल वंस, L4 एंड L5 आर स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स। अब स्टेबल अनस्टेबल समझ लो, उसके ना डिटेल में नहीं जाते, वरना बहुत हम मैथमेटिक्स की क्लास बना देंगे, इसकी ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की क्लास, उन सब में अभी नहीं जाते हैं, ठीक है? उसके इंप्लीकेशंस हमें समझ में आएंगे टुमारो व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। व्हाई ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कुड एग्जिस्ट ऑन L4 and L5? बिकॉज दे आर स्टेबल। व्हाई ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कुड नॉट एग्जिस्ट एट L1, L2, L3? बिकॉज वहां पे अनस्टेबल है, आप थोड़ा भी उसे पुश करोगे इट विल गो अवे। ओके, ये बात समझ में, बस इतना ये याद रख सकते हैं, L1, L2, L3 आर स्टेबल, अनस्टेबल, L4 and L5 आर स्टेबल।
Now let's come back to, now let's go to Aditya L1. Aditya L1 has been launched recently. अभी तो it's important, it's a very very important topic. जैसे देखो last year Chandrayaan was launched. In the mains examination they asked Chandrayaan. उससे पहले James Webb Space Telescope was in news. In the mains examination they asked James Webb Space Telescope. ऐसे ही Aditya L1 is such a visionary big program that ISRO has launched that it's very relevant for both your preliminary as well as mains examination. देखो हम पढ़ाई तो preliminary examination के लिए कर रहे हैं अभी because it's prelims masters program, but a lot of things that you study here will be relevant for mains examination. Sometimes there are areas which we don't touch in mains examination, but वो पूछ लेते हैं और बच्चे उसे आंसर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. इस बार कुछ इंटरनेशनल बॉडीज पे सवाल आए जो हम प्रिलिम्स के टाइम पढ़ाते हैं. शायद इंटरनेशनल मैरिटाइम, ये मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ सवाल थे, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन वाले, यूएन क्लॉज पे आया था. हाँ, तो ये सारी चीजें ना हम प्रिलिम्स अभी आपको इंटरनेशनल बॉडीज में पढ़ाऊंगा. इंटरनेशनल बॉडीज हम बहुत एग्जॉस्टिवली करते हैं, बट मेंस के टाइम ना हमें हमेशा आरओआई देखना होता है, कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा कवरेज. मेंस के टाइम वी कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग. प्रिलिम्स में भी स्टडी, क्योंकि एक बार रीड कर लो ना, एग्जाम में आएगा ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा. इसलिए प्रिलिम्स का प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी वाइड, वेयरएज मेंस का प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, सिलेबस वाइज जा जाके. बट समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे वाले भी आ जाते हैं जो फैक्चुअल वाले होंगे. तो हाउ आर स्टूडेंट्स एबल टू आंसर इट? because they had studied it very well at the time of preliminary examination and they have not even revised it, but still अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होता है ना तो you are able to recall it and able to write average answer. बाकी सारी चीजें prepared हैं, उसमें above average answer लिखेंगे, यहाँ पे at least average answer हम लिख पाएंगे. Okay, so let's come back to Aditya L1. What is the idea of Aditya L1? Rather than observing sun from around Earth, let us send a satellite to L1. वो हमेशा सन को देखता रहेगा और पढ़ता रहेगा. ISRO has recently launched a mission, Aditya L1. It is India's first observatory class space-based solar mission. सन को स्टडी करने के लिए पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन. It was launched in September 2023. It has a mission of life of 5 years during which its payload will study various aspects of sun, and अभी it is moving towards what? It is moving towards L1. पहले से अर्थ के अराउंड लॉन्च किया गया, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में लॉन्च किया गया. लेट मी bring you here. See, here we launched it around Earth in an orbit. फिर क्या हुआ? This Aditya L1 has some engines on it, some fuel on it. तो ये जब अपनी पेरिजी पे आया, इसने अपना स्पीड थोड़ा और बढ़ा लिया. इट वेंट टू अ बिगर ऑर्बिट, बिगर एलिप्टिकल ऑर्बिट. अब ये बिगर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है. देन वो पेरिजी पे आया, उसने थोड़ा और फोर्स लगाया. देन इट फर्दर वेंट टू अ बिगर ऑर्बिट. समझ में आ रहा है? ऑर्बिट, वाई ऑर्बिट्स आर क्रूशियल. यू इंक्रीज द स्पीड, यू विल गो टू अ बिगर ऑर्बिट. यू इंक्रीज द स्पीड, you go to a bigger orbit. So when you are in a bigger orbit, it means you are more away from Earth's gravity. और उस टाइम जब आप बड़े और भी बड़े ऑर्बिट में चले जाते हो ना, तब you try to go out of Earth's gravitational influence. So it has gone out of Earth's gravitational influence. It will travel 1.5 million kilometers. 1.5 million is 15 lakh kilometers. How far is Moon? 3.8 lakh million kilometers. उससे roughly 4-5 times ज़्यादा दूर ये जाएगा. There we have the point L1. How far is Sun from Earth? 150 million kilometers या 15 million kilometers, कुछ वैसा है. अर्थ से सन कितना दूर है यार? Sun's distance, हाँ 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर. एंड इट्स 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, मतलब सिर्फ 90, अभी भी अर्थ सन 99% दूर है. इट्स ओनली 1% अवे फ्रॉम अर्थ. इट्स ओनली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे L1. एंड हाउ फार इज सन? 150 मिलियन किलोमीटर. How far is Sun? 150 million kilometers.
So it was launched in the smaller orbit, it increased its speed, went to bigger orbit, increased its speed further bigger orbit, increased its speed further bigger orbit, and when it was in the largest orbit that it wanted to go, it was pretty away from Earth's gravity, it moved into a path which was taking it away from Earth's gravitational influence. Then it came to L1 and has been revolving around. It will be reaching L1 and will be revolving around. Are we understanding this? Now, तो आदित्य L1 क्या है समझ में आया? Why study from space? Do we understand why study sun from space? सन को स्पेस से स्टडी करेंगे तो सन का देखो a lot of radiation from sun is not able to reach earth, so it's important to study it from space. But when we study it from only around earth, then half of the time we'll not be able to study it, so it's better to study it from L1, which will always be facing sun, which will always be facing sun. What trajectory Aditya L1 took वो हमने समझाया. Now ये है हाउ विल आदित्य L1 रीच द लैग्रेंजियन पॉइंट. पहले PSLV ने आदित्य L1 को इसे ऑर्बिट अराउंड अर्थ लॉन्च किया. इट विल स्टे इन दिस ऑर्बिट अराउंड अर्थ फॉर 16 days, ड्यूरिंग विच इट अंडरवेंट 5 मैन्यूवर्स टू गेन necessary velocity for longer journey. Bigger orbit for longer journey. Then it underwent a trans-Lagrangian 1 insertion maneuver, marking the beginning of its 110-day trajectory to the destination around the L1. All these maneuvers are performed using liquid apogee motor engine carried by Aditya L1. So Aditya L1 is also carrying an engine using which it is doing this maneuverability. What are science objective of Aditya L1? Aditya L1 क्या करना चाह रहा है? First, it wants to understand coronal heating and solar wind acceleration. So in tomorrow's class, we'll study a topic on the structure of sun. सन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके 3 तो इंटीरियर लेयर्स हैं और 3 एक्सटर्नल लेयर्स हैं. उसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड कोरोना, एंड इट इज देयर इवन इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन. एटमॉस्फेयर का जो उसका आउटर मोस्ट लेयर है वहां मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. इनफैक्ट सन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, सन के कोर में 15 मिलियन डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो पाते हैं. बट आप कोर से जैसे दूर जाते हो टेम्परेचर रिड्यूसेस, फिर उसके सरफेस से आप एटमॉस्फेयर में आओगे टेम्परेचर रिड्यूसेस, बट देन टेम्परेचर स्टार्ट्स गोइंग अप. एज विल मूव अवे फ्रॉम सन टेम्परेचर स्टार्ट्स गोइंग अप. कल हम इसके बारे में बात करेंगे. तो उसका जो कोरोनल लेयर है, बाहर वाला लेयर है, उसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करी गई है, यहां तक कोरोना है. स्टडिंग दैट बिकॉज सोलर फ्लेयर्स आर जनरेटेड देयर, because at millions of degree Celsius, what happens? A lot of mass, it converts into plasma, and that plasma is released all around sun, and that plasma comes towards earth also. That is solar flare. So we want to study coronal heating and solar wind acceleration and how solar winds are generated and they come towards earth. sun को study करने का purpose यही होगा. तो one objective is this. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन. कोरोना से जो ये प्लाज्मा का मास इजेक्ट हो रहा है, हाउ डज दैट हैपन, व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस, एंड उससे पहले या बाद का क्या सिनेरियो होता है. दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, टू अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी. तो बेसिकली सन के बारे में, सोलर फ्लेयर्स, हाउ सोलर फ्लेयर्स आर इम्पैक्टेड बाय वेरियस थिंग्स हैपनिंग इन सन, ऑल दोज थिंग्स they want to understand, they want to cover here. Okay, now Aditya L1 has gone with 7 payloads, जैसे visible emission line coronagraph, solar ultraviolet imaging telescope, solar low energy X-ray spectroscopy, high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, Aditya solar particle experimenter, plasma analyzer package for Aditya, advanced triaxial high resolution digital magnetometers. इन सबको ना बहुत याद नहीं रखना है, just look at their name and you will understand. For example, look at this. Visible emission line coronagraph. It can peak as close as 1.05 solar radii, a region never imaged by any solar telescope. So, visible emission line coronagraph will be acting like a telescope जो ना सन के बहुत क्लोज तक, सन का जो रेडियस है
उसके 1.05 सोलर 1.05 टाइम्स तक सन को पेनिट्रेट करके देख पाएगा. इट विल नॉट फिजिकली गो देयर बट विल बी एबल टू स्टडी इट देयर. देन सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इट विल ऑब्जर्व यूवी रेडिएशंस फ्रॉम डिफरेंट जोन्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर एंड वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से यूवी रेडिएशन एमर्ज हो रहे हैं, कैसे वो डैमेजिंग हो सकते हैं. सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इट विल बी स्टडिंग एक्सरेज being emitted by sun. High energy L1 orbiting X-ray spectrometer, Aditya solar particle experiment, plasma analyzer package for Aditya and advanced triaxial resolution. ये वाली जो चीज है EFG वाली, आदित्य सोलर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राइक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये सब चीजें क्या करेंगी, आदित्य L1 के पास तक जो उनका सोलर पार्टिकल पहुंच रहा है, जो उनका प्लाज्मा पहुंच रहा है, उसको स्टडी करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ EF&G साइंटिस्ट कैन प्रेडिक्ट प्रोबेबल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड बेटर अंडरस्टैंड स्पेस वेदर डायनामिक्स. These are the broad functions that they have for which Aditya L1 has been launched. I hope we have slight clarity over what's going on here. Why Aditya L1, Lagrangian points, the stable ones, the unstable ones, ये सारी चीजें clear हैं. Aditya L1 is properly understood. Okay, great. हाँ, कुछ हम ना ये ऊपर से देख रहे हैं, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है इन चीजों में. अब थोड़े फैक्चुअल चीजें फटाफट हो जाएंगी समझने वाली. जैसे L1 हमें समझना पड़ता है, L2 हमें समझना पड़ता है. इट टेक्स टाइम, अदरवाइज दीज थिंग्स आर सिंपलर. प्रोजेक्ट नेत्र. प्रोजेक्ट नेत्र, नेत्र का मतलब क्या होता है, आंखें, है ना. प्रोजेक्ट नेत्र इज एन इनिशिएटिव बाय ISRO वेयर वी विल बी लुकिंग एट our satellites and preventing any accidents. So it will act as early warning system. हमारा सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट में उसके पाथ में क्या चीजें आ सकती हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं या डैमेजेस हो सकते हैं. अर्ली वार्निंग सिस्टम है प्रोजेक्ट नेत्र, जिसके थ्रू विल बी टेलिंग आवर सैटेलाइट्स कि आप थोड़ा मैन्यूवर कर लो, आप थोड़ा स्लो होके साइड से निकल लो, इस तरह की चीजें. प्रोजेक्ट नेत्र इज फॉर दैट पर्पस. तो ये अर्थ बेस्ड सिस्टम रहेगा वेयर यू विल सी मेनी ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज, कनेक्टेड रडार्स, टेलीस्कोप्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंट्रोल सेंटर्स एक्सेट्रा वुड बी क्रिएटेड. राइट नाउ वी आर डूइंग इट फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट को अभी ऑब्जर्व करना आसान है, बट इन लॉन्ग टर्म वी वुड डू इट फॉर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऑल्सो. तो क्या बिफोर प्रोजेक्ट नेत्र डोंट वी हैव दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम? वी हैव दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम, बट वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ US NORAD, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है ना, उसकी हेल्प लेके हम ये अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं अपने सैटेलाइट्स को. बट थ्रू प्रोजेक्ट नेत्र वी आर ट्राइंग टू मेक आवर ओन सिस्टम. क्लियर, इजी? क्या आर ऑल ऑफ अस एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके. मिशन शक्ति. अब मिशन शक्ति ने देखो 2019 में लॉन्च हुआ था, तो इसलिए आई डू नॉट वांट टू गो इन इट्स डिटेल्स, बट आई स्टिल वांट टू कवर इट. व्हाट इज मिशन शक्ति? इट इज इंडियाज एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम. आइडिया क्या है? सपोज टुमारो देखो, इंटरनेशनल लॉ सेज दैट आप स्पेस में वेपन्स नहीं रख सकते, आप स्पेस में वेपन्स नहीं रख सकते. बट आर एनिमीज, चाइना हैज दिस कैपेबिलिटी कि वो हमारे स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है. देखो, आवर सैटेलाइट्स मूव इन ऑर्बिट, तो वी नो एट व्हाट टाइम वेयर इट वुड बी, एंड चाइना हैड दिस कैपेबिलिटी कि वो मिसाइल लॉन्च करेगा और उस टाइम पे हमारा सैटेलाइट जब वहां पहुंच रहा होगा उसे हिट कर देगा. और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी हैवी मटेरियल उसके सामने बस ले जाके रख दो. इट्स मूविंग एट 25,000 किलोमीटर पर आवर. 25,000 किलोमीटर पर आवर पे कुछ मूव कर रहा है, बस इमेजिन 200 किलोमीटर पर आवर पे जब आपकी कार मूव कर रही होती है, वो जाके किसी पत्थर से टकरा जाए, तो नो मैटर विच कार यू आर इन, हाउ प्रोटेक्टेड दैट इज, व्हाट लगनी है. अब 200 की जगह 300 होगा तो 500, 1000, 2000, 20,000, 25,000. That's the speed at which our satellites are moving. So here India also tested this technology. इंडिया ने एक
सैटेलाइट को, टेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया, फिर एक मिसाइल से उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया। वो मिसाइल वाज नॉट कैरिंग एनी बॉम्ब और एनीथिंग, वी यूज द काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी, वेयर उसकी सैटेलाइट की स्पीड को ही हमने यूज किया, उसके सामने एक बैरियर क्रिएट किया, वो इसमें टकराया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो थ्रू दिस वी डेवलप्ड एंटी सैटेलाइट सिस्टम, इसे हम मिशन शक्ति बोलते हैं। We tested this in 2019, but we also did a number of other good things. What good things? When China had done this, when China had tested it, उन्होंने इतने डेब्रीज क्रिएट किए थे, मतलब मिलियंस ऑफ डेब्रीज क्रिएट कर दिए स्पेस में, तो छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में घूम रहे हैं, एंड दे कैन बी वेरी डैमेजिंग. India ensured that India's satellite, test satellite that had to be destroyed was in the low Earth orbit, even on the lower side. इनफैक्ट पता है जब ये लॉन्च हुआ था ना, जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, नो वन वाज अवेयर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सैटेलाइट लॉन्च, एंड आई एज अ टीचर आई वाज टीचिंग कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज फॉर रिकॉग्नाइजेंस पर्पसेस, बिकॉज क्लैरिटी दी नहीं गई है. पर फिर एक महीने बाद जब उसे डिस्ट्रॉय किया गया तो मैंने बोला अच्छा अब पता लगा किस लिए लॉन्च किया था. द सैटेलाइट वाज फॉर टेस्टिंग पर्पस ऑफ आवर एंटी सैटेलाइट सिस्टम. डू वी अंडरस्टैंड व्हाट मिशन शक्ति इज? क्लियर? मिशन शक्ति, ओके. देन गगनयान. गगनयान क्या प्रोग्राम है? गगनयान में जैसे 2018 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड दैट बाय 2022 इंडिया वुड बी सेंडिंग 2 ह्यूमंस टू स्पेस. By 2022 India would be sending 2 humans to space. This was Gaganyaan mission. Later some newspaper articles said Modi ji ने बोल दिया, but शायद he did not consult our scientists because they had plans, but they had some long-term plan because it would have taken some time. But still we have fast-tracked everything to achieve that goal. अब वो goal तो miss हो गया because of COVID and everything. वो goal miss हो गया, but we have fast-tracked everything and now we are in the process of sending humans to space. तो अब हाउ डू वी सेंड ह्यूमंस टू स्पेस? देखो उसके लिए बहुत सारी चीज. अभी तक हम रॉकेट में सैटेलाइट डाल के सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजते थे. यहां पे हमें सैटेलाइट को हैबिटेबल बनाना पड़ेगा, रॉकेट को ह्यूमन कंडीशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ेगा, स्पेस में जो क्लोथ्स पहनते हैं वो ड्रेस वो करना पड़ेगा, देन ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को. इस स्पेस में जस्ट नो वन कैन गो इन जीरो ग्रेविटी. यू हैव टू योर बॉडी फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे, तो यू हैव टू गेट ट्रेन. तो लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड टू दैट हैज बीन गोइंग ऑन. आइडिया इज बिफोर सेंडिंग ह्यूमंस टू स्पेस वी विल फर्स्ट सेंड 2 रोबोटिक मिशन. उसके लिए हमने एक रोबोट भी बनाया व्योम मित्र, विच विल बी लाइक पहले जब रोबोटिक मिशन जाएगा तो व्योम मित्र पे बहुत सारे सेंसर्स होंगे विच विल बी मेजरिंग व्हाट इज द टेम्परेचर, प्रेशर and other situations which humans are going to face in the final stage. तो अभी अब वो रोबोटिक मिशन भी नहीं जा पाया है अभी तक, तो let's see what happens. बट गगनयान पे बहुत सारा काम चल रहा है. ओके, गगनयान is about sending humans to space. India plans to send humans to space. हम अभी अपने आप से humans को स्पेस में नहीं भेज पाए हैं. ओके, एक्सपोसैट तो अभी न्यूज में भी था. अभी देखना कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा, ये शायद इसी मंथ में दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगा. एक्सपोसैट, एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट. नाउ बिफोर वी गो इनटू एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट, टेल मी व्हाट इज पोलराइजेशन. वो पोलराइजेशन नहीं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, वो पोलराइजेशन नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन? कोई तो बताओ. अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज कर दो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? पहले लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दीस. इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर में ये अंदर
परपेंडिकुलर अंदर बाहर जा रहे हैं तो ना आपसे कंफ्यूज मत करना। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हेन लाइट इज बीइंग एमिटेड, ये एलईडीज है, इससे लाइट एमिट हो रही है, राइट। अब देखो जनरली पोलराइजेशन में क्या बोला जाता है कि एक वेव का पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या है, हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पोलराइजेशन का डायरेक्शन है एक वेव का। बट इन रियलिटी यहाँ से मिलियंस ऑफ वेव्स आर कमिंग, वेयर एक वेव का पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में है, एक वेव का पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में, एक वेव का किसी और डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या है, जीरो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वेव, दिस सिंगल वेव इज पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन। कोई दूसरा वेव आ रहा होगा, इट इज पोलराइज्ड इन सम अदर एंगल, थर्ड वेव इज पोलराइज्ड इन सम अदर एंगल एंड सो ऑन। So resultant, if we'll take this millions of waves which are being released by this light, its polarization is zero, right? Its polarization is zero. But sometimes from when light is being emitted or when electromagnetic waves is being emitted by far away sources, celestial bodies, हम उनकी पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं। पोलैरिमेट्री इज स्टडिंग द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम देम। और यहाँ पे एक्सरे पोलैरिमेट्री में तो स्टडिंग द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज कमिंग फ्रॉम दोस सोर्सेस। वी कैन फाइंड अ पैटर्न कि सम ऑफ देम आर पोलराइज्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अदर वेव्स आर पोलराइज्ड इन अदर डायरेक्शन। इससे वी कैन अंडरस्टैंड दोज बॉडीज इन अ बेटर वे। So first of all, did you understand what is polarization? In general, when light is being emitted like this, polarization level is zero. Polarization का situation is zero. But what we want to do is through X-ray polarimetry satellite, XPOSAT. Polarimetry, metry is measurement, polarization का measurement, X-ray के polarization का measurement from faraway sources. Through that measurement, through the measurement of that polarization, we want to study the nature of those faraway sources. XPOSAT has been designed for that purpose. XPOSAT has been designed for that purpose, and India is set to launch its first X-ray polarimetry or polarimeter satellite. अभी न्यूज में था ये, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में जनवरी में कभी ये लॉन्च हो जाएगा। X-ray polarimetry satellite is going to get launched soon. So what will it do? It will be a specialized science mission that will study the polarization of X-rays in space. The mechanization of polarization of radiation gives away the nature of its source. कितना polarization है, किस direction में polarization है, उससे we can understand the nature of the source of the X-ray. So it will consist of two main payloads or two main instruments. One is a POLIX, polarimetry instrument of X-ray. It will measure the polarimetry parameters, degree and angle of polarization of these X-rays, and other thing that it will carry is X-SPECT, which will measure, it will give spectroscopic information in the energy range of 0.8 to 15 kilo electron volt keV. Now, एक और चीज हमें समझना है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे देर आर पोलराइजेशन, एक्सरे पोलराइजेशन पढ़ने के लिए इनिशिएटिव। जैसे नासा का एक इनिशिएटिव है इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री दैट वाज लॉन्च्ड इन 2021, बट एक्सपोसैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट एंड इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू दैट, क्योंकि जो ये नासा वाला मिशन है इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री, इट इज मेजरिंग थिंग्स इन द रेंज ऑफ 2 to 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, whereas it is measuring polarization in the range of 8 to 30 kilo electron volt. So what is happening together, ये 2 से 30 तक 2 to 30 पूरा measurement effectively कर पाएंगे, and that's why they are complementing each other and thus would be beneficial for both ISRO as well as NASA to get a clearer picture. XPOSAT, अभी you would see before you will attempt your preliminary examination paper, this XPOSAT most probably would be done by then. I'm not very sure. I have been teaching Aditya L1 right from the time I started teaching.
मैं 2017 में पढ़ाना शुरू किया था, तब से मैं आदित्य L1 पढ़ा रहा था कि बस अगले साल लॉन्च हो रहा है, बस अगले साल लॉन्च हो रहा है। वो 2023 में आके लॉन्च हुआ है। तो बट एक्सपो सैट के केस में एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। ओके, नाउ ये भी बहुत टाइम से चल रहा है। एवरी ईयर आई से बस नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल radar is a mechanism, is a way of looking at things, is a way of observing things in space, जहां पे आप रेडियो वेव्स यूज करके दूसरी चीजों को, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करके हम अमन को देख पा रहे थे, ऐसी रेडियो वेव्स यूज करके रडार के थ्रू यू विल बी एबल टू सी थिंग्स। नाउ नासा एंड इसरो आर प्लानिंग टू सेंड दिस निसार, this synthetic aperture radar, in low earth orbit as a low earth observatory to map entire globe in 12 days and provide spatially and temporally consistent data for understanding changes in earth's ecosystem, ice mass, vegetation, biomass, sea level rise, groundwater and natural hazards including earthquake, tsunami, volcano, etc. So it will be studying, it will be kind of earth observation system. But this NISAR will have two synthetic aperture radar, एक L और एक S band का. The L band वाला thing will be, if you come here, L band वाला radar is being developed by NASA and S band वाला radar is being developed by ISRO. Now this satellite will be launched from India using GSLV Mark II. तो जब in 2021 GSLV Mark II का एक failure हुआ था, so everyone was worried कि what would happen to NISAR, because NISAR is going to be a very expensive project. More than $1 billion would be spent in this project. But now अभी हमने देखा GSLV Mark II दोबारा से सक्सेसफुल हुआ है in launching NVS, remember NVS 01, वो GSLV Mark II यूज करके लॉन्च किया था, तो वो थ्रेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. Now it is being said that this synthetic aperture radar is expected to be launched in January 2024. अब देखते हैं, राइट, ये भी ऑलमोस्ट न्यूज में है. तो बिफोर यू राइट योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वी मे नीड टू स्टडी ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट. अभी हमने सुपरफिशियली पढ़ा है, बट ऐसा हो सकता है कि वो लॉन्च हो जाएगा तो हम इसके, जैसे अपन ने आदित्य L1 के बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े, उनके पेलोड के बारे में पढ़ा, वैसे वी मे नीड टू स्टडी दिस ऑल्सो. ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ ये इंटरप्लेनेटरी मिशन छोटे छोटे हैं, फटाफट कर लेंगे. क्या कुछ नहीं ना, ब्रेक तो नहीं चाहिए? चाहिए. क्या करोगे ब्रेक में? घूमेंगे. घूम के क्या मिलेगा? वो चांद घूम रहा है अर्थ के अराउंड, कुछ मिला? हम घूम रहे हैं सूरज के अराउंड, कुछ मिला? सिलेबस बढ़ा दिया बस, तो घूम के कुछ नहीं मिल रहा है. चलिए, इंटरप्लेनेटरी मिशंस, ये नासा नहीं है, इसरोज है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा. इसरोज इंटरप्लेनेटरी मिशन. कहाँ जा रहे हैं सेंट स्टीफन स्कूल? वॉशरूम जाओ, रुके क्यों हो भाई? यह वहां रुकना नहीं चाहिए, जाओ. सर कैन यू प्लीज रिपीट द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन? एक बार वीडियो दोबारा देख लो, वो जहां पढ़ाया है वो पीछे जाके देख सकते हो ना. नहीं समझ में आएगा तो आई एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो. अभी हम आगे थोड़ा सा इसे खत्म करना है, कर देंगे. सब वारन में रहते हो ना? तुम्हें जानता, सबसे पहले तुम नहीं तुम बोलोगे, और ये वारन में नहीं, एक करोल बाग में रहता होगा. पटेल नगर ही रहते हो ना? मेट्रो चलती है 11 बजे तक. बाइक लेके आया है. नाम क्या है आपका? राहुल. बहुत बदमाश है राहुल. है तो आप कहाँ रहते हो? तो आप नोएडा की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, नोएडा की आप बात कर रहे हो. चलो आपके लिए कैब बुक कर देंगे. और बोलो, और किसी को दिक्कत कोई नहीं ना? आपको दिक्कत कोई नहीं?
बाकी सब ओआरएन में रहते हो, पढ़ते हैं फिर। कहाँ रहते हो? मिडल ईस्ट। अबे तो मिडल ईस्ट क्या क्या बोल रही है? अच्छा उत्तम नगर ईस्ट, मिडल ईस्ट। और सेंट स्टीफेंस कहाँ रहते हैं? हाँ जी सर, नहीं कहाँ रहते हो आप? इतनी दूर से आ रहे हैं बच्चे? हाँ 1 घंटा दूर तो क्या ही होता है। तो मेट्रो में सो जाना, कैब में सो जाना। मेट्रो में सोना सेफ नहीं है, कैब में सोना सेफ नहीं है। पता नहीं यार, मैं तो पिछले 1 साल में ना मैं 2 बार मूवीज देखने गया हूँ। एक बार मैं गया था केजीएफ देखने 2, और अभी एक बार गया था वो सैम बहादुर नहीं केजीएफ तो मेरा भाई ले गया था, मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता है वो। मैं रात भर जगा हूँ, दिन भर मैंने क्लास ली है, एकदम थकी हालत में मैं गया। भाई बोलता है भैया बहुत बोर हो रहे, मूवी चले क्या? मैं कहा चल। उसे KGF 1 बहुत पसंद आई थी, वो ले गया। मैं पूरी मूवी में सोया। मैं पहले 15 मिनट मूवी देखी, फिर इंटरवल में जब लाइट वाइट ऑन होती है तो मैं उठा, फिर दोबारा सो गया। सेम थिंग हैपेंड अभी इन सैम बहादुर। ये तो इसमें तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे देखनी है मुझे देखनी है। बस 15 मिनट लगे, मस्त हो गया मैं। अरे अच्छी होगी भाई, मैं मेरे को मौका चाहिए सोने का, जहां बोलोगे मैं तो। सोना इज ओके, सो जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हें परेशान करेंगे कैब वाले? नहीं। चेन उतरवानी पड़ेगी। चेन वेन क्यों पहनते हो भाई? घर वालों ने पहना रखी है। अच्छा, अब ये पैसे वाले लोगों की अपनी दुख है ना। इंटरप्लेनेटरी मिशन चलाते हैं। इंटरप्लेनेटरी मिशन अर्थ से दूर वाले मिशन। अभी तक अपन ने जो मिशंस देखे वो दोज वर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड एवरीथिंग, है ना। एक अपना L1 गया है, बट L1 भी सन अर्थ सिस्टम वाले पार्ट में ही था। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दोज मिशंस वेयर the satellite or the spacecraft is going into the gravitational influence of other celestial body. Okay, now please note something कि gravitational influence of other celestial body का मतलब है दूसरे बॉडी का इन्फ्लुएंस बहुत नेग्लिजिबल हो गया है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे नहीं लग रहा होगा। GMM/r² इज यूनिवर्सली वैलिड। तो आप जो नोएडा में रहते, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल निखिल जो है, निखिल तो यार बड़ा, निखिल का मजाक उड़ाने का मन नहीं करता है ना। सर हो गए निखिल से, इसको कोई निक नेम दे देते, निक्की। निक्की 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 है ना, निक्की है। निक्की वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। वी आर स्टिल हैविंग सम ग्रेविटेशनल फोर्स GMM/r²। इतना नेग्लिजिबल है वो जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है ना, वो इतना छोटा होता है कि ओवरऑल दिस फोर्स इज वेरी नेग्लिजिबल, बट देयर इज स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी निकी पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा हावी किसका है? अर्थ का। अर्थ इज सो लार्ज, उसका मास इज सो लार्ज दैट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का सबसे ज्यादा लग रहा है। वो थोड़ा उछलेगा, अर्थ विल पुल इट बैक। वो थोड़ा मेरी तरफ कूदेगा, आई विल नॉट बी एबल टू पुल हिम। राइट, ये बात समझ में आ रही है? तो इवन व्हेन मार्स ऑर्बिटर मिशन में मार्स इज रिवॉल्विंग अराउंड, सॉरी MOM इज रिवॉल्विंग अराउंड मार्स, उसमें भी अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, बट वो नेग्लिजिबल। तो कमिंग बैक टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्लेनेटरी मिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज मिशंस जहां पे spacecraft has moved away from Earth and is in the gravitational influence of other celestial body. So here we'll talk about Mars orbiter mission. Here we'll talk about Chandrayaan. Here we'll talk about Chandrayaan 1, 2 and 3. With Chandrayaan 3 हम क्लास Chandrayaan 3 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले MOM वगैरह हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन जनरल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस दैट इंडिया हैज अचीव्ड. We should have an idea about it. So MOM, also called Mangalyaan, is spacecraft which is orbiting Mars since 24th September 2014. It was launched on PSLV on 5th of November 2013. It is India's first interplanetary mission, and ISRO has become the 4th space agency
to reach Mars after USSR, NASA and European Space Agency. And ISRO also became the first Asian nation to reach there in the very first attempt. Now, what is it doing? Mars के around, Mars Orbiter mission is orbiting around Mars. जैसे अपना Chandrayaan 1 था, Chandrayaan 1 was also an orbiter mission. It was orbiting around Moon. Chandrayaan 1 was orbiting around Moon. Chandrayaan 2 was a orbiter कम लैंडर मिशन. उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लैंडर फेल्ड. तो मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज अ ऑर्बिटर मिशन. जनरली ऑर्बिटर मिशन क्या होते हैं? दे आर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, जिसमें हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वी कैन रीच देयर, वी कैन ऑर्बिट दैट. बट while demonstrating technology also we perform certain activities. कौन सी activities? जैसे it has been looking for signs of atmospheric methane. While we are Mars orbiter mission में Mars is MOM is revolving around Mars, वो उसके atmosphere में is looking for methane. Why methane? Because methane is a biomarker. Methane is generally produced from living organisms. तो past में भी अगर Mars पे life रहा है तो some methane may be there in its atmosphere. तो we are not saying कि मीथेन मिल जाएगा तो अभी लाइफ है वहां पे, और अगर पास्ट में भी रहा है तो some methane may be there, and that is what we are looking for. MOM is also exploring and observing Mars surface feature, morphology, mineralogy and Martian atmosphere. तो it's not only the atmospheric methane that we are looking for, we are also taking pictures of Mars surface and उसके बाकी components को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. We have a plan of MOM2 which is expected to be launched in the year 2024. It will consist of an orbiter and may also include a lander and rover. जैसे चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर के अलावा लैंडर और रोवर भी भेजे थे, यहाँ पे भी प्लान इज दैट विल बी सेंडिंग लैंडर एंड रोवर ऑल्सो इन MOM2. अब ये 2024 इस साल लिखा हुआ है, अगले साल वो नहीं होगा तो 2025 लिख देंगे. It would go on like that. But I hope we have clarity over what Mars orbiter mission was. कब लॉन्च हुआ, कहाँ गया, इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है. शुक्रयान, वीनस. वीनस पे इसरो का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर क्या भेजना, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन भेजना विच विल बी ऑर्बिटिंग वीनस. एकता चौधरी इज आस्किंग सर वेरेबल डिवाइसेस का क्या मतलब होता है? बेटा वॉच पहन लिया आपने, है ना, स्मार्ट वॉच पहना है तो दैट्स अ वेरेबल डिवाइस. तो जीपीएस वहां भी यूज हो रहा होता है, तो ये शायद उसमें होगा कि कहाँ कहाँ जीपीएस का यूज हो सकता है या SAT-NAV सिस्टम का यूज हो सकता है. वेरेबल डिवाइसेस आर अदर सच थिंग्स जो SAT-NAV सिस्टम का यूज करते हैं. नाउ कम बैक टू शुक्रयान. तो शुक्रयान वीनस पे ऑर्बिटर मिशन भेजने का प्लान है, दैट इज शुक्रयान. ओके, अभी तक हम शुक्र पे नहीं गए हैं, अभी तक हम वीनस पे नहीं गए. वी हैव रीच्ड मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. तो वी हैव रीच्ड द अदर नेबर. इस साइड वाला नेबर पे अभी हम पहुंचे नहीं है, वी हैव नॉट ऑर्बिटिंग दैट. तो इसरो वाज एमिंग फॉर मिड 2023 बट नाउ पैंडेमिक रिलेटेड डिलेस हैव लेड टू द नेक्स्ट टारगेट टू बी December 2024. नाउ वी नीड दिस 19 month का गैप बिकॉज इट इज एवरी 19 month दैट मरकरी एंड अर्थ आर very close to each other, and we try to target launch time at that time so that when we are closest we reach there, and that's why अगर एक टारगेट मिस होता है तो we have to wait another 19 months. तो अगर हम December 2024 को भी मिस करेंगे तो we'll have to wait another 19 months, and that's why the delay. Okay. तो क्या मार्स पे, वीनस पे और भी मिशंस गए हैं पास्ट में? तो यस, dozens of missions have flown to Venus since 1960s, but only a few in recent years. जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस है, इट ऑर्बिटेड वीनस बिटवीन 2016 to 14. Japan's Akatsuki spacecraft entered orbit in 2015 after a previous unsuccessful attempt. Several aircraft are also performing flybys. Flybys, that is, they're going somewhere else, but they're taking help of Venus gravity or they're passing close to Venus to get some information. जैसे नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, यूरोप का बेपी कोलम्बो है विच इज गोइंग टू मरकरी. नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है इट इज गोइंग टू सन टू स्टडी सन. तो ये सब हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे. तो दे ऑल्सो फ्लू बाय वीनस. दीज आर सम प्रोजेक्ट विच हैव गॉन क्लोज टू वीनस. बट नाउ लेट्स कम टू चंद्रयान. चंद्रयान 1 क्या था?
ऑर्बिटर मिशन। अब देखो इन सारी चीजों में ना एक लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, अर्थ, मून, हाउ विल what is the path that our spacecraft take? जैसे चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया, what is the mechanism that we use to make Chandrayaan reach from Earth to Moon? What we do is, first our rocket will launch the satellite in an orbit around चंद्रयान 1 के केस में भी ये हुआ, 2 के केस में भी यही हुआ, 3 के केस में भी यही हुआ। A rocket took our Chandrayaan in this orbit. Now Chandrayaan has some engine, some fuel. What it will do, it will increase its speed and will go in this elliptical orbit, then in a bigger elliptical orbit, then in a bigger elliptical orbit. When it's in a far away orbit, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ज्यादा है, it will restart its engine and would move towards moon. When it go into moon's gravitational pull, it will go into a orbit around moon, and then it will keep slowing itself down to come to a smaller orbit, to come to a smaller orbit, and eventually go in a orbit around, small orbit around moon. This is the path that we take. Now we understand कैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो you will go to a larger orbit, कैसे आप स्पीड कम करोगे तो you will come to a smaller orbit. Do we understand that? That is the mechanism that has been used. Why a lot of emphasis on orbits? देखो आप Lagrangian point भी उससे समझ पा रहे हो, आप ये चीजें भी उससे समझ पा रहे हो. So before we understand how the orbits function and all, understanding all these things remain incomplete. We can understand it only because we understand the functioning of orbits, how speed and everything impact it. Now let's come back to Chandrayaan 1. तो Chandrayaan 1 क्या था? Chandrayaan 1 was launched in 2008. The spacecraft was orbiting the moon at a height of 100 km from lunar surface. तो एक circular orbit में था around moon at a height of 100 kilometers, and it was doing chemical, meteorological, photogeological mapping of the moon. The spacecraft carried 11 scientific instruments built in India, US, UK, Germany, Sweden, Bulgaria, etc. So Chandrayaan 1 was India's first mission to moon. India was successful there, and in 2008 we had reached moon. Chandrayaan 2 2019 में launch हुआ. Chandrayaan 1 was a technology demonstrator orbiter mission. It orbited around moon. Chandrayaan 2 में we wanted to land on the surface of moon. While we took an orbiter also which will orbit the moon, but we also took a lander जो moon के surface पे land करेगा, and a rover which will move on the surface of moon. So these were the three components. It originally consisted of an orbiter, a lander and rover. Lander was called Vikram and rover was called Pragyan. Idea क्या था? It was India's first attempt to make a soft landing on the moon. देखो landing on the moon को तो क्या है, crash कर गए, वो भी landing होगा. Soft landing, controlled landing on the surface of moon, and it was a completely indigenous mission. इसमें क्या हुआ? In 2008, after we launched Chandrayaan, it was planned that within 2-3 years we'll be going for Chandrayaan 2.0. Chandrayaan 1 में we had taken help of Russia, but then some problems occurred and we had to go at our own. We had to go indigenously, and that's why Chandrayaan 2 was delayed. But Chandrayaan 2 is a completely indigenous मिशन. इसमें हमने कोई बाहर की हेल्प सपोर्ट नहीं ली. These are the three components: orbiter, lander, rover. Orbiter का वेट 2300 kg, लैंडर का वेट 1471 kg and रोवर का वेट 27 kg. Look at the weight, 23 plus 14, लगभग 4000 किलो हो गया. तो PSLV would not have been able to launch it. PSLV would not have been able to launch it. यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया? LVM-3, GSLV Mark 3, the GSLV Mark 3 M1, LVM M3 M1
was using this. तो अगर आप broad differences देखना चाहोगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 1 was not a completely indigenous mission, it's an indigenous mission. Chandrayaan 1 contained an impactor module which provided for cache. So it had an orbiter plus an impactor. Once the orbiter's life was over, it will impact on the surface of moon, and it did. It contained orbiter के अलावा lander and rover. Soft land on the surface of moon and then rover on the surface of moon. PSLV was used here in Chandrayaan 1, in Chandrayaan 2, GSLV Mark 3. उसका मिशन M1 was used. Now चंद्रयान 3.0 इस साल जो अपन ने लॉन्च किया, आइडिया सिमिलर ही है. क्या था? सेम पाथ विल टेक. लेट्स गो देयर. हाँ, कम है. सी, जुलाई 14 को चंद्रयान 3 was launched. जुलाई 15 से जुलाई 25 तक it kept on raising its orbit around us. It kept on raising its orbit around us. On August 1, ISRO has injected the spacecraft into translunar orbit. That is, अब वो मून की तरफ मूव होना शुरू किया अगस्त 1 को. अगस्त 5 को चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन द लूनर ऑर्बिट. लूनर के बड़े ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ. बाद में अगस्त 6 टू अगस्त 16 चंद्रयान 3 ऑर्बिट इज रिड्यूस ग्रेजुअली. पहले वो बड़े वाले ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ, देन विथ रिड्यूसिंग स्पीड इट्स ऑर्बिट वाज रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम 170 किलोमीटर into 4313 किलोमीटर, that is a large elliptical orbit, to 153 to 160 into 163 किलोमीटर, so roughly circular orbit. ये अभी भी elliptical है but very close to circular orbit. Its orbit was brought down to this level. ये बात समझ में आई? Are we all able to imagine what is happening? Launching the satellite, increasing its orbit, then taking it away from Earth's gravity, inserting it around moon, reducing its speed so that orbit keeps on reducing. This is something that happened here also. So, Chandrayaan 3 is the third moon mission of ISRO that was launched in July 2023. It perched on GSLV Mark 3. It is a follow-on mission of Chandrayaan 2, and it has demonstrated end-to-end capability in safe landing and roving on lunar surface. Chandrayaan 2 में we were not able to do that. Chandrayaan 3 में we have been able to do that. We have shown our capacity of safely landing on the surface of moon and then roving on the surface. With this, India has become the fourth country in the world after US, Russia and China to successfully land on the moon. We had become the fourth country to orbit Mars, if you remember. After US, Russia and European Space Agency, we have also become the fourth country to successfully land on the surface of moon. Here, European Space Agency has not done it. Who has done it? China has done it. The US, China and Russia have done it. We have become the fourth country to land. Understanding the different phases. पहले LVM-3 launched Chandrayaan 3 in an elliptical orbit. Chandrayaan 3 was launched on 14th of July. The whole process took 42 days with the landing taking place on August 23. What are the components of Chandrayaan 3 mission? Three components are there. It does not have an orbiter. What it has is propulsion module. Propulsion module will take it into the orbit around moon. Then it has lander module, which will land it on the surface of moon. And lander module के साथ it also has a rover, which will rove on the surface of moon. ये तीन components है. यहाँ पे orbiter नहीं है. Note it carefully, because the idea was not to remain orbiting around moon, because orbiter of Chandrayaan 2 is still functioning. It could provide all the functions that was needed. Okay, so let's come back to propulsion module. Propulsion module क्या है? The main function of PM is to carry the lander module from launch vehicle injection till final lunar 100 km circular orbit.
देखो अब समझो, लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन मतलब GSLV Mark 3 ने जहां पे अर्थ के अराउंड उसे छोड़ दिया, वहां से किसने रोल लिया? प्रोपल्शन मॉड्यूल ने. इट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल विच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द हाइट by increasing its speed. It is propulsion module which took it towards moon, then launched it in a orbit, large orbit around moon, and then smaller orbit, smaller. Who was doing everything? Propulsion module. That is the function of propulsion module. The propulsion module is also carrying spectropolarimetry of habitable planet Earth payload, shape payload. What was the purpose of shape? वो मून से अर्थ को स्टडी करता, मून से अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा. शेप वॉज फॉर दैट पर्पस. देन प्लीज नोट, लैंडर मॉड्यूल सेपरेटेड फ्रॉम प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑन August 17, 2023, and even after this propulsion module was left with a lot of fuel. That's a very important thing. लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो गया तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम खत्म हो गया, बट प्रोपल्शन मॉड्यूल हैड फंक्शन सो आइडियली, सो परफेक्टली. तो जो एक्स्ट्रा बफर फ्यूल लेके जाते हो ना कि कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, दैट वाज स्टिल लेफ्ट बिकॉज इन दिसंबर समथिंग हैज हैपेंड वेयर दैट फ्यूल वाज यूज्ड. अभी हम उसकी बात करेंगे. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस मिशन वाज सो परफेक्ट दैट एक्स्ट्रा फ्यूल was not completely used, it was left. That will be used in December. We'll understand what has happened in December. Then the lander Vikram had the capability of soft landing at the specified lunar site and deploy rover. It happened on 23rd August. It remained stationary on the surface and carried 4 payloads. Lander के payload आप देखोगे तो it was CHAST, Rambha, ILSA and LRA. CHAST, ILSA, रंभा एंड LRA. ये लैंडर के मॉड्यूल थे. लैंडर मूव नहीं करेगा, लैंडर स्टैटिक एक जगह रहेगा, वहां पे इसके 4 मॉड्यूल्स अपना अपना काम करेंगे. लुक एट द नेम केयरफुली. चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस. तो लैंडर हैज लैंडेड, उसका एक पेलोड है, वो मून के सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा है. देन इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी. मून में अर्थक्वेक नहीं, मूनक्वेक. इट विल बी मूनक्वेक. मूनक्वेक या सीज्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए. देन रंभा LP, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विद टाइम. तो जो वहां पे जो रेडिएशंस रिसीव हो रहे हैं, आयंस रिसीव हो रहे हैं मून के सरफेस पे, उनको स्टडी करना. एंड फाइनली लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे. व्हाट इज दिस? What is this laser retroreflector array? In future हम अर्थ से एक लेजर शूट करते हैं towards moon. This will be the retroreflector which will reflect it back. A passive laser retroreflector array from NASA is accommodated for lunar laser ranging studies. It acts as a target for lasers for very accurate measurement for future missions. ये 4 पेलोड किसके साथ गए हैं? लैंडर. एंड देन देयर इज रोवर प्रज्ञान. इट इज अ 6-wheeled रोबोटिक व्हीकल. इसका जो लाइफ है दैट वाज 1 लूनर डे और 14 अर्थ डे. पेलोड इट हैड लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर एंड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. व्हाइल मूविंग इट विल बी डूइंग स्टडीज रिलेटेड टू दीज एस्पेक्ट्स. ओके, तो मिशन ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3.0 का? एक तो डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड soft landing, we have been able to do that. Demonstrate rover roving on the moon, we have been able to do that. And to conduct in situ experiments, we have done that as well. A lot of things we had learned from Chandrayaan 2.0 which made us successful in Chandrayaan 3.0. जैसे एक था landing area. In Chandrayaan 2.0 case, we had identified a landing area of 500 meter into 500 meter. But this time we had identified a much bigger landing area, 4 km to 4.2 km. Similarly, lander has been provided with more fuel. पिछली बार लैंडर के पास जितना फ्यूल था उससे ज्यादा फ्यूल दिया गया है, so that even if it has to do some maneuvering while landing, it should be able to do that. Then lander will no longer be dependent only on pictures it clicked during the descent. तो चंद्रयान 2 के केस में क्या था? When lander was landing, it was clicking pictures. And on that basis, it was deciding whether it is landing at the right place or not, whether the place where it was landing was safe or not.
here we already had an orbiter functioning, it could already give us picture. Now in this case lander was taking pictures only to verify whether जो ऑर्बिटर ने ऑलरेडी उसे पिक्चर दे रखे हैं वो सेम है कि नहीं, वो सेम जगह पे लैंड कर रहा है कि नहीं. एंड देन फाइनली लैंडर का जो लेग्स थे, फिजिकल स्ट्रक्चर था, दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर, सो दैट इवन इफ इट लैंड्स अ बिट फास्टर इट विल बी एबल टू सर्वाइव. These were some things that we had learned from Chandrayaan 2.0 which made us successful here. So landing was the most complicated part here. Landing on moon was, अब देखो अर्थ पे landing is not that big an issue, but on moon it was a big issue. Why was landing a big issue on moon? Because moon पे ना एटमॉस्फेयर नहीं है. अब एटमॉस्फेयर होता तो हम क्या करते, पैराशूट खोल देते, पैराशूट खोलते और धीरे 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 नीचे उतर जाते. बट इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैनॉट यूज द पैराशूट काइंड ऑफ मैकेनिज्म. तो यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड ऑफ 6000 किलोमीटर पर आवर. जब लैंडर रिलीज हो रहा है किससे, ऑर्बिटर से, और इन दिस केस प्रोपल्शन मॉड्यूल से, इट्स स्पीड इज 6000 किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाइल लैंडिंग योर स्पीड शुड बी अराउंड 3 किलोमीटर पर आवर. उससे ज्यादा स्पीड पे आप लैंड करोगे तो आप यू विल गेट डिस्ट्रॉयड. तो हियर फॉर दैट टू हैपन आपको ना दूसरे तरफ मास इजेक्ट करना है. जैसे व्हेन यू आर लैंडिंग, आप जिस डायरेक्शन में लैंड कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, सो दैट योर स्पीड कम्स डाउन. एंड दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू. लैंडिंग ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन दैट बिग अ चैलेंज, बट लैंडिंग ऑन मून इज अ चैलेंज, एंड दैट इज व्हाई वी फेल्ड last time, but this time we have been pretty successful. So where did we land? We landed around 70 degrees south. Why did we land there? Because here we have several craters, and it can be expected that some frozen water may be found in these craters, which is crucial for future missions on moon. हम moon पे colonies या ये चीजें करने का plan जब करते हैं तो सबसे important source हमें चाहिए होगा water. If we have water, then we can convert that water into oxygen also. We can use that water for other purposes also, and that's why finding water is very crucial. Rover उसके surface पे row किया है. Now see this comparison of 1, 2, 3. 1 2008 में लॉन्च हुआ, 19 में लॉन्च हुआ, 2023 में लॉन्च हुआ. PSLV, LVM3, LVM3. मेक सेंस? ये तो पता है हमें. Will there be another batch for PMP or this is the last batch? नहीं, आते रहेंगे यार, आते रहेंगे. अभी जनवरी 14 या जनवरी 8 के आसपास एक और बैच आएगा. फरवरी में भी आएगा, मार्च में भी आएगा, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी. हम में जितनी जान रहेगी उतना कर लेंगे. और मेरे केस में तो ये भी रहता है कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है. आई एम अ करंट अफेयर्स टीचर, तो आई हैव टू स्टडी अ लॉट. जितनी हिम्मत रहेगी उतना कर लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ले लेना recorded module. Let's come back to this. So 8/19/2023 PSLV was used here, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3. Its payload had orbiter and then impactor module, not lander or rover. It had orbiter, lander and rover, and that had only lander and rover and propulsion module. It did not have an orbiter. Chandrayaan 3 did not have an orbiter. Was it successful? Yes, one was successful. Second was partially successful, only lander failed, and third was successful. कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं. जैसे चंद्रयान 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वाज द डिस्कवरी ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल इन द मून्स थिन एटमॉस्फेयर. इट शोड दैट मून कैन हैव वाटर. देन buried lava tubes, these were also important. Discovery of these lava tubes were also important because मून का जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है ना वो बहुत सेफ नहीं है. उसके सरफेस पे बहुत सारी रेडिएशन, सारी चीजें आती हैं. तो दीज लावा ट्यूब्स कैन बी द सेफ प्लेस वेयर ह्यूमंस कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ह्यूमन कैन टेक सेव देमसेल्व्स इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. देन आप अगर चंद्रयान 2 के केस में आते हो, इट हेल्प इन सेपरेटली आइडेंटिफाइंग वाटर एंड हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल. पहले हम हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के थ्रू ही वाटर को की बात कर रहे थे, बट इट हैज सेपरेटली आइडेंटिफाइड दैट एंड मैपिंग वाटर फीचर्स अक्रॉस द मून फॉर द फर्स्ट टाइम. Chandrayaan 3, अब देखते हैं Chandrayaan 3 के क्या क्या आउटकम्स हैं, बट वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड देयर. नाउ December 2023, व्हाट हैपेंड हियर? देखो, Chandrayaan 4 का अपना प्लान है. Chandrayaan 4 में हम क्या करेंगे? Chandrayaan 4 में
we will be bringing material back from moon. We'll be landing on moon, we'll be collecting material, we'll bring it back on moon, we'll bring it back on earth. वो गाना है ना, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, तो चांद तो थोड़ा सा तोड़ ही लाएंगे, ये टारगेट है चंद्रयान 4 का. बट for that to happen, we'll have to land, we'll have to fly back to the orbiter, फिर ऑर्बिटर को वापस अर्थ पे लाना पड़ेगा. अभी अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल हैड गॉन देयर, राइट? प्रोपल्शन मॉड्यूल वाज स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड मून एंड इट हैड फ्यूल लेफ्ट. तो एक चीज which was not planned earlier, ISRO did that in December. What it did, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस अर्थ के ऑर्बिट में ले आया. मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्पीड बढ़ाया, बिगर ऑर्बिट अराउंड मून, स्पीड बढ़ाया, बिगर ऑर्बिट अराउंड मून, देन मूव टुवर्ड्स अर्थ and come in an orbit around Earth. This is something that was not planned earlier, but because of the perfect mission that we had launched, we were left with fuel, and in December we achieved this. इसका फायदा क्या है? We have learned how to come back from moon to earth. Idea process was similar, but we were able to do it. So Chandrayaan 4 में when we land on moon, when we bring back material from moon, we now understand यहाँ से ऑर्बिट में कैसे आना है और ऑर्बिट से लैंड अर्थ पे कैसे करना है, वो तो हम कर ही सकते. तो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड. Chandrayaan 3 propulsion module retraces steps to Earth orbit. Why it matters? It matters because in future we would want to bring material back from moon. So this was another thing that has happened recently. अब significance of going to moon, moon के resources, moon पे future colonies, ये सब एक बार आप रीड करेंगे. अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो अब कल करेंगे. ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें रह गई हैं वो कल करेंगे. टुमारो आई विल गिव यू अनदर बुकलेट मोस्टली ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड सम इंटरनेशनल एफर्ट्स. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो एट व्हाट टाइम? 2 PM. एट बाय 1 PM यू विल हैव योर नोट्स ऑन द पोर्टल. जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑन द पोर्टल यू विल हैव योर नोट्स, एंड आप लोगों को तो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.